Gen Z, almost a quarter of our country is in that age bracket. Gen Z to me means aspirations, wanting something very, very quickly, not wanting us as politicians to talk down on them, but to engage with them at the same level. And I think in my profession, if I look at what's happened recently in Nepal, it's very, very critical for us as a political community, regardless of which party we belong to, regardless of which ideology we belong to address the issues that really matter to these young people, not issues that are disconnected from them, and to communicate in the language that they understand, through the platforms that they understand, through the mediums that they understand. So I think Gen Z is aspirational, Gen Z is hungry, Gen Z is motivated, and it's for us to figure out a way to channelize that motivation, that aggression, that aspiration towards something more positive. You know, it's interesting you say that we want to channelize this aggression and I would say a little bit of restlessness that our Gen Z has. I would actually like to call them Yuva. पूरी दुनिया उनको Gen Z बुला रही है. I think हमारे देश में है Yuva is a better idea. Why borrow what somebody else is using? तो हमारे देश के जो युवा हैं उनको अब बोला जा रहा है कि भाई आप भी सड़कों पर उतरो जैसे कि नेपाल में उतरे हैं. हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है. क्या आपको लगता है जिस तरीके से जेन जी नेपाल में थे, हमारे भारत के युवा उस तरीके से सड़कों पर आने को तैयार हैं? वी कुड सी समथिंग लाइक दैट हैपनिंग. देखिए, सबसे पहले भारत और नेपाल में बहुत अंतर है एंड हमें भारत को नेपाल या श्रीलंका या बांग्लादेश से कंपेयर नहीं करना चाहिए. भारत के युवा, नेपाल के युवा, भारत के युवा, श्रीलंका और बांग्लादेश के युवा में बहुत फ़र्क है. सो एनी पॉलिटिशियन who might be calling on Gen Z and the youth of India to go out and protest on the streets, to go out and create mayhem on the streets, is doing a disservice to the Yuva themselves. And I don't think young people will take those politicians very seriously. But there is a larger point and a larger theme at play, which is around the world. If you look at democracies from the United States to India, if you look at protests now in US campuses, you called it restlessness, I call it aspirational. If the aspirations are not channelized properly, it becomes restlessness. If that restlessness is not addressed quickly enough, it can become mayhem. So, for us as a political community, it's very clear creating opportunities, addressing the issues that matter to them are very important. Today, for example, I'm sure all the young people present here, beyond the traditional ideological divides, are you left, are you right, people are concerned about jobs, healthcare, education, air pollution. Can I become an entrepreneur? Can I become a sports person? Beyond, when I look at politics, beyond just liking and swiping, can I lead? So these are the opportunities that we have to create for the youth of the future. But do you think you're being able to communicate with Gen Z in our country in a language that they understand? Is there a communication gap? Because I'll tell you why. The last Lok Sabha that we've had is the oldest Lok Sabha. The average age of our MPs is consistently going up. Our demographics are getting younger. We have a greater segment of Yuva in our midst. And our politicians, our Lok Sabha is getting older and older. You know, I was one of the youngest members of parliament in 2004, and I said it then, I'll say it again. I don't think the youth of India, उम्र के आधार पर वे कभी भी भेदभाव नहीं करते. I don't think youth are saying कि it has to be a young person, not an older person. Today, for example, let's say the Prime Minister, he just turned 75 years. Whether it's through Instagram, whether it's through other platforms, whether it's through Man Ki Baat, is able to connect with the youth more effectively than, say, a younger politician. So, एज के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति, जिस राजनेता के विचार परिवर्तनशील है, somebody who wants to do something which is change worthy, someone who wants to do something disruptive, that's what appeals to the youth of our country. नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, बेहतर युवा नेता कौन है? वो जो कि खुद को युवा नेता बोलते हैं या जिन नेता के साथ आप काम करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, who's the real Gen Z politician today? I mean, in my opinion, one of the politicians who's communicating very effectively, not from my party, but despite that, who we must give credit to, who's effectively reaching out to the young people through different platforms, on cultural issues, social issues, economic issues, political issues, would be the Prime Minister.
It's very rare for a country where you have a third-term head of state to still be engaged with an aspirational generation like Gen Z. And I think he's doing that effectively. But it's important for all politicians, as I said in my earlier statement, that regardless of which party you come from, to stay engaged, to understand, to have a dialogue with them. I think this generation will not accept any political leader who is indulging in a monologue. मैं यदि खड़ा होकर मैं केवल उनको भाषण दूंगा, आपको ये करना है, आपको ऐसे एक नागरिक बनना है, people will not accept that. We have to have a dialogue with the youth of our country. I have to know what they are thinking, what are their concerns. Today, they know as much about governance as someone who's experienced for 20 years as me. They will have more disruptive ideas on how to reach the last mile and deliver a government service in a rural area or an urban area than someone like me who's been in politics for 20 years. And if I'm sitting on a high chair thinking that I have all the solutions and I'm going to shove those solutions down your throat, then you'll have a problem. क्या यहाँ पे जितने लोग हैं किनको लगता है कि मिलिंद देवरा इफेक्टिवली जेन जी से युवा से कम्युनिकेट कर रहे हैं? आपको लगता है, डू वी ऑल अग्री? क्या मिलिंद देवरा युवा नेता आपसे जेन जी से कम्युनिकेट कर रहे हैं? आपको मिलिंद कौन बेहतर लगता है? क्या जेन जी नेता हैं? I won't include you because you are here and you have to answer. नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे. I would say at a national level, there's no doubt in my mind that Narendra Modi is a very, very effective communicator engaging with this section of society. Certainly, I believe that in Maharashtra, for people who understand the nuances of Maharashtra, there is Maharashtra is the fastest urbanizing state in the country. Maharashtra is one of the most industrial states in the country. To talk to people from rural areas, urban areas, in different languages, we are a cosmopolitan state. I would certainly give credit at a local level to Eknath Shinde for doing that, for understanding the aspirations. But as I said, Padmaja, which politicians are truly engaging with the young people, are coming on platforms like this to hear what they have to say. Those are the politicians I think who will effectively engage. But we are told these days कि आप लोग ना तो push up कर रहे हो, ना आप jujitsu कर रहे हो, ना आपकी reels viral हो रही हैं. It's good. These are things which millions में reels जा रही हैं जननायक की. People must do these things. Nothing wrong in that. I see nothing wrong if a young politician is doing push-ups, if a young politician is doing things that Gen Z wants. So there's no shame in saying that I'm connecting to the youth or I'm trying to connect to the youth. And I think that now this number has become so large, it's reached a critical mass where no political force on earth can ignore them. I mean, the numbers globally, around 30% of the world's population are Gen Z, between the age of 13 to 27, 28. So I can see, in fact, in the United States, a country where I studied when I went to do get my higher education from, that when I look at college campuses, which are erupting with protests, with very violent protests like you see in Nepal, that's largely because politicians have forgotten how to connect with them. Or politicians are not in a dialogue with the next generation. You know, you entered politics and became a member of parliament when you were in your early 20s. In your late 20s, you had already become a minister. From then to now, how different is it to be in public life and politics? Because now everyone is judging you real time. You give a speech, somebody comes on your timeline and says, excellent, or kya bakwas hai, jhoot bol rahe hain. How do you deal with this new politics in 5G, times of 5G? It's like your profession. It's the same for the media. I mean, back in the day when I entered politics at the age of 27 in 2004, what mattered to a politician was an article written in favor of you or against you in a newspaper. Today it's the reel that matters. Is it a good story? Is it a good reel? Is it going viral? So the mediums have changed. The issues in many ways remain the same. And I'll be very candid with you. 20 years ago, the young generation of India, people who were in their early 20s, they had similar aspirations as today's young generation. They would also tell me that we don't want to be divided on issues like caste and religion. We are aspiring for clean air quality. We want to be entrepreneurs. We want to build some of the world's top tech companies in India. Can you facilitate that ecosystem?
Can you get us access to the best universities? Can you create economic opportunities right here in India so we don't have to get educated here and then travel overseas to get a job? And that remains the aspiration of young Indians today. So that's what we have to live up to. What's the funniest reel ever that someone made about you, or the funniest comment which you was just like, I don't know where that came from? I'm not sure if there's a funny reel ever made about me, but well, sometimes, as I mentioned to you, that as a guitar player, one of my early opponents, who, when I was in my first election, I was 27 years of age, and she was in her late 60s. And I had returned from the United States after getting my higher studies, and she would say, "Ye Boston se guitar bajane wala neta hai, and मैं स्थानिक नेता हूँ," and those kinds of things would create, they would create some kind of controversies. But again, the mediums have changed, but the issues remain the same. You said that now our Yuva is more aspirational, and the issues that matter to them are things like, are jobs being created, is my air clean? And yet, just a month ago, we had the entire city of Mumbai seeing people who were sitting there on the streets at Azad Maidan saying that we want reservation. My question is, sure, we can have a discussion about, the merits of reservation, historical needs, etc. But how do we ever plan in the 21st century to go forward if everyone is trying to get themselves labeled as backward? How is it that you are going to tell the people of our country, we're going back into caste politics, but we are a 21st century country, which is, trying to become the third largest economy? So there's few things. One is there's a huge difference between going back and becoming more casteist and giving people who deserve some form of affirmative action their rights. And I think politics in India is divided between the two categories. There is one section which believes that people who are backward are traditionally backward due to legacy systems. One way of empowering them, one way of giving them equal rights is through reservation. There are other political parties who encourage casteism, which is extremely dangerous. So I'm not in favor of those things. But I'll tell you one point which I came across in a survey a few months ago. Since you mentioned Mumbai, I'm not sure how many of the youth here are from Mumbai and maybe from other parts of the country. But now in a city like Mumbai, Padmaja, we will have an election to the municipality of the city. The Mumbai municipality is the country's richest municipality. The budget of the Mumbai municipality is larger than the budget of certain states in India. To encourage governance, whether it's a pothole on your road, whether it's flooding that happens during monsoons, whether it's access to affordable hospitals and schools. One concern I have about Gen Z, besides the fact that Gen Z also spends too much time on their mobile phones, is voting percentages. When it comes to civic elections versus, say, a parliamentary election, is very, very low. Yet, sometimes Gen Z is voting for parliamentary elections on civic issues. So the place where, if you want your local community to improve, whether you live in a city or a rural area, the place where you can get better governance is by increasing your participation in local elections. So the Gen Z over here, are you going to be voting for the Mumbai municipal elections? I can't hear you. If this is how loud you are going to have 2% turnout again. Louder. Are you assuring Milind Deora you're going to surprise him this time around when there are elections to the BMC? And please vote for any party, but please go out and vote. It's very, very important. Okay. Can we have a round of applause for the Gen Z here who have promised? And when they don't turn up, we are going to come back for the next Yuva and ask you why. Because it's all very well sitting here in an air-conditioned hall and making promises that you don't keep. The aspirations of Mumbaikars, you've been now in government. Why is it that even now there are many issues which aren't addressed towards the youth? Can you confidently say that there are still youth-oriented schemes that your government has managed to bring in? Absolutely. How are you reaching out to the youth in particular? The state government, for instance, has an apprentice scheme. The central government has an apprentice scheme. The state government provides a form of scholarships for young people. Largely the people who take benefit of that are from rural areas
people from very underprivileged backgrounds. So that is one area. But look, Padmasha, beyond giving a dole and a handout, that's another aspect of Gen Z. I don't think Gen Z wants doles and handouts from the government. I think Gen Z is telling us that create an ecosystem, create the infrastructure, create a regulatory environment that encourages innovation. We will do the rest. And yet you brought in Ladki Behna scheme before the election. Well, that's again a scheme for needy women. That's a separate issue. Today in Mumbai, which is very unique to, let's say, the NCR region or Delhi. In the NCR region, I always say, you have 4 states really competing for the NCR pie. The MMR region, or the Mumbai metropolitan region, which now will go from South Mumbai all the way to Palghar, comes all under one state. And for the first time, I can confidently say, as somebody who's been at it for the last 20 years, that we're finally building the enabling environment that will create the ecosystem that Gen Z needs to prosper and flourish in the city. We have now, in the next few days, the inauguration of the Navi Mumbai Airport. Mumbai Airport today is the world's busiest single runway airport. We'll have a second airport there. In the years to come, we'll have a third airport in an area called Palghar. We're going to build one of the world's largest ports in an area called Vadhavan, which is north of Mumbai. So when I look at this entire region, the Mumbai metropolitan region, it's going to resemble a large metropolitan area like you have in the US, in the UK, where you have several airports, you have several ports, you have several clusters of economic activity happening. And the Mumbai metropolitan region will not just be one of the largest economic contributors to the state, but it will be one of the largest economic contributors to India. So I'm very proud of that. And I'm very proud that the government today is looking at Mumbai as an enabling environment for young people who want to innovate, who want to create the startups of the future. By not just saying that our competition is Delhi or Ahmedabad or Chennai or Bangalore or Kolkata, but by dreaming big, by saying that our competition is Singapore in the east, it's Dubai in the west. And that's the kind of vision we need to actually create that enabling environment that these young people want. But why is it in terms of optics, whenever somebody talks about, the 2 main alliances, and the fact is whether it be university politics, generally the kind of outreach that happens, the optics seem to suggest that your alliance is a very, how do I say it, not very youthful. It's generally seen that, जैसे Congress है, Shiv Sena है, left है in particular, they are very popular in universities among the young people, बड़े youthful से लोग हैं, जबकि आपका थोड़ा ज़्यादा traditional है, Shiv Sena है, BJP है, बड़े थोड़ा old fashioned किस्म की parties हैं. Mumbai doesn't have modern parties नहीं हैं. Mumbai doesn't have the same university political culture that, let's say, Delhi has. In Delhi University, for instance, elections are a huge thing. Parties get involved. We don't have that in Mumbai, thankfully. And I think it's good to keep politics out of Mumbai's universities. Mumbai in that way, Padmaja, for folks who come in from Delhi, is very, very different. We are a far more depoliticized society than New Delhi is. People here are more focused on economic opportunities. People here are more focused on cultural opportunities. We are proud that in this city we are the financial hub of the country. We're also the entertainment and creative services hub of the country. Today, a lot of young people, for instance, they don't want the traditional jobs that they may have studied today. They may have studied finance and commerce, but they don't want a job in finance. Today, in a city like Mumbai, they can get a job in creative services. They can get a job in gaming, the legal gaming, not the illegal gaming which has been banned. But now in gaming, huge industry. Today, for instance, a company based in Mumbai, 30% of the world's, of Hollywood's movies, the visual effects of those movies are made in a company in Mumbai. So these are the things that young people are aspiring to. And I think that environment is being created for them. No, that is great, but I meant more like culturally. Culturally, do you think that the right of center parties, such as yourself and the BJP, tend to not have the kind of resonance that the left of center parties do? In universities? No, in general. In general, if somebody was to say, I mean, how would you say that? Because look at the electoral numbers. Look where the left is today in the country. Look where the left is in their bastion, West Bengal.
Look where the left is in a state like Tripura. Except for Kerala, the left doesn't exist anymore. I'll give you an example. In Maharashtra, for instance, as part of the Red Corridor, the Naxal-affected region across India, Maoist extremism, left-wing extremism, there was a region in Maharashtra, there's a region in Maharashtra called Gadchiroli, which was heavily affected by left-wing extremism, violence, killing of paramilitary forces, police. Politicians couldn't go there, you couldn't bring governance there, you couldn't bring infrastructure there. Today, Gadchiroli has turned 180 degrees. From being a hub of Naxal violence, today Gadchiroli is well on its way to becoming the steel hub of India, where steel companies are setting up factories in Gadchiroli to mine iron ore and create economic opportunities. So that can happen. And the same Gen Z in Gadchiroli, who are very different from urban Gen Z living in Mumbai, who otherwise were forced because of a lack of opportunities to take up arms against the government, today they're going and seeking jobs. Today they want education. The same thing is happening in a state like Kashmir. Today, after the abrogation of 370, young people, women who in Kashmir never worked in the tourism industry, you see more and more young women working in hotels. More and more young people, Kashmiris, demanding more universities, more hospitals, more skill training centers, more economic opportunities, more hotels, more tourism. So that's what's changed. So it shows you that when there's political will, when there's a focus to actually get these things done, Gen Z responds. So outside of the social media bubble, also a world exists. Finally, I want to ask you, Milind Deora, as somebody who entered politics early, who's had a very long career now, a fairly long career in politics, much more ahead. For anyone who wants to enter politics today, what would be your single piece of advice of lessons that you have learned the hard way? My single piece of advice would be, firstly, don't think of politics and politicians as people who are from another planet, who are alien to you. We are ultimately representatives of the people of India. Don't think of us as having an easy job. Politics is a difficult job. So being a politician is a 24/7 job. You're always on the go. It's very difficult with your family life. But when you choose politics, and if you choose that you want to stay engaged and you want to contribute to society, I have no doubt in my mind that whether you become an entrepreneur, whether you become a professional, whether you become a influencer on social media, the greatest way to bring about change in society is through politics. And there are many ways to get into politics. One extreme way would be join a political party, become a political activist, hopefully fight an election. A simple way would be just by voting. So for example, if you're a young person in Mumbai and you're concerned about civic apathy, you're concerned about civic issues, the opportunity for you will come in 4 months' time when there will be a municipal election. Go out and cast your vote. You can't have a city like Mumbai where you're the most progressive society in the country and you have just about 12 or 13% of Gen Z going out and voting in a civic election. That number has to go to 70%, 80%. The first step before voting, go and check if you're registered to vote. To be fair to the Election Commission, things have changed drastically in the last 20 years. When I first fought an election, if a young person came to me and said, I want to vote, I had to physically help them to get registered to vote in the Election Commission office. Today, you can do that in 1 second on your mobile phone. Check if you're registered to vote. If you're not registered, go out and vote, get registered. Then make sure on election day, you stay involved and go out and vote. That's going to be your first engagement, your first step towards politics. You'll remember your promise. Yuva, everyone present here in the audience. Ladies and gentlemen, let's give it up for Milind Deora. Thanks very much, Mr. Deora, for having joined us. And we will see you again soon after the BMC elections. Best of luck. Thank you. Well, that's a lovely session. Now we move on to another power-packed one. Indeed, but I'd like to thank Milind to take time to inspire us. And now, अब हम आगे बढ़ेंगे और ताकत और हौसले के बारे में बात करेंगे. World Boxing Championship 2025 से लाई गई है मेडल्स की बारिश. गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुडा, सिल्वर मेडलिस्ट नुपुर शरण और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पूजा रानी.
सो इस वक्त मेरी दरख्वास्त होगी हमारे गेस्ट से कि वो स्टेज पर आए, लेकिन उनके आने से पहले आपको जोरदार तालियां बजानी होंगी। कैन वी डू दैट? लाउडर! जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए हमारी नॉकआउट क्वींस ऑफ India, and taking them on the mat is NDTV's very own Padmaja Jha. A huge round of applause once again. चाय नहीं पी क्या आप लोगों ने सुबह? So can we have Padmaja Joshi as well, who will be taking on these knockout queens? Please. ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आप इंडिविजुअली अपना एकदम बॉक्सिंग स्टाइल में। और मैं एक सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि अभी मेरे को पहले पूजा बता रही थी कि सबसे इरिटेटिंग उनको सवाल लगता है जब मीडिया उनसे पूछती है। क्या पूछती है मीडिया आपसे? कि आपको कैसा लगा? कैसा लग रहा है आफ्टर विनिंग अ मेडल? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दे गेट आस्क्ड। सो आई विल नॉट स्टार्ट इन दैट मैनर। मैं शुरुआत करूंगी, आप अपना सबसे दमदार इंट्रोडक्शन अपने पोज के साथ जो होता है, प्लीज बैठिए मत, ये हम खड़े होकर के करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि अगर आप ऑन योर फीट नहीं रहेंगे तो किसी को भी मज़ा नहीं आएगा। ये आपका नेचुरल पोस्चर भी नहीं है। बैठ कितना आपको बैठ के कंफर्टेबल लगता है? नहीं लगता ना, तो क्यों बैठे हो? फिर फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, खड़े होके हर कोई अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी स्टाइल में। आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा नाम है गोल्ड मेडलिस्ट, बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी हुड्डा है और मैं अभी हाल में वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ। आपकी तरफ। हाय, मेरा नाम जैस्मिन लंबोरिया है और मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। हाय, मैं पूजा रानी और अभी मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Hello everyone, myself Nupur Shoran and I just secured silver medal in the World Championship in plus 80 kg. नुपुर, अपना सिग्नेचर कोई स्टेप भी तो करके बताइए। आपका क्या सबसे डेडली हिट कौन सा है? आपका सबसे डेडली, मुझ पर मत कीजिएगा, बट जनरली हवा में एयर बॉक्सिंग करके बताइए आपका। फैबुलस, राउंड ऑफ अप्लॉज। जो ताली नहीं बजाएगा उसको स्टेज पे बुला करके पिटवाया जाएगा, ये मेरा ब्रीफ है। लो एनर्जी गेट बीटन, दैट इज द ब्रीफ ऑफ दिस एंटायर सेशन। ठीक है, बैठिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, जैस्मिन आप बताइए कि जब जो यंग लड़कियां जब शुरुआत करती है, जब आपने पहले सोचा कि भाई मैं बॉक्सिंग करूंगी, सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या बोलोगे कि बॉक्सिंग मत करना क्योंकि फेस खराब हो जाएगा? फेस खराब हो जाएगा। और जब आप अपने मेडल लेकर के आए हैं तो लोगों को आपके फेस के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं, मतलब जब हम मेडल लेके आते हैं इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली मतलब सब बहुत ही प्राउड फील करते हैं। और ये भी होता है कि फिर वो मतलब हमको देख के अपने जो उनकी जो लड़कियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करते हैं। नुपुर, ये लड़का और लड़की के बीच में एक फ़नी चीज़ ये होती है कि हरियाणा के बारे में, और आप सब हरियाणा से ही है ना, आप सब हरियाणा से। फनी थिंग इज दैट अबाउट हरियाणा वन ओनली रीड्स इन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं कि हरियाणा में कोई पंचायत है और लड़कियों का सेक्स रेशियो कम हो रहा है, लड़का लड़की जो है उसके बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, या फिर देखते हैं कि लड़कियां मेडल्स जीत रही हैं। ऐसा कैसे होता है? कि क्या कभी आपको आपके घर में, आपके गांव में कभी ये हुआ कि ये लड़कों की चीज़ है, तुम इसको छोड़ दो? नहीं मैम, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन इंटरनेशनल पोडियम। माई लेट ग्रैंडफादर लेट कैप्टन हवा सिंह, 2 times Asian Games gold medalist. My father Asian medalist Sanjay Shoran. Even my mother is Asian medalist in basketball, so I didn't face that much. And हमारे घर में तो मैम ऐसे है कि पहले चीज़ मेरे लिए आएगी, फिर मेरे भाई के लिए, जो मैं छोड़ देती हूँ फिर उसके पास जाती है। तो मुझे तो वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। और आज मैं आपको बता दूं, हरियाणा में मतलब हम लोग, हरियाणा वाले इस चीज़ पे काफ़ी बदनाम है कि लड़कियों में हम लोग फ़र्क करते हैं, बट आज ये सिचुएशन नहीं है मैम। हम लोग, बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि सब चाहते हैं कि बेटी आगे बढ़े।
तो अब वो चीज़ नहीं है मैम। और पहले आपने बताया था पूजा कि हरियाणा वाले ना हम थोड़े से हिले हुए होते हैं, तो सबसे हिली हुई चीज़ आपने क्या की है अभी? देखिए, हरियाणा में एक ये है कि हरियाणा नाम से ही आता है कि ये तो फोड़ देगी, ऐसे करके आता है। और जब हम कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं और जब ऐसे होता है कि ओ हमारी हरियाणा के साथ फाइट है या फिर ये इंडिया में हरियाणा से है, तो ऐसे करके सब हरियाणा के नाम से काफ़ी डरते हैं। जैसे बॉक्सिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में हमारा जो सिटी है भिवानी, और भिवानी को मिनी क्यूबा बोला जाता है। और जब बॉक्सिंग जो सब स्टार्ट हुई थी हमारे भिवानी में, वो कैप्टन हवा सिंह ने स्टार्ट की थी। और उसके बाद से जब बॉक्सिंग स्टार्ट हुई और जो लड़कियों की बॉक्सिंग है वो काफ़ी लेट आई थी। और जब हमने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो हाँ, स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। जैसे हमारी फैमिली में ही लोग बोलते थे कि लड़की है इसको मत खिलाओ, या फिर हरियाणा में भी ऐसे ही होता है कि लड़कियों को ज़्यादा इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे हमने शुरुआत की और धीरे धीरे यंग जनरेशन भी अभी आ रही है, हमारे पीछे पीछे और भी बच्चियां आ रही हैं, तो हमें लगता है कि हमने शुरुआत करके हमने उनके लिए काफ़ी आसान कर दिया। कभी ऐसा कोई आपको सबसे फेवरेट बाउट आपका जब आपने लगा कि अब मैंने फोड़ दिया ये? तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या था कि मैं अपने आप से अच्छा किसी को नहीं समझती थी। जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मेरे को ये था कि मैं सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। जैसे मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से ये डाला, जैसे मेरे कोच हैं संजय शोरान, या फिर हमारे यहाँ पे कोच हैं चंद्रलाल सर और प्रमोद सर हैं। जैसे स्टार्टिंग से ही हमारे दिमाग में ये डाला जाता है कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है, तो उस टाइम पे मेरे को ये लगता था कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, ये होना चाहिए एटीट्यूड। कभी भी उतरो, व्हाटएवर यू डू, हमसे तो बेस्ट कोई है ही नहीं। देखिए, इसीलिए उन्होंने शुरू में कहा था कि हम थोड़े हिले हुए होते हैं। एंटर फुल एटीट्यूड। हाँ, फिर हाँ जी, जो मेरी मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेला, तो मेरी बाउट जो अभी वो ओलंपिक चैम्पियन है यूएसए की, उसके साथ थी। और मेरे को ये था कि इसको तो मैं मार लूँगी, मेरे को पता ही नहीं था वो क्या है। और मैंने उनके साथ बहुत ही अच्छी बाउट खेली थी। अगर मेरे को पता होता कि वो इतनी अच्छी वर्ल्ड चैम्पियन है या फिर ओलंपिक चैम्पियन, तो शायद मैं नहीं खेल पाती, क्योंकि सब माइंड सेट का होता है। मेरे दिमाग में ये था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा खेला। मीनाक्षी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जब सुबह मैंने मीनाक्षी को देखा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये किसी को इतना मार सकती हैं। पहले तो मीनाक्षी आप खड़े हो जाओ, आप बताओ फर्स्ट राउंड आप खाते क्या हो भाई? आप इतने पतले दुबले से लगते हो, पर क्या मारते हो आप? क्या खाते हो भाई सुबह सुबह उठ के? हरियाणा में तो चूरमा होता है, दही दूध यही खाते हैं, और तो कुछ नहीं खाते जी। हाँ, और आपका कौन सा वाला बाउट था? कभी आपको लगता है कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ये देख करके कि ये तो एकदम दुबली पतली सी स्लाइड सी है, ये तो पंच इतना नहीं मारेंगी? कभी ऐसा हुआ? और जब शुरुआत में जब आपने शुरू किया था, तब आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे को अंडर एस्टिमेट किया, फिर आपने पकड़ करके क्या उनको धोया? पहले तो मैं थोड़ी सी मतलब मोटी थी, 54 वेट था मेरा। अब भी 2 साल से ही मैं 48 वेट में आई हूँ, तो अभी बोलते हैं सभी कि ज़्यादा पतली हो गई है, लेकिन मेरा पंच लगता है तो फिर उनको लगता है कि नहीं है इसके अंदर भी कुछ। और सबसे आपका जो इस मेडल से पहले, क्योंकि आप सबका जो ये मेडल है ये तो मतलब फैंटास्टिक, देश के लिए एक साथ 4 मेडल लेकर के आना, इट इज़ सुपर। इससे पहले जो आपका सबसे कड़ी चुनौती थी, जो आपको लगा था कि ये तो नहीं हो पाएगा, पर आपने उसको क्रैक कर लिया, वो मोमेंट जब आपको लगा अब मेरे को कोई रोक नहीं सकता, वो मोमेंट अगर आपको कोई पूछे तो क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमारी नेशनल्स में चैम्पियन बनना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हमें इंटरनेशनल में जाने का मौका मिलता है। तो जब मेरी नेशनल की क्वार्टर फाइनल बाउट थी, तो वो मेरी नीतू गनगस है, वो वर्ल्ड चैम्पियन है और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके साथ मेरी क्वार्टर फाइनल बाउट थी। तो सभी को ये लग रहा था कि मीनाक्षी इससे हार जाएगी, लेकिन मैंने और मेरे जो कोच थे, बेसिक कोच, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं, तू कर सकती है, तू मार सकती है, इसको मार के ही तू एक वर्ल्ड चैम्पियन को मार के ही चैम्पियन बना जाता है। तो मैंने वो करके दिखाया और मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनी। भाई ऐसे बनना चाहिए चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन को पीटो और खुद बन जाओ चैम्पियन। लॉट ऑफ टॉक, बट
जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, दे स्टिल नॉट साउंडिंग वेरी कन्विंस कि ये इतनी स्लाइट लुकिंग, इतनी जेंटल लुकिंग लेडीज़ हैं, कितना पंच आप कर सकते हो। उसके लिए हम एक अगला सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आओ अरुण को मारे। अरुण प्लीज़ अगर आप स्टेज पर आ सकते हैं। इस शो के अगले सेगमेंट का नाम of the ladies, give a huge round of applause to each one of them. And वही आप मुझे मारेंगे, मैं मार खाऊंगा। बेसिकली द पॉइंट इज मुझे सीखना है पद्मजा, मुझे लगता है इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, राइट? तो हमारे पास ये बॉक्सिंग ग्लव्स है, मैं भी पहनूंगा, आप भी पहनेंगे, और आप में से पहले कोई मुझे कुछ बेसिक सिखा दीजिए, लेकिन थोड़ा प्यार से। ऑन गार्ड इज द मैम, आप शुरू करेंगी? चलिए मैम को ग्लव्स दीजिए। और आप सबको अपना एकदम सिग्नेचर स्टेप करना है, सिग्नेचर पंच करना है, और फुल प्रेशर, हाँ फुल प्रेशर। थैंक्स पद्मजा, थैंक यू वेरी मच, यू वेरी काइंड। बट जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन, मुझे बताया गया है कि बाहर एक स्ट्रेचर ऑलरेडी है, तो अगर मुझे कुछ भी होता है तो बाकी का पूरा शो अदिति आपको करना होगा, सो वो स्ट्रेचर भी तैयार रखिएगा। आई होप वी हैव a team of doctors also here. Ma'am, क्या सिखाने वाली हैं आप? Can somebody hold mic for Padma? Can you give her the mic? Ma'am, आप क्या सबसे पहले सिखाने वाली हैं मुझे? देखिए, जो बेसिक होता है, कोई भी सबसे पहले पंच मारेगा तो वो ऊपर 1-2 मारता है, तो आप मुझे 1-2 मारेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैम मुझे ये एक पंच करना और दूसरा, ओके लेट्स डू इट गाइस, तालियां बजाओ। 1 2 3 गो। ओह सरप्राइज टेस्ट हो गया। ओके मैम, अब मुझे पता लग गया स्ट्रैटेजी क्या है। आप मुझे ऊपर फोकस करो और आप नीचे से ही, कोई नहीं, आप नीचे करो। तो मुझे पता आप, मैम आपसे कहाँ मेरा मुकाबला। व्हाट आर वी लर्निंग नेक्स्ट? सेकंड क्या है? कोई भी पंच थ्रो करते हैं तो हम उसको बचा के फिर हम अपना पंच मारते हैं। अच्छा। तो जैसे 1-2 मारेंगे, मैं स्लिप करके आपको पंच मारूंगी। अच्छा, मेरे पास एक ही चश्मे का सेट है, जस्ट लेटिंग यू नो। चलो मैं 1-2 मारती हूँ, आप मुझे स्लिप करके मारो। ठीक है, आप डॉज करेंगी इज व्हाट यू आर सेइंग। आप, मैं आपको मारूंगा, आप डॉज करेंगी। हाँ जी, आप मुझे मारो। ओके। मुझे पता नहीं क्यों सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, बट आई थिंक आई विल बी एबल टू द रेस्ट ऑफ द इवेंट। आप में से कोई और अगर मुझे कुछ सिखाना चाहे? मैम ने तो मेरे मुंह का थोड़ा सा नक्शा बदल दिया है। आ जाओ जैस्मिन, आपको पता है ना जैस्मिन इंडियन आर्मी में भी है। 1 राउंड ऑफ अप्लॉज आलिया प्लीज फॉर चैंपियन एंड सोल्जर जैस्मिन। जैस्मिन जी, सबसे पहले तो आप मुझे उंगलियां दिखाइए और मुझे पूछिए कितनी उंगलियां, मैं टेस्ट करता हूं मेरी विजन ओके है या नहीं। 6, आपके हाथ में 6 उंगलियां, राइट? एक्स्ट्रा थंब? नो, ओके सॉरी, आई थिंक मेरा विजन। देखिए नाम भी कितना सोच समझ के रखा है, जैस्मिन। तो आदमी सोचेगा लाइट एज अ फ्लावर, और फिर आता है इनकमिंग पंच। इनके लिए वो बिल्कुल सही है ना, जैस्मिन समझ के फ्लावर समझा क्या? जोरदार तालियां जैस्मिन जी के लिए। आप बताइए, आप कैसे मेरा सत्यानाश करने वाली हैं? जैसे हमारे बॉक्सिंग में होता है कि अभी स्ट्रेट पंच सिखाई हमारी पूजा दीदी ने, तो हमारे में अपर और हुक, ये पंचेस भी होते हैं बिल्कुल। तो वो जैसे मीडियम रेंज से खेला जाता है। मैं करूँगा, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। हाँ जी, तो इसको जो पेट में होता है इसको बोलते हैं अपर कट। ओके। और जो ऐसे ऊपर से आता है इसको बोलते हैं हुक। ठीक है, तो ये तो आप करेंगी या मैं करूँ? अगर आपको सीखना तो आप करो। हाँ, मेरे को सीखना, मैं करूँगा। वैसे मेरा पेट खराब है, so don't give me another punch, okay? खराब है तो ट्राई मत करो। That's what I'm saying. मैं मारता हूँ, मैम डॉज करेंगी, ठीक है? Is that all? See, this is where all of your gym memberships are paying off, Arun. Huge round of applause for Arun. Amazing. But once again, thank you very much, ma'am. आप भी please, since you're wearing the gloves, why don't you also बताइए come up with something? मीनाक्षी, आपको आपका फेवरेट जो मेमोरी है, जो आपका फेवरेट बाउट था, उसको यहाँ पर रिक्रिएट करते हैं। नॉकआउट ही रहा होगा एंड में तो? नहीं, मैं काउंटर गेम खेलती हूँ, तो मैं
मैंने लास्ट बाउट में भी काउंट्री गेम खेला था और उससे ही मैं जीती हूँ। ठीक है, चलिए वो जो आपका विनिंग मूव था आज वो हो जाए। बताइए मैम, आप सिखाएंगे मुझे? आपने पर हम दोनों का वजन थोड़ा एक जैसा लग रहा है, तो मुझे कम डर लग रहा है इनसे बाकी सबसे। आप बताइए मैम, क्या करने वाले हैं हम? आपने चश्मे तो नहीं उतारे, चश्मे पे लग गया तो चश्मा टूट जाएगा आपका। That's a good. Can you help me just take these off? या आप यहाँ खड़ी है ना? हाँ जी। Sorry. Okay, you're here. हाँ जी। एक मैं मारता हूँ, मैम। सेकंड, यहाँ पे हमारी ऑडियंस के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? मैम मैं मीनाक्षी को यही बोल रही थी, मतलब सीरियस में मत मार दियो। कहीं जोर का Yes, मीनाक्षी अभी शो शुरू ही हुआ है। नहीं, बट हमारा लड़का भी ठीक ही खेल रहा है। आपका लड़का तो ऐसे जैसे उनको करंट लगा हुआ है ऐसे। ये मेरा पहला दिन है मैम, थोड़ा सा तो मेरे को थोड़ा कुछ डिस्काउंट तो दो। क्या जैस्मिन, कैसा लगा परफॉर्मेंस आपको? जल्दी सीख जाएंगे। जल्दी सीख जाएंगे यार। लव देखिए, दैट, थैंक यू गाइस। मेरे लिए देखिए तालियां हमारा मार दीजिए। हमारा प्लेयर सही है। ओके, लेट्स सी इट। क्या करने वाले हैं आप बताइए? आप मेरे को पंच मारोगे। ओके, अब उनके जैसे तो नहीं करोगे, पेट पे मार दोगे? वो आगे नहीं आई, वो पीछे ही जाएगी। ओके आपको आगे आना है। ओके ओके, लेट्स गो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं डॉज करूं या मारूं, बट गिव इट अप फॉर मीनाक्षी जी। जोरदार तालियां। लास्टली एक मूव मैं मैम से भी सीखना चाहता हूं। अगर आप भी बता दें कि आप क्या करने वाली हैं। Can we get the अरुण, mic? आई विश आपकी जगह मैं आई होती, मैं भी थोड़ी सी counter गर्ल खेलती पावर हूँ, बढ़ तो- जाती स्टेज पे। Actually, yeah, for this one, मैं ही क्यों सारे पंचेस खाऊं? Why don't we get Aditi here to wear मुझे these खाने gloves? नहीं है, मुझे सीखने हैं। Okay, go I ahead. can't. Wear these punch. Wear these She's gloves. so pretty. Are you saying Arun is not pretty? Thank you. No, Thank you so like much. she is so much pretty. She's more I'm pretty. beauty with brains. That's Arun what I is a would strong want to go one. with. But चलो मैम, thank मुझे you. थोड़ा सा सिखा दो आज। Okay. अरुण को 2-4 मुक्के Let's मारने go. हैं। Let's go. Okay, guys, तालियां बजाते रहना हमें. किसको मारूं? पंच उसको मारना है। You come here. We are punching bag. What do I do? You punch left. All I right. hear. No, you should be our punching bag is what I'm saying. Love it. Love women power. Do I have to punch? Let's do it together. Okay. आ जाओ। Okay. When did this turn Guys. into? Okay, on that note. Okay, lovely. Lovely. Guys, अब तालियां बजा दीजिए, इससे पहले इनके कोई और प्लान इनका बनने लग जाए. Thank you very much, Okay, ladies. this is amazing. Nari Shakti, I have to say, it was supposed to be Aditi versus Nupur, but कहाँ पे ये women versus Arun बन गया? Huge round of applause to Arun for being very sporting and to all of our champions here. Please come here. एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ individually एक से. आपसे शुरुआत करूँगी मैं पूजा. आपने अपना खेला, फिर आपने शादी की, फिर आपने वापस कम बैक किया और इस बार आपने हर इंटरव्यू में कहा था दैट इस बार नहीं हुआ तो फिर मैं गेम ही छोड़ दूँगी. अब मोटिवेशन नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए आप फुल मोटिवेटेड, और कितना बड़ा मेंटल स्ट्रेस था ये कि मैं एक चेंज करके वापस आ रही हूँ? देखिए मैंने यूँ लगा लो गेम छोड़ ही दिया था और 23 में मैंने शादी की थी और उसके बाद ऐसे था कि बस अब मुझे नहीं करना है, क्योंकि 22 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लूज़ किया था. तो उसके बाद मेरे को ऐसे हो गया था कि बस अभी मुझे नहीं करना है. तो मैं गेम की एक सबसे अच्छी बात ये बताऊंगी कि आजकल क्या है, बहुत सारे लोग वर्ड यूज़ करते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे स्ट्रेस है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा चलते हैं. तो जो गेम करते हैं उनके लिए ये वर्ड कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि हम लोग इतनी बार हार चुके होते हैं, इतनी बार हम जीत चुके होते हैं, तो हमारे लिए स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन कोई ये मायने ही नहीं रखता है. तो ये चीज़ गेम जो है हमें बहुत अच्छा सिखाती है कि हमें स्ट्रेस को कैसे दूर करना है या फिर डिप्रेशन से कैसे दूर रहना है. तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मेरे को बस यूँ लग गया था कि बस मेरा बॉक्सिंग में हो गया है. और मेरी शादी के बाद जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया. उन्होंने बोला कि तेरे को एक बॉक्सिंग ही है जो तेरे को खुशी दे सकती है, तो एक बार और ट्राई कर और अच्छा होगा. और हमने फिर से ट्राई किया. तो 2025 मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा. मैं नेशनल चैम्पियन भी बनी, वर्ल्ड कप में भी मैंने सिल्वर मेडल जीता और अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैंने मेडल जीता है. और हाँ, और लोग बात करते हैं डिप्रेशन की, स्ट्रेस की. ये देखिए कमिंग बैक, मेकिंग अ कम बैक. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन फॉर ऑल ऑफ दीज चैंपियन लेडीज. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.
चलिए आगे बढ़ते Lovely. हैं. And now we'll move on to the next session. You know, life's highs and lows, resilience, mental health, and everything in between. They also touched upon mental health, the pressures that people have. So the conversation that we're going to have next is embracing life in its truest form. So joining us are psychiatrist Dr. Zeerak Makar, actor Divita Juneja, and Simone Kambata, and educationist Fatima Agarkar. Let's say a big salam zindagi to them all. तो जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए. And joining them is my brother Ayush Alawadi. Can we have Ayush also on stage? Zordar talia, guys. Thank you. Please have your seats. Over to you, Ayush. Hello, ladies and gentlemen. Good afternoon. Now, I was told that we have to start this with song and dance, but Arun ne to sab kar liya. Boxing bhi ho gayi, sab kuch ho gaya abhi. We'll figure this out. But this is about having a conversation. So what we're going to do is, I host a technology show, so यहाँ पे technology की unboxing हो जाए. We'll be talking about AI, we'll be talking about gadgets. You guys are cool with that? No, I'm just kidding. Can we have a huge round of applause for the panel, because this is going to be not your podcast, but it will be a little bit like a podcast, because we're not going to follow any rules here. Anyone chimes in. This is a conversation about 2025. This is a conversation about what this lovely audience here. How many audience members here are Gen Z? Put your hands up. Okay, now we need to play to the audience, guys. We know exactly what we've been talking about, which is mental health and well-being in this age, which I would like to say about AI and so much more. Dr. Makar, what a pleasure to have all of you all here. But Doc, tell me something. When we speak about mental health in 2025, isn't it refreshing and encouraging now that we can speak about this openly, unfettered, and have these conversations? It was very different when you and I were growing up. Of course. So thank you. Nice being here. You're right. I think the biggest change that we've seen and that I've personally seen in my practice after working for 23 years in this field is far more openness and acceptance of mental health. And is it on the rise? Yes. As per a few days back, there's a WHO statistics that says in our youth, in Gen Z, there is one suicide attempt every 3 seconds as we speak, and one death by suicide every 40 seconds as we speak. That's so alarming, but that is the statistics world over. So mental health is on the rise, there is more acceptance, but what I love to know is, and I do know that the stigma towards mental health, the conversations towards mental health, and the openness with this generation is amazing. And I think with more acceptance, more acceptability, I think we're going to see far more people receiving the right help for mental health. Fatima, that's an encouraging sign. I know that you work with a lot of kids, a lot of Gen Zs at the school. And are these similar findings and insights that this conversation is now being had without any stigma attached, without any shame? And are parents, millennial parents, doing a good enough job? I'll come to Simone for that one as well. But are we doing a good enough job in really making this a conducive environment? So obviously the generation has a lot of exposure to AI. So tools are accessible, it's easier. Has the stigma really gone, Dr. Makar, I think? That is something that still needs to be worked on. Children will not go to a counselor because there are others waiting to say, hey, what was the problem? So while we're okay to talk about it in chat rooms and in private conversations, as open as it should be, no, not really. But, that's work in progress. Are parents doing enough? I actually have a perspective on that. So, Simone, before you jump in, let me put my 2 bits. I have a 20-year-old as well. I think the adult conversations need a little bit of thought as well. I think we expect, Dr. Zeerak and I are born from the 70s, so we assume the generation should be like us. We dealt with things.
This generation was not exposed to just dealing with things. So the conversations that we have as adults need a definite change. Hey, by the way, all you Gen Zs, I think you're going to love me because I'm batting for you. We've got to have those conversations, but our approach to those conversations have to change. We should be talking about it, but listen, let's not use that as an exit card. Every time something doesn't work out, that cannot be the problem. Some amount of regulation is important. You know, this healthy competition between millennials and Gen Z is something we can go on for the whole day. Gen Z, I'm on your side for this session, but as a 90s kid, Simone, that grew up in this city, it's probably from the first session that we saw, from Padmaja's session, I think Milind also mentioned that this is we all know this is the cultural hub of the country, and the conversations that happen here have always been much ahead of their time. We've grown up in this city, Simone. Now you have not one, not two, but now the third one on the way. Is that something that you're actually recalibrating in your head, saying, okay, these are kids that need to be spoken to in a particular tone and tenor, and there needs to be a sense of empathy around these conversations? Good afternoon, everyone. For all those that don't know, I am a parenting content creator. Now, me as a millennial, my generation is dealing with a lot because we have been raised by the boomers in a very different way from the way we are raising our children, which is the Gen Alphas. And because our generation as millennials were very woke about mental health, I feel like it's the millennials who really started the conversation. We're the ones who started acknowledging that anxiety and or depression is real. Seek help, normalize going to a psychiatrist. I have seeked sessions with Dr. Marker in the pandemic myself. Having said that, we as parents today are ensuring, I for one talk about this on social media all the time, that even my 7-year-old child or my 5-year-old child, I take their mental health very seriously. I can spot when my child is anxious and I don't take it for granted. I work with them because I'm pretty sure doctor will say the same, and we all know, if you go to a psychiatrist, what does it all sum down to? Childhood trauma. Everything always goes back to childhood trauma. So as a millennial, it's my responsibility to raise the next generation, and I think the millennials are doing a fantastic job. Fatima, the rule applies. This is the opposite of a news debate. So you can interrupt, interject anytime, and I'm sure we'll all be civil about it. So please, I know you have a thought you want to share. Yeah, I just think that sometimes, everything's exaggerated. And this is the generation that we have because of social media. I think Dr. Marker and I were talking about the fact that there is overexposure. Everything is magnified to such a level that even if I'm not depressed, when I'm looking at a social media feed, I'm actually, scrolling through and I'm picking up signs. So obviously there's something at play that is affecting all of us because we are the largest consumers of social media. But I feel that needs to be a conversation had with the adults in a way that can help. Not to say, I'm going to push this under the carpet, reflect on it. Is this a need or is it just playing to an audience? The reason I'm saying this is that a lot of kids sitting out there, sorry, I am a 70s child, a lot of youngsters out there assume that if I just talk about it and if there is an option to label me, I'll get away from doing certain things. I don't think I'm batting for that. I'm actually batting for the fact that you do have a problem, you want to talk about it, but your parent has not understood the magnitude. I'm saying that some amount of responsibility is with the adult generation. My point was that. And to get help for ourselves. I think we've got to be, as that generation, parenting ourselves with better techniques to cope with the generation that's super exposed. So I want to add, I've always joked that the kids don't need the help despite me being a child psychiatrist. It's the parents. Gotcha. The parents need to come in, and I say this always, right? Like if we have a toothache, for example, that's been needling us for like a week, you're not going to go to a cardiologist. If you have a sprained foot or a fracture, you will go to an orthopedic surgeon. Then why is it so difficult to approach us? We're not scary people. We are mental health professionals. We do not over-label and over-diagnose. So then what you were saying, right? I mean, yes, is there overexposure?
Is there social media? Is there AI playing into the minds and feeding of children with regards to over-labeling and over-diagnosing of mental health? But that's exactly why we're here, to make sure whether it's an emotional problem, a family problem, or then an actual neurochemical imbalance, right? Because today, I think a lot of us use depression and anxiety very loosely. Like there's some stress at work, or things are not going my way, I'm feeling suicidal, or I'm depressed. But it may not be clinical depression, right? And if you seek the right help at the right time and create that awareness and acceptance for yourself and your family, then I say you could probably save a life or you can prevent suicide if it is clinical. Yeah, but the point again being, Dr. Marka, a lot of them are actually not going to the psychiatrist or the counselor or the experts. AI can get used, and I believe it's an enabler. But sometimes there's that gray area that you're Googling symptoms and you're just working out that, hey, listen, I'm going through trauma. Or this is toxic because my boss spoke to me in a particular way. Hey, grow up. We all have a conversation, somebody's stressed. I think what I'm trying to get at is the magnitude at which we overanalyze instead of actually making it very simple. She spoke rudely, she was having a bad day, get over it, move on. But what is serious is when you are falling into that rut where you don't know what's going on and you don't want to wake up to get out of bed and it's not something you can control. I'm talking about that being a conversation that needs a bit more attention with the adults in the room. Yep. I'm just going to quickly come in there. So the Gen Zs have been raised by a generation that are not very open to going and seeking therapy. It's a social shame. What is wrong with my child? Oh my God, therapy is like looked down upon. It's a scary place to be. Versus my generation, honestly, I would much rather talk to a therapist when I have to deal with my child and get the correct guidance and then deal with my child than kind of go to Google. And I feel like that's not just me. I see that across the board with a lot of my friends where we actually seek help from professionals and then guide our children accordingly. Simone, but that's a very evolved thought, and that's a thought we're having in the top 1%. For the larger population of the country, I feel like these are topics that probably could be touched upon more. But it's an interesting thing you mentioned there, Fatima, because my mom's a doctor, and I remember when I used to go to her clinic for any sort of treatment, or I thought I had a problem, I used to Google it before I went there. So much before ChatGPT and Gemini, she had a board outside which said, if you've Googled this already, then you can cancel your appointment. Because a lot of young millennials like me were doing the same. Now it's the age of AI. And actually, you know what? Let's make this a safe space, all right? The doc is out here and there's a bunch of us. How many of us have used AI? When I say AI, I mean ChatGPT or Google Gemini or Perplexity to have a conversation about our emotions in a safe space. Quick show of hands. Right? So there's a fair set in the audience. Some of you all probably don't want to raise your hands in public, but I feel you. I do it all the time. I did it too. Quick confession, right? I do too. See, exactly. I absolutely do exactly. too. Doc, so, while there's pros and cons, right? The pros are that we have a safe space, or what we think ostensibly is a safe space. And then the cons are the kinds, the wrong set of news that we've been getting from around the world. Someone's taken it too far, someone's taken it too literally, and someone's done something which is unfortunate. These are the perils of using technology to take up the role of a medical professional. So I think at this point it's two different aspects, right? So parents, let's look at parents. I just feel that today parenting is a lot of snow plowing parenting, as I call it, which is trying to take away all the obstacles, problems, hurdles and pain away from their child's life. Is that really healthy? And the answer is absolutely not. Because if you don't teach our kids or the next generation to learn how to fail, fall, to make mistakes, learn from consequences. And that's what we've all done, right? Some of our best learnings have come from failure. Some of our best insights in life have come from pain or loss, right? And difficulties or disharmonies. But if you take all that away from the next generation that's to be, you're going to have a whole lot of people with no resilience, low stress tolerance, and very, very two magic words that I always bring up,
is poor acceptability and adaptability. And for me, these are the two pillars of strength for resilience. The more accepting we become to situations, to ourselves, to our own thoughts, to our own minds, and with regards to mental health, therefore you can be more adapting, right? And today we are seeing a lot of, like you were saying, a lot of this generation is finding it difficult to adapt to situations, to mental health concerns and things like that. So coming back to the AI, so I have a lot of my young clients, right, who will actually openly share with me their chats that they've had on ChatGPT, where they've used that to kind of voice their thoughts, feelings, and emotions. And I've read some of the chats and the responses that they come back. It's all algorithms that come up, and it's not sometimes showing the mirror. You can't just be the chat coming back to you is accepting your pain, is showcasing empathy, is kind of using a more supportive psychotherapeutic feedback. But the way I look at therapy is sometimes you have to call it out. You have to show someone the mirror to be more accepting of yourself or your negative thoughts or your thinking, or then give a reality check to some of the problems and give healthy coping mechanisms. So for me, I differ with that. I feel anyways, we are living in such a huge digital age and virtual reality that sometimes come to us, experience the physical contact and the physical face-to-face session of beautiful minds coming together. And I don't look at therapy as therapy and counseling. I look at it as life coaching. I mean, we have business coaches, you have tennis coaches, and life coaching is a beautiful term because I think all of us need it at some point. Doc, I'm going to take one for the team. Yeah, if you could just elaborate. When you talk about a psychiatrist, a psychologist, a therapist, a life coach, how does one who is completely naive approach the situation? Who do I go to? And what is, depending on the gravity of the situation, what would you recommend? So I think the first step is if there is a problem and there's a question mark whether I'm feeling low, depressed, anxious, panic attacks, whatever of course, like you said, all of us go to Google first to understand perhaps a bit of what we're going through. Any mental health professional first. So it could be a psychologist or a psychiatrist or even a counselor, right? The difference is what's clinical and what's non-clinical. So I think the first step, if you're still unsure or you're an individual or a parent, come to us as a psychiatrist because we then will tell you whether your depression or what you're feeling or your moods that you're going through is something because of an external situation, a situation at home, a toxic environment at your workspace. But that could be that too, but at the same time, if you're experiencing certain symptoms, right, that can be picked up. And if it's clinical, unfortunately, it's clinical. What is clinical? It's a neurochemical imbalance. So depression, just as an example, at its clinical best, is a serotonin imbalance in the brain. And you can't fix that with just talk therapy or ChatGPT and counseling. Sometimes, unfortunately or fortunately, we have to use medication. Yeah. And today, the biggest stigma that you were talking about is, I don't want to start medications and drugs. I'll be dull, I'll be sleepy, I'll gain weight, I'll have sexual dysfunctions, etc. And that stops the treatment or the right treatment sometimes right there. Ayush, I just want to jump in. When I talked about AI being an enabler, it wasn't about replacing counseling. What I was saying is that there is a lot available to regulate your emotions, to actually get into a healthier lifestyle. I'm a sportsman's wife. I think I just heard a young athlete talk about the fact that her goal was to win. She didn't think about being depressed or what, didn't work out. She was thinking about the joy it brought her. So there are lots of AI apps available to help you regulate your sleep, help you time manage. Big problem with children who are diagnosed with ADHD, they just don't have attention. There's lots that can help you put a structure in your life. I'm using that as an enabler, not to get consult to say, hey, listen, are you depressed or are you just anxious? Can this be medicated or not? I think that's the big game changer. Why don't we use that effectively? You're right. Honestly, everyone's talking about AI because there's so much pressure from investors and society and everyone to use AI in some form. But from a tech perspective, there's machine learning algorithms that have been working. The latest products launched at Apple, the Apple Watch for one. I was talking to a doctor recently on the show,
and it has hypertension alerts. It has a sleep score now, a recovery score. You know, you can judge what your blood oxygen's like, ECG, arrhythmia, heart rate notifications. You can use technology for good. Can always be the good one there. But, you know, just as we're wrapping up, and I think this has been an insightful session. Thank you, Doc, for that last bit, because I wanted to really put myself out on a limb out there. Simone, you put your life out there on social media, right? And as social media creators, sometimes we need to have filters. I've seen your content. Hats off to you, because it's literally the same when I'm sitting with you over here, and that's a very difficult thing to do. But tell me, if there are certain changes or tweaks that you can make to your lifestyle, and I'll come to the other panelists as well, what is it that you would do from the prism of social media differently to probably lead a healthier lifestyle, physically and mentally? Okay, so what I do is, and I feel like this needs to be what a lot of content creators do, is firstly, content creators take a lot of pressure upon themselves. I have to do this. I have to post so many times a week. I have to, or I'm going to lose followers, or I'm not going to, or she's going to go ahead of me, or it's just non-stop. Stop. I've grown without putting that pressure on myself. If I have to take 4 days off and not post, I will take those 4 days off. If I need to recharge, I will recharge, and it's okay. I can still manifest that one reel going viral that's going to do for me everything that 4 days of stressful content is going to. There's no need to stress yourself out in the journey of kind of trying to grow in any field. I mean, this is just content creation. Having said that, putting myself out there is something I personally choose to do. I believe that I've created my community because they know who I am, they trust me, I've shared my highs, I've shared my lows. But I, as a parent, have boundaries. If my child's going to be throwing a tantrum and crying and sharing his deepest, darkest secrets with me, am I going to film him and put that on social media? Absolutely not. Absolutely not. Am I going to talk about the fact that my child dealt with something and this is how, as a parent, I seeked help to overcome certain issues without getting into details? Absolutely. Now, also adding on to what Dr. Marcus said earlier, he can't say it because he's polite. I'll say it. Every alternate account is a life coach now. Life coaches, I have so many friends who've become life coaches because they were depressed, they found help, and today they believe that they can now coach you into getting out of that. While I respect their breathing techniques and I respect the meditation and I respect that any holistic practice is great, I have one of my best friends did not want to take his medication, he did not want to take therapy, and he's not with us anymore. He passed away, he did what he did, and I highly urge people that seek professional help. Absolutely. That's Fatima, I want to take the same question to you because we have maybe a few seconds left. But just to end this one, certain tips that you would recommend to the audience and everyone watching that would make your lifestyle a whole lot healthier. The doc's going to sum this up though. I think it's non-negotiable that you need to sleep. You need to regulate that sleep. Fitness has to be a part of your lifestyle. I've learned it the hard way. I almost had a breakdown, rock bottom, because I was overworked. I thought I could do it all, and then you realize that it costs a lot to get then the help, as opposed to just becoming more fit, sleeping well. Putting those boundaries, I agree with Simone. I'm on social media as well. I put out content when I want. But I think you have to reach that point in your life where you don't regret not being out there. That's your space. You'll have to figure it out. Some mistakes will happen. You will figure it out. So the message I want to say is that if you can have a sport or any form of music, dance, art, it does help. It's therapeutic. Sleep well. And please, this is non-negotiable. Please see a medical professional. ChatGPT or a teacher or a parent are not the medical professionals. We are parents. Fair point. Over to the medical professional for the last 20 seconds of this conversation. So a quick statistics again, WHO. By the time there is acknowledgement that something is not okay within myself, to the time youth reaches medical help, is guess how many months or years? 8 to 10 years. Imagine what can get lost in 8 to 10 years. So my last message is, if you're not sure
or you have a loved one who's suffering in any way, or you feel someone may not be okay, reach out or encourage others to reach out, because like Simone said, you could probably just save a life. When we were training, we were told if someone's perhaps suicidal, oh, please don't ask them, you're putting thoughts into their mind. That's absolutely rubbish. They say just sometimes by asking someone and supporting their feelings and emotions and asking them if they're okay and if they need help, or you need us to be sitting beside them to hear them out, you could perhaps save a life. So please do that moving forward. Doc, you know, to practice what we are preaching, and also in the spirit of taking this conversation forward, all of us are active on social media. You can slide into our DMs. We're still here for a bit. You can have a conversation with us over coffee. This conversation continues. And for this lovely conversation, Fatima, Doctor, and Simone, what a pleasure to have you here at NDTV Yuva. And what an amazing audience. A huge, huge round of applause. Thank you. Thank you very much. What an enlightening conversation. I'm sure it's given us all to think about a lot of things. Now, What a lovely conversation, What a lovely quite insightful, and I have learned a lot, Aditi. so have I gained a lot to think about later. पर एक सवाल है मेरे मन में. आज के hustle culture में अरुण, are we living or are we surviving? What do you think? I think we're trying to do both, and it's a tight rope, but I think it's very important to have that guidance, and that is where our next speaker comes in, Aditi. Indeed, हमारे next speaker कहते हैं it's time to reclaim life अपने तरीके से. So ladies and gentlemen, our next speaker is on a mission to help you unlock the changes you already know you want to make. Yes, he works with artists, athletes, entrepreneurs, and CEOs around the world, and he brings his experience as a former investment banker and healthcare entrepreneur to the table. But here's the key. The session is not just about sitting back and listening. When Rasik steps on stage, we want you up on your feet, moving to the music and ready to engage. What you put in is what you will get out. So let's make it interactive. Let's make it fun. Let's welcome Rasik Chopra. A huge round of applause and some music, of course. We need your involvement. Let's go. Up, Get up, get up. Up, up. Come on. Stand up. Stand up. All right. Let's go. Come on, everybody. Let's move. I know you guys can move. I want to see you move. Come on. Come on. Come on. Let's go. Is this the youth? I want to see some youthful energy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. And a big round of applause for that wonderful panel we just had. Come on, guys. Let's show them some love. That was wonderful. All right. Why did I ask you all to get up and move and show me some energy? I'm not here today to give you gyan. I'm not here today to give you information. As we just heard, there is plenty of information that is out there. You don't need more information from me, right? How many of you know already that it is not a good idea to eat too much junk food, too much alcohol, and smoke too many cigarettes? How many of you already know that? Say aye. All right. Some of you don't know that apparently. How many of you already know that it's bad to drink too much alcohol, smoke too many cigarettes, and food? Say aye. All right. How many of you do it anyway? Say aye. How many of you are telling the truth? Say aye. All right. How many of you know it's not a good idea for your mental health to spend hours every day on social media? Say aye. How many of you do it anyway? Say aye. That's right. So it's not about information. This is a smart group of people. You're all achievers, otherwise you wouldn't be here. You're here because you want to grow.
So you don't need information. What you need, what all of us need, and what I invite you to do today, is to take away 3 things that is not just information, but is something that you will use. And you will only use it if it is in your body. People say knowledge is power. Knowledge is potential power. It's only when you use that knowledge that it becomes power. Who understands? Say I. That's right. Now, here's what I want you to tell me. What makes the difference between something that is just information and something that you actually use in your life? Now, you might not remember every date that you studied in history class, but you probably remember the date of your best friend's birthday, yes? Yes. Why? Because there's an emotional connection over there, isn't there? It means something to you. We all knew that climate change was a problem, but why is it stood up and took notice when a young schoolgirl called Greta Thunberg sat outside her class and would not go to school and stood up and with a lot of anger, which was justified, said this has to stop? Why did we take notice then? Was there more emotion in that conversation? Yes? Yes, there was. And that's why we took notice, because information with emotion is what makes the difference. My grandfather was a doctor, and he died in his 60s, which is really young. And he died because he had a cardiac arrest, and fortunately he was revived. And he was told by his doctors, you cannot smoke. If you smoke, you will die. It's not a maybe, you will die. Now, this is a doctor. He knew that smoking would kill him, but he still did it. And we were all too scared to say anything to him because he was one of those Punjabi grandfathers who was the patriarch of the family, and no one could say anything to him. But if one of us had had the courage to go to him, I had gone to him and say, Dada, I love you, and if you die, I won't be able to take it. Do you think he might have made a different choice, yes or no? Yes, that's right, because there's emotion in that conversation. So what I would like all of you to do today is join me taking the information that we have here, adding some emotion to it so that you can actually use it. Who's interested in doing that? Say I. Just a few of you? Who's really interested in taking some information that you can use to improve the quality of your life and using it? Say I. All right, I like that. Now, emotion comes in many ways, but one way that we can generate emotion is through motion. What's the first thing you do when you're really excited? You sit down quietly like this, or do you expand? What do? Expand, that's right. If you go out for a walk, if you go out for a run, if you exercise, if you dance, if you have sex, do you get more excited or less excited? Which one? Wow, that's some pretty sad sex you guys are having. Do you get more excited or less excited? More excited, that's right. If you move, the emotion goes up. If the information that we're about to see gets retained. Research shows that if you just listen to what I'm saying today, unbelievably interesting. In 3 months, you will only retain 10% of it. I want you to retain all of it, and I want you to use all of it. Thank you very much. Sorry, guys. All right, so is everyone willing to stand up one more time and this time move like you really want to retain some information? If you are, say I. All right, now here's what I want you to do. I want everyone to stand up, look at the person next to you. Stand up, please. Thank you. Stand up, all right. I want you to look at the person next to you, and here's what you're going to do. In the loudest voice you can, we're all going to do this together. You're going to say your name. I am Rasik, whatever your name is. And then you're going to say, you rock. And the other person is going to look back at you and say, no, you rock. All right? We're going to do that 3 times, and then with the band, this awesome band over here, who I think is awesome, by the way, is going to play some amazing music, and we're going to get up and move. Is everyone ready? All right, pick a partner. Turn to them. Say your name. Again, you rock. No, you rock.
No, you rock. No, you rock. All right, let's have some music. Come on, guys. All right, this time. Come on, shake the building. Let's go. Let's go. Let's go. Come on, guys. Woo! Come on. I know you guys can move. Let's move it. Come on. Outdo the guy next to you. Yes. Yes. All right. Well done. Thank you. Give yourself a hand. Well done. Well done. Does everyone feel like the energy levels are a little bit higher? Yes, all right. Great. Now, in order to take charge of your life, everyone needs to do one thing. Be a leader. What does it mean to be a leader? A leader doesn't mean being in charge of people who report to you. A leader means being someone who can influence other people. Would you agree? Say yes. Yes. If you can influence someone else, you don't need a team, you don't need an army. Mahatma Gandhi was one of the most influential people who ever lived. He did not have an army. He didn't have a team, he didn't have board meetings. He had influence because he said something that meant something, right? He stood for something. So, if you want to have influence on other people, who is the first person that you need to be able to influence? Yourself, that's right. And so that's what we're going to talk about today. We're going to talk about what it takes to influence yourself. Now, in order to be able to influence yourself, there are three things I'm going to invite all of you to be students of today. And I'm not going to ask you to take mastery of these things, because I don't understand what that word means. If I attend a workshop one weekend, which is called Relationship Mastery, and I go home and tell my wife, hey, guess what? I have mastery of relationships. You have what? Yeah, that's not going to go down very well. So, to me, the greatest leaders are learners, right? Warren Buffett, one of the greatest investors of all time, spends 5 to 6 hours a day reading. Bill Gates takes 2 weeks off every year just to read and learn. Barack Obama, even when he was president, would take an hour out every night to read and to learn. If you want to be a leader, you have to be a learner. So I invite you to be students of the three things that I'm going to share with you today, so that you're always learning and you're always growing. Who's interested in doing that? Say, I. All right. Here are three things. I would encourage you to write them down. The three things that I would encourage you to do, the quality of these three things in your life will shape the quality of your life. Number one, your decisions. The quality of your decisions will shape the quality of your life. Number two, disappointment. The quality of your disappointment will shape the quality of your life. And finally, number three, devotion. The quality of your devotion will shape the quality of your life. Let me tell you what this means. Decisions. Your destiny, your life is designed not by your circumstances, but by the decisions you make. We all tend to think it's what I have that is going to make the difference. It isn't. It's what you do with what you have that is going to make the difference. And I'm going to tell you a story of someone you probably know of. He was born in 1947. His name was Arnold Schwarzenegger. Has everyone heard of Arnold Schwarzenegger? Yes, all right. Arnold Schwarzenegger was born in a tiny village called Thal, which is near a town called Graz. Now, Thal has a population of a few hundred people, which means the entire town could fit in one Noida tower. Okay? There was nothing in that town. He was poor. They didn't even have indoor plumbing. If he wanted to go and do pee-pee, he had to go outside. But at age 14, Arnold Schwarzenegger read about a guy called Reg Park. Reg Park was a famous bodybuilder from the UK. Reg Park had also come from humble beginnings, just like Arnold. But Reg Park was 3 times Mr. Universe champion. And he was also an international movie star. And 14-year-old Arnold saw Reg Park and said, that is what I want to be. He decided on that day, that is what I'm going to do. It was a decision. It might have been a good decision, it might have been a bad decision, but it was a decision. And he decided that he would start working out. Now, the closest gym to Arnold Schwarzenegger was 15 kilometers away, which means he would have to ride his bike 15 kilometers one way and ride it back 15 kilometers the other way. And for most of us, that's our entire workout.
That is what he had to do so that he could work out. And he made the decision that he was going to do it anyway. And he did. And at age 18, he decides to compete in Junior Mr. Europe. Now he has a choice to make. He has a decision to make. He can compete in Junior Mr. Europe and elevate himself in the game, or he can do his required army service. If he does not do his army service, he will go to jail. Which one do you think he chose? Mr. Europe or jail? Which one do you think he chose? What did he choose? Mr. Europe, that's right. He made a decision that day, I will go to jail, but I will not give up on my dream. Luckily, he only spent a week in jail, but he made a decision. Then he decided, hey, I think I'm pretty good at this bodybuilding thing. Maybe I should do more. And he moved to Munich, even though he had no money, and he worked odd jobs because he found mentors over there who could guide him. And at 19, he finally made it over to London to participate in the Mr. Universe competition. And guess what? He lost. And he made a decision that day. What do you think he decided? Do you think he was going to give up? Or do you think he decided he was going to go and try again? What did he decide? Try again, that's right. Now remember, this is a poor guy. He had no money, no prospects, no family backing, because all of us tend to think at some point in our lives that my circumstances are so awful, if only I had more, if only I'd been given more, if only I was more talented. Arnold Schwarzenegger was none of those things. And he still said, I'm going to try again. And he went back the next year, and at age 20, he won Mr. Universe and became the youngest guy to ever do so. And then he won it 3 more times. And then he was pretty well settled in the bodybuilding world. He could have just stayed there. But if you remember what his original dream was, it was to be Mr. Universe and what? International movie star, right? So now he goes to Hollywood. And he enters Mr. Olympia, which is an even bigger competition. And do you think he wins or loses? What does he do? He loses terribly. And what do you think he decides to do? Give up or try again? Try again. Wow, look at you guys. So positive. Yes, he tries again. And he wins. And he wins 6 more times after that. 7-time winner. Now this guy's on a roll. Remember, he came from nothing. And he decides to make his dream of becoming a Hollywood movie star true. And he gets a role. And he makes a movie. How do you think the movie did? Did it do well or did it flop? Flopped. It was a horrible flop. I don't care what a big Arnold Schwarzenegger fan you are, do not watch that movie. It's called Hercules in New York. It is terrible. Do you think he gave up or do you think he tried again? That's right, he tried again. And the rest is history, because the movies he made after that became the blockbusters that you all know and love. And then, I mean, that's a pretty good career for anyone, right? He decided he wanted more. He was going to run for governor of California. Now, just to be clear, this is a man who can't even pronounce the word California. He says California, right? And he decides to run for governor. During this whole time, people are telling him, you are not going to make it, man. You're a bodybuilder, actor, you can barely speak, you're not even you're a naturalized citizen of this country. You weren't born here. But he wins. And he becomes governor. Now, this is a guy who had nothing, who came from nothing. No one gave him anything. Everything he got, he did because of the decisions that he made. So I encourage all of you to think about the fact that whatever it is you're experiencing in your life today, whether it's working for you or not working for you, what is a decision that you can make that will change the outcome? Because the choice is yours. How you think about it, how you behave, how you respond, whether you win or lose. Now, here's what tends to happen. We all have certain things that we want in our life. Is there anyone over here who can tell me about an issue they're facing? Anyone? No issues? Everyone is issue-free? Anyone? I want anyone to put up their hand and tell me about something that they want to change in their life.
What about you, sir? I'm just going to call on you. Yes, you. Is there any issue that you're facing in your life? You're very happy with your life. All right. Is there anything in your life that you want to change at all? Or do you want to stay exactly like this for the rest of your life? I'm so sorry, I can't hear you. Actually, sir, I am very happy in my life because I have total hold of my life. That's amazing. Can everyone see it when you look at this guy? You can see it in his face, can't you? He has this amazing energy. What's your name, sir? Sir, Harsh Jadon. I'm sorry? Harsh, 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 J-A-D-A-U-N. can we have a round of applause for Harsh, guys? Thank you for being a positive light, Harsh. But tell me something. You have this amazing positivity in your life. Yes, sir. I'm sure you want to share it with more people. Yes, sir. What is one change you would like to make in life so you can take this positivity you have and spread it even further? Sir, I think that people must have an attitude of always showing up because you know it's like life is unpredictable. There are downfalls. Like there are sometimes you fail, sometimes you win. But the thing that always make you energetic, always make you positive is like what you aspire to become. Wonderful. Now tell me something. What is the change you want to make so you can get that message to more people? Sir, my change is different. Like I want to make India a developed country. So I That's always amazing. think about this goal every time. Can we have a round of applause for that? Okay. And have you succeeded in making India a developed country? Sir, I am working day and night. You're working day and night. Let's have a round of applause for that too. Thank you very much. I appreciate that. Thank you, sir. All right. So everyone has issues in their life, goals. They might be beautiful, positive issues, like the one that Harsh shared with us, that he wants to achieve something which will take him a long time to achieve and perhaps never in his lifetime. It's an ongoing process. But we all have things that we want to affect in our life. Now here's the question. If you have a target and you haven't been able to hit it, will you be able to hit it with the same behavior that you've been using to hit it so far? Yes or no? No. Right. If you have a target and you haven't been able to hit it, you need a new behavior, right? A new behavior will give you a new outcome. No matter how positive Harsh is, does everyone believe that there is more that he could do so that he could have an even bigger impact? Yes or no? Yes, that's right. And Harsh knows that too. That's why he's sitting and smiling over there. He's like, I'll show you. So if you want a new outcome, if you want a new result, you need a new behavior. Now here's what happens. We all tend to get into certain emotional states. And those emotional states can be states of, I'm not good enough. I don't know if I'll make it. I'm overwhelmed. What will happen if I fail? Right? And when we get into those emotional states, the behavior that comes out is that kind of behavior. If you're overwhelmed, what kind of behavior are you going to get? Creative behavior or overwhelmed behavior? Overwhelmed behavior, right? And so you'll get the same behavior, you'll get the same result. So what you need to do, if you want a different result, is a different behavior, and therefore you need a different emotional state. Now tell me, would you have a different behavior if instead of your emotional state being, I'm not good enough, I'm scared, I'm overwhelmed, what if your emotional state was compassionate, creative, brave, bold? Would you get a different result? Yes or no? That's right. So how do we change our emotional state? How do we do it? We tend to wait for it to happen, right? People are good to us, we have success, I feel good. If people are not nice to us, I don't have success, I feel bad, right? But what if you could change your emotional state all by yourself? So I'm going to invite everyone to stand up for a moment. One more time. Come on, you're getting your day's exercise today. All right, here we go. Now, research has shown, and we have a doctor in the audience and he can confirm this, research has shown that if you do one thing, get in this pose, you know, the Wonder Woman pose, the Superman pose. Can everyone do that for a moment? Like this. Come on. You guys can all lift your hands. Come on, come on, come on. That's right. If you hold this pose for 2 minutes, just 2 minutes, men and women, your testosterone level will go up, your cortisol level, which is your stress hormone, will go down, and you're 30% more likely to take an action that you otherwise wouldn't take, just by standing like that. So the way you use your body is going to have an impact on your state. And this is the first thing I do with people when they walk into my office. People will walk in feeling sad. Now you guys tell me, keep holding the state, guys, 2 minutes. If someone walks into my office and they say they're feeling sad, do you think their posture is upright like this or bent over? What is it? Bent over. Do you think they're breathing nice and deep or do you think they're breathing shallow?
Yeah. Do you think they're speaking loudly like this or softly like this? How do you all have the same answer? We didn't rehearse this before, but you guys already know that the way you use your body affects your mood, and your mood affects the way you use your body. So if you change your body, and when I work with people in seminars, the shortest seminar I do is 20 hours, by the way. So it's very hard for me to do 20-minute talks. But when I work with people for 20 hours, we radically change the body, right? We change the way people use their voice. We change the way they stand. We change the way they breathe. And imagine if you did that. Imagine if you breathe the way you breathe when you feel like a champion. Breathe that way right now. Breathe the way that you, yeah, exactly. That's right. Stand like that. Look up. Say something. Say your name in a proud way. Say it. Yes, that's right. You feel different, don't you? Just the way you move your body is going to change everything. And you already know that. Thank you very much. Give yourself a round of applause. Have a seat. How many of you, and you can answer just by saying I, feel even 1% better after doing that? Say I. Pretty much everyone, right? And all you did was you stood up for 2 minutes and pretended to be Wonder Woman or Superman, right? Now, what do we do if we want to make a more meaningful change in our emotional state, right? Standing like this is great, and I will have people do that. I can give you the name, I can't give you the name, but I can tell you about a client of mine whose name, if I gave it to you, you would know. They're internationally renowned. And before COVID, this person was traveling all around the world, doing incredible things, invited by the top institutions of the world. And then COVID happened, and suddenly they got into a funk, and they felt scared about leaving their house. Some stuff happened in their personal lives. And even after COVID kind of went away, they were terrified of getting on an airplane. And their work involved getting on airplanes and traveling around the world. And they just couldn't do it. And they came to me in that state. And how do you think they were standing? Were they standing like this or like this? Like this, right? Do you think they were breathing nice and deep or shallow? Yeah. Do you think they were talking loud or soft? That's right. And they came to me like that, and I immediately saw what you guys already know, is that this person needs to change their state so that they can start making changes. Now, this person was absolutely terrified about getting on an airplane, and we did some work, but let me tell you what made a change in just 20 minutes. I asked this person, think of a time in your life where you felt unbelievably proud of yourself. And they thought about it, and I said, not in an arrogant way, but just where you had worked hard for something and you got a justifiable reward. And they thought about it, and they said, oh yeah, it was this time that I won an award. And if I told you the name of the award, you'd know that too. And I said, all right, what was the most proud moment? Was it when you were walking up to receive the award? Was it when you came home to your family afterwards? Was it when you celebrated with your friends? What was it? And they said, well, it was when I was walking up to receive the award. And I said, all right, how did you walk to receive that award? And they were a little shy, but eventually they showed me, and it was kind of like this, right? And I said, all right, let's try that. And I had them pretend they were walking down the aisle of an airplane, and they walked down like this. And we did that not once, not twice. If you need to do a bicep curl, do you do it once or do you do it 10 times for it to have an impact? How many times? That's right. So we did that once, twice, 3 times, 4 times, 5 times, 10 times. And eventually, this person got to the point where I said, airplane, and they just got into that state. And they walked like this, right? And that's literally all it took. We did a whole bunch of work after that. But that day, before they left my office, they picked up the phone, called that travel agent, who they hadn't talked to in a while, and said, book me that flight to China. And they got on that plane. So you can change your state rapidly if you use your body. And I think, are we out of time? Yeah, we're out of time. I'm sorry, I actually had a lot more to say to you guys. But there's just one quick, do I have 1 minute? Yes, thank you very much. One more time, guys, stand up. Come on, come on, come on, quickly. We have 1 minute to go, and I want to give you guys something that you can use, something you can take home. All right, now, how do you create a more permanent shift, a more meaningful change in your state? Here's how you do it. Ask a better question. How many of you, if you wanted to, could focus on something that would make you feel grateful? Say, I. All right, now I want you to think of one thing that you could feel grateful for. Close your eyes, just stand there for a moment. One thing that if you focused on, it could be something small, it could be something that happened this morning, all right?
think of one thing that if you thought about it, you could feel grateful. Yes, very good. That's right. And now, think about it. If you wanted to feel proud, what is one thing you could think about that if you focused on it, you could feel proud? That's right. That's right. And now, think of one thing that if you focused on it, you could feel excited. There you go. One thing that would make you feel excited if you focused on it. That's right. And now everybody, make the sound of that excitement. Make that sound all together. Come on. Woo! All right. And now, think of anything in your life that you want to achieve that might not have seemed easy. Close your eyes. Think of that one thing and see it as done. It's done. Forget about the how. It doesn't matter. See it as done. That's right, because when you come from a place of gratitude and pride and excitement, it's impossible to feel fear. Your state fundamentally shifts. How many of you feel that that thing can be done? Say, I. Just about every one of you, right? And all you did was ask yourself a different question. So I encourage all of you, I'm sorry we didn't get through everything I wanted to share, but if you can do this one thing, anytime you feel a little down, get up, move your body, ask yourself different questions. Ask yourself, what can you feel grateful for? What can you feel proud about? What can you be excited about? And I promise you, you will get a different result. And come on, everybody. Let's go. Come on. Let's go. Come on. Come on. Clap your hands. Come on, guys. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. Well done. Thank you. Thank you, everyone. Big round of applause for the band, and a big round of applause to all of you. May you all be blessed and go out and grow and live wonderful lives. Thank you. Thank you, Rasik. Thank you so much, Rasik. Thanks a lot. That was quite a lovely and insightful session. And before we move on to the next session, I think it's very important to have the conversation going between us as well. So what I'm going to do is I'm going to come in the audience, talk to you guys a little bit, Aditi, while both of us can also keep our chat going. Exactly. So I'll quickly go and ask the Yuva, youngsters, Gen Z, about their idea of Yuva. It's not working. Okay, how do you define Yuva? What, according to you, represents your generation? You can be fun about it. Don't be that serious. Hi, what's your name? Bhumesh. Umesh, how do you define your generation? First of all, how old are you? I am 21. 21. So how would you define your generation, which is Yuva? Courageous. That's a good start. Courageous. Any other, we can go beyond one word as well. You know, you can be elaborative about it. What do you think? I really think I really think they are courageous. They want to experiment new thing. They want to do something different in life. They want to do something for India. Yeah. Okay. Give it up for both the gentlemen here. Let's ask the beautiful girls here. Yeah, let's go What's your across to name? some girls. My name is Ashita. Ashita, what's your idea of being so beautiful, and at the same time, what do you aim to do in life? And about this event that's happening here, what do you have to say about it? Is it motivating you in the right way? Yes, absolutely. I have been thinking about myself and thinking about the ideas also that I have in my mind while they were speaking. So it's been very insightful. What's your name? Myself Akanksha. आकांक्षा भी जब रसिक बात कर रहे थे, उन्होंने आपको बॉडी पोस्चर के बारे में बताया. आप अगर सीधे खड़े होंगे और आपकी जो रिस्ट है आपके यहाँ कमर पे होंगी, आपको कुछ फर्क लगा उस वक्त? Actually, I also follow this technique. Whenever I feel down, I start dancing without music. So without music? करके दिखाओ? नहीं अभी नहीं. I do it alone in my own room. नहीं, सबके सामने करके दिखाओ, सबको मोटिवेट करो. युवा हो आप. Okay, fine. Trying to study, but I can't. As a student, when you try to study, you can't focus,
and then you're like, oh, I can't do this. I just start jumping on my own place. Do that. So I'll just go like this or something. I imagine I'm in a party or something, like I'm really happy. I got back in my memory lane where I was really enjoying with my friends or something like that. आप में से कौन ये करना चाहेगा अभी? Anybody who wants to join her? I would want to join you. Oh my god, I can dance. You can't dance. I can dance like You I can. Wow, yeah. do that So without I'll music. Do this. I can do ghunghru, but not in heels. I can dance जो like. best कर सकते हो. Okay. Yay, let's go. Wonderful. The music plays in your head. Lovely. Give it up for these ladies. And now, you know, हमने ज्ञान की काफी बातें कर ली. Now they say Yuva is always online. They're always on their phones. They're always on Instagram, scrolling reels. Thanks for my career. But I want you guys to tell me your screen time. Okay, let's see whose screen time is the highest, and we'll get the loudest cheer for that person. What's your screen time? For today, it's 2 hours, 11 minutes. Because you're at the event. 1 hour, 51 minutes. 57 minutes. 4 hours, 47 minutes. What? 4 hours already? Have you been up all night? Yeah. What about you? It's 4 hours, 21 minutes. We have a tie. 4 hours, 21 minutes. What's yours? 4 hours, 47 minutes. What's your name? Arpita. Give it up for Arpita. She's been spending a lot of time on her phone and also gathering knowledge. It's not waste of time. जरूरी नहीं कि अगर आप अपने phone पर हैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं. Of course, you're gathering knowledge. You are, of course, learning something or the other. And here I have phenomenal artists here. I would want you guys to just pause for a bit. Tell me your names. Aditi. Gaurav. Aditi, Gaurav, you're drawing several personalities who are going to join us on NDTV Yuva 2025 Mumbai edition. Which one is your favorite? Sorry to put you on spot like that. Manushi. Manushi Chiller is your favorite. You're excited to hear her conversation. What about you? A lot of celebrities and the politicians like Milind Devra and Arman Malik for the singer. Give me one name. Arman Malik. Arman Malik. Give it up for Manushi and Arman, who will be joining us as we progress through the day. But we also have another very exciting session planned up. But Aditi, I would want you to, of course, talk to some more Yuva there. Indeed, let's go. आज आप कौन से सेशन के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? अरमान मलिक. क्या पूछना चाहेंगे अगर मौका मिला बात करने का? Well, actually, I wanted to talk to the boxers, the athletes, because I come from a sports background, sports management student from IISM. So I wanted to question them about how difficult was it for them to come from Haryana and be the world champion, and what were the dreams as a child that were like, you know, we all have left go certain dreams that we always had. So that is something I wanted to ask them, but unfortunately I couldn't. But nevertheless, I'm a musician, so with Arman I would like to understand, how does he write songs? How does he compose? What are the ideas that he certainly has for his upcoming projects as well? अच्छा, अरमान तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन आप बताइए, आप कह रहे हो आप एक म्यूजिशियन हो, तो आपने क्या किया है? How do you write and how do you sing? Well, it certainly is the emotions that, you know, जब आप कुछ चीज़ feel करते हो तो वो आप लिखना चालू कर दो, आप लिख देते हो वो चीज़. So it's just as simple as that. Whenever you try to compose or write a song, it's just the emotions that need. आप गाते भी हो? नहीं. आप में से कोई गाता है? हम कुछ गाना सुन लेते हैं. You? Who sings here? What's his name? Jatin, you're quite popular. खड़े हो जाओ आप तो. Give it up for Jatin. Let's face the audience. Come here. And also face our cap. So meet Jatin, who's quite popular, especially in the ladies. Ladies, give him a chair, yeah? And now everybody, give it up for Jatin. Thanks for doing this for us. Jatin, आप काफी popular हैं. सबसे पहले तो बताइए आप क्या गाते हैं? I'm not good at singing. What? I'm not good at singing. I think that I'm not good at singing. Okay, we'll decide that, Jatin. Okay, we want you to sing for us if you can. What do you want me to sing? Anything that you like, sir. दिल है मुश्किल की request. I'll sing तुम ही हो. Okay, ठीक है.
Is there anyone you're dedicating this to? No, no, no. I got it. Okay, go ahead, Jatin. Yeah, can I do? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो पाएंगे तो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम। वाह, बहुत बढ़िया यार, जोरदार तालियां। जतिन, आपको पता है मैं भी ट्रेन सिंगर हूँ। आपको पता है? मैं ट्रेन में गाता हूँ। That's I call it train singer. But anyway, thank you, Jatin. जोरदार तालियां जतिन के लिए. And with that musical note, I think now we should break for lunch. All of us are hungry, but when we come back, we'll have a stunning actress talk to me. So you'll have two pretty faces on the stage, okay? So please join us right back here within 30 minutes. Go have your lunch, enjoy your afternoon. Thank you. लेट आए राज। Glad you were born. चेंज कर रहे हैं, हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसमें देखा भी नहीं, सीरियसली आई एम नॉट सीन इट। मैं तो बहुत किया, मतलब बहुत ही है, इसलिए टेंशन नहीं होता। कॉन्क्लेव मेरे लिए because of our sponsors. We'll quickly thank them. Presenting sponsor is ITW Universe. Co-presenting sponsor Divisa Herbal. Platinum partner Adani Group. Motorola. Strength partner Adani Ambuja Cement. Celebration partner Radico Royal Ranthambore. Banking partner Canara Bank. Hydration partner Fast and Up. Co-powered by Adani Wilmar. SBI Cards. Shimaru. Outdoor partner Bright Outdoor. Social media partner Explurger. Associate partner Agio. Bombay Stock Exchange. One Up Shop. And on the drums and acoustics, we have Rishabh, Shankar and band. Can we hear from you guys? Lovely. Give a huge round of applause to them. तो युवाओं की दुनिया लाइक्स, स्वाइप्स और रील्स की दुनिया है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स और गवर्नेंस इस दुनिया से कनेक्ट कर पाते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अ वेरी डायनामिक लीडर मिलिंद देओरा। So give it up for Mr. Milind Deora. Can we have you on stage, sir? And of course, a little bit of band to welcome, sir. And here we hand over the mic to our lovely colleague, Padmaja. There you go. Thank you so much, Aditi and Arun. It's only fitting.
एक नंबर चेक कर कॉर्डलेस एक नंबर चेक कर कॉर्डलेस एक नंबर 41 चैनल चेक 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 41 में नहीं था क्या मैं एक नंबर की बात कर रहा हूँ इसमें डाल एक या दो ही आते हैं ये जो मैं बात कर रहा हूँ एक क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो बिना मैक्स सेव एक्सेसरी ना ये थर्ड पार्टी है कनेक्ट होता है उसमें आपके उसमें बताते हैं फाइंड माय हे ये कितना नंबर में आ रहा है हेलो हे हे 8 नंबर पे रुक जा तैयारी करना I'm hosting that. I'll see you, man.
Hey, check. Art okay?
बोलो. Mic 6, PCR audio. लाइन आउट डाला नहीं अब तक. है ही नहीं वहाँ. गिटार म्यूट कर दे प्लीज. म्यूट गिटार्स प्लीज.
चेक चेक हेडसेट 2 है ये मार्किंग करा दी Unmute guitars, please. Please check guitars. Check 1 2 check 1 2 check 1 2 check 1 2 He's playing guitars, please check. One two two hey check 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 hey one check check ये कितना नंबर पे आ रहे हैं वहीं से है चेक तू कब आया अभी लाइफ से अरे वाह ताई पहचान गई फैसला के आँख का ऑपरेशन करा लिया क्या बाहर जाए मेरी जूती मैंने यहीं अपने गांव में ही करवा लिया वो जो सूरज है ना अपना वो सब कर रहा है चेक 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 अरे वाह छोटी ये स्कूल में सीखा इंटरनेट पे इंटरनेट हाँ सूरज भैया है ना कौन है ये सूरज भैया आपको उनसे मिलना है क्या हाँ चलो वो रहे सूरज भैया चेक चेक हेलो हेलो खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं अदानी हम करके दिखाते हाँ कपूर जी क्या ठंडा है ना डोली मैम आपके यहाँ भी आएंगे तू सीढ़ी से आ जी हाँ कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल वो वीकेंड पे भाई साहब ये जो हैवी खाना खाते हैं ना साथ में हम भी आ जाते हैं अब से क्योंकि अब इस घर में आता है फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल जिसमें है गामा और राइजोनॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल घटाए डोली मैम क्या चला फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल अपनाओ बैड कोलेस्ट्रॉल घटाओ Cordless one check 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 roams the finest creature. Guitar less for percussion, Through the please. chaos of the sparkling For everyone. streetlights, Guitar less for everyone. I am reminded of the timeless valor of the majestic tiger. Amidst the glitz and glamour, I stay grounded, just like the tiger, always ready to roar. Ready to go, the world awaits as I unveil my finest self. In life's wild journey, we have one shot to thrill. And when done flawlessly, we unwind and allow our spirits to rejuvenate. Royal Ranthambore, India's finest, yet. hey hey check 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 ये रमेश तेरे को आ रहा है तो इसको म्यूट कर ये check 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 तेरे को ये माइक किसका है जो बात कर रहे हैं बहुत लाउड है More guitar for guitarist, for keyboard and for percussion. Hello, 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 hello. More guitars in ears of guitarist. Too loud this one. हेलो अच्छा इसका गिटार है ना
बहुत बाहर लाउड है, गिटार को लेवल पीए में कम करना, इसके इनियर्स में गिटार देना, इसके इनियर्स में गिटार देना, नहीं आ रहा है। मेन पीए में लाउड हो रहा है, आप उसके इसमें दीजिए, इनियर्स में दीजिए, उसका गिटार इनियर्स में दीजिए उसके। नहीं आ रहा है। या तो इनियर चेक कर लो, 3 नंबर इनियर, 3 नंबर चेक करना। इनियर 3 नंबर है, 3 नंबर। कीबोर्ड में है ना, इसका इनियर में, कीबोर्ड के इनियर में कम करना गिटार। India's oldest and most trusted liquor companies. Founded in 1943, the company has a rich heritage and a portfolio of iconic brands that have stood the test of time. With 7 millionaire brands and a host of premium and luxury ones. Our most celebrated brands include 8 PM Whiskey, Magic Moments Vodka, Morpheus Brandy, Rampur Indian Single Malt, Jaisalmer Indian Craft Gin, and Royal Ranthambore Whiskey. Radico Khaitan is known for its commitment to quality, innovation, and sustainability. While the prestigious Rampur Distillery is Radico's pride, expansion efforts have increased the output from 160 million litres to 327 million litres by introducing a new facility at Sitapur. This makes us the largest producer of spirits in the country. Radico Khaitan is the biggest supplier of branded spirits to the Indian Defence Services and is also a leading exporter of alcohol from India. In addition to its domestic market, the company exports its products to over 100 countries worldwide. As a business, we strive not only for the success of our brands, but for the betterment of our society at large. As a socially driven company, our efforts towards protecting and preserving environment, educating children, and uplifting the underprivileged have been monumental in changing the lives of many. While we aim towards greater goals and higher targets, we are proud of the legacy and benchmark we have set in the industry. And as the company embarks on the journey of premiumization, Radico Khaitan is the company to watch out for now and in the years to come. चेक आया ना, माइक यहाँ कर Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. Ladies and gentlemen, please settle down as we will be resuming our event in just a minute. Would you come? Oh, Feedback. It's going to give feedback in front of the speaker now. oh, okay. Please. One gentle announcement, we'll be resuming the event in another minute. Please settle down. कब कर रहे हैं?
So, can you kill my mic? I was thinking, We thank them. Presenting sponsor is हम करके दिखाते हैं is that we have a tagline which is हम करके दिखाते हैं which is like we are really successful in case you don't get okay ठीक है I thought I'll जब वो चली गई ना रैम फॉर डायना तब के लिए Can we check Hansonic as well? Welcome back, everyone. Hope you enjoyed your lunch. Before we resume this, I want a huge round of applause from each one of you so that we know that you have the energy now. Lovely. Well, before we start, let's thank our sponsors. Presenting sponsor ITW Universe, co-presenting sponsor Divisa Herbal, Platinum partner Adani Group Motorola, strength partner Adani Ambuja Cement, celebration partner Radico Royal Ranthambore, banking partner Canara Bank, hydration partner Fasten Up, co-powered by Adani Wilmar, SBI Cards, Shimaru, outdoor partner Bride Outdoor, social media partner Exploger, associate partner RGO, Bombay Stock Exchange, One Up Shop. चलिए अब शुरुआत करते हैं आगे बढ़ते हैं कहते हैं simplicity is the ultimate sophistication and our next guest is a living example of that model रही हैं actor हैं actor से entrepreneur एक journey जिसमें हर stereotype को तोड़ दिया है let's give it up for the very talented Dina Penty Woohoo! Give it up for our next guest Dina on the stage I'll let you take it. Louder cheer, guys. Hello, very warm welcome. Please have a seat. It's so good to have you here, Dina. Thank you, thank you. You've invited me after lunch when everyone's going to take a nap. No, I think they are charged all now. Taking a nap at the back, I can see. Do not take any nap. See, look at them. They're taking your pictures. They are all ready to capture you here in all your glory. There are some hands waving at you. So okay, not sleeping yet. Very good. We'll check again in 10 minutes, okay? So first of all, I want to begin by congratulating you for Do You Wanna Partner because you've done an amazing job there. Give her a huge round of applause. Has anybody seen it? The show? No. You've seen, guys? Those who have seen, please raise your hands. If you haven't, okay, go. Okay, you have a weekend now. You can watch it, okay? Go watch it. And you know, you started your journey with cocktail, and I see your career is also a kind of cocktail. Yes. You modeled, you know, you are an introvert, but an actor in entertainment industry. Then you went into acting. So many things that you do and juggle. Is there a recipe to this cocktail? The recipe has always been to keep it different each time. And I'm a complete Scorpion. So for me, you throw a challenge at me and I will make it my life's mission to make sure that I do my best at it and I prove everybody who thought that I couldn't do it wrong. So when Cocktail came to me, which was my first film, I didn't have any acting background. I didn't even know at that point that I wanted to be an actor. It just came by and I said, hey, this is a challenge. It's a great way to start out an acting career. What better way than to be launched at that time by Maddock Films, which is now Maddock Films, Dinesh Vijan, and to be directed by Homi Adajania, and to be in a film with Saif and Deepika as my first ever film. So I just decided to go into it, completely. I mean, I just shut my eyes and I said, I'm going to go through this process and do whatever it takes to prepare for it, but I'm going to do it. Right. And that was my first film. But then after that, I decided I want to do something different each time.
and try my hand at different things, because at the end of the day, if you're an actor or a performer, you want to showcase a variety of work, not just do the same role over and over again. So I think that's been the recipe, is to keep myself on my toes, keep myself challenged, surprise people, surprise myself along the way, and try new things. Lovely. How many introverts here? Raise your hand. Quite many. So I still haven't figured this out, but very recently on social media, I've discovered a new word called otrovert. There's a new word now. I think that I'm that. Really? Yeah. You're an introvert. I think so, but I still haven't done enough reading on it to figure out what exactly an introvert is. But I've realized that if you're not entirely an introvert, because that's quite an extreme, you know, people who are really like seclusion and like just being by themselves. And you're not entirely an extrovert. You're a mix. I'm a little bit of a mix. Like, I'm good with people, but I'm good with people that I like or that I'm comfortable with. So I think I'm an introvert. Okay, but that's my new thing now. Hey, I'm not an introvert, I'm an introvert. Okay. Lovely. So you give us, you know, your insight of an introvert in an entertainment industry. And why I'm asking this is it introvert or introvert? I don't know. Even I don't know. I think we'll go with whatever sails our boat. But, you know, I was talking to a lot of youngsters here, and, you know, some of them were like, you know, I feel a little hesitant. Yes, I want to make my mark here in this industry, but, you know, how do I really come over that fear, that stress? So if you could take us through, you know, what is the one hack that an introvert, let's say for now to keep it simple, can actually do to perform and to make it big out there? I believe that your work speaks for itself. So no matter what your personality is, you just keep at it, do the best that you can do, prove to people why they need you, and what you can bring to the table. I feel like if you're true to yourself, which is also very, very important, I think that being authentic and an individuality is your biggest strength. If we were all exactly the same, it would just be a very, very boring world. So stay true to who you are. Be very authentic. If you can focus on the things that excite you, on the things that you truly feel for, and that's honestly the best way to prove people wrong when they, you know, stereotype you, put you into certain boxes, or make you feel like you aren't good enough. Prove to them that they're wrong. In the most effortless way, which is by following your passion, following what excites you, and being you. Because honestly, being you, I think, takes you through all the way to the end. It's like a long-term game. It might not, you know, you might not be liked in the moment because it might mean saying no to certain things or putting your foot down. But if those are the right choices for you, you need to take that step and do it. And I think that people eventually will start to respect you for it. They might not like you for it, but they will respect you for it. Okay. So I think that being authentic is one of those. That's a great advice, guys. All the introverts, please take note. And while answering your previous question, you mentioned Saif and Deepika, and you've appreciated Deepika a lot in the past as well. And there's a lot of, you know, chatter in the industry about her work style, how she operates. What has been your experience? How do you see her? Is she a workaholic? Is she a dedicated actor? How do you see her at work as a co-actor? She was honestly the best co-actor to have in my first film. Deepika and Saif both were my pillars of support through the times when I knew nothing. I mean, I was literally on a film set for the first time in my life, doing my first few scenes, my first few dialogue deliveries. It was just, everything was so surreal, so new for me. But the two of them made sure that they supported me throughout. They made me feel completely comfortable, made light of everything. If I forgot my lines and we had to redo the scene, they made me feel like it was no big deal. Okay. So I really, really appreciate that. And from that time onwards, I have a lot of respect for both of them, but for Deepika in particular, because I had so many scenes with her. And I've always seen her, she's very, very hardworking, extremely dedicated, and I mean, I think she has a great work ethic. And on a scale of 1 to 10, how professional she is? How would you rate her? Extremely professional. So 10. I would say, yeah, 10. She is very, very disciplined. And I think that also comes from her upbringing and her background, being a sports player as well, which really, the discipline I think, that she has. Yeah. It's undeniable. Lovely. So, you know, it's a lot of conversation, question and answer, but I have, you know, some fun segments also in between to keep the conversation alive. This one is called, Do You Want a Partner? Okay? Okay, done.
I'm going to give you some situations. Is everyone still awake? That's my question. Guys, do you want me to do this? Okay, then give me a loud cheer, okay? Do you want dessert? Okay, so these are some situations, okay? You are trapped in a chaotic airport with 50 missed flights. You're here stranded on an airport. Which Bollywood celebrity would you want to partner with for this situation? If I was standing at an airport, I would probably be flustered, irritable. Even though I have a lot of patience, I would still need somebody calm and patient and somebody to tell me, you know, it's going to be okay. So I think Diya Mirza. Diya Mirza? Okay, give it up for that answer. Very calming force. Every time we get a star's name as an answer, we give her a huge round of applause. It has to be a star only, na? Yeah, it has to be your co-actor that we know. You're shooting a long adventurous scene in the middle of nowhere. Now this is, you know, a lot of action scenes, adventure film, somebody sporty, somebody who's athletic, maybe. Oh. Or you choose your partner. I mean, this is your game. I was just going to choose somebody I'm super comfortable with. Sure. Just to, you know, for the banter and to take me through it. And I was going to say Athiya. Who? Athiya. Oh, Athiya. Give it up for that answer as well. Okay, you are running a business and need someone to handle a PR disaster. Tamanna. No guesses there. Give her a huge round of applause again as well. My last situation is you have to crash a wedding to save the day. Oh, definitely Abhay and Ali from Happy Bhag Jayegi. Give it up for Diana for that answer. But now we've been sitting for quite a long time, Diana. I thought it'll be nice to do some activity because I've also had my lunch, okay? So I also want to feel... Am I the only one that hasn't had not lunch at all. yet? No. But let's you know, keep it, you know, a little athletic, as they say. I want you to teach me some Bollywood moves. Are you game for that? Please don't say no. Okay. Okay, it's a yes. What Give her a huge round of applause for being such a sport. Teach me 2 Bollywood dance moves that I can, you know, impress my Bollywood buddies with. And we can have a little bit of music there. Do you wanna learn the Daru Desi move? Yeah, that'll be fun. Daru Desi, guys? Or the Tumio Bandhu move? Which one? Pick Whatever. You are the queen. You tell us. Let them pick. Tumio Bandhu? Okay. Okay, come on. Tumio Bandhu is what we are learning from Diana Penty. So give it a huge round of applause first. You have to keep Yeah, that's good. Okay? Yeah. Lovely! We're learning a dhumka. Lovely. Guys, I think we need a louder cheer for this. See, because I have interviewed a lot of, you know, Bollywood stars. They act quite pricey when it comes to this. But thanks, Diana, for being such a sport here. And you know, now keeping the theme alive, keeping the Yuva theme alive, I have some Yuva rapid-fire questions, which is about youth, your younger self. So these are some quick questions that you can give elaborative answers as well. Let's not keep it that rapid. My first question is, give your younger self an advice. Let's say a 20-year-old Diana, what would you tell her? I would say believe in yourself more than you did. I feel like I was always very underconfident. I would always question myself, not be sure of myself, not be sure I could do certain things. Although I knew that in the end, if I put my mind to it, I would be able to do it. But I would always go into situations a little bit on the back foot. And I feel like that's something that's changed along the way. Along the way has come confidence and wisdom. And so I'm able to face situations on my front foot now, if that's even a thing to say. But yes, I would say believe. I wish I had believed in myself a lot more back then. Okay, one myth that you believed in as a child. होते हैं ना कुछ ऐसी realities होती हैं जो हमारे लिए reality होती है, actually में myth होता है, जो आपको बचपन में लगता है हाँ ऐसे ही होता है. Any myth you believed in? It's very silly, but I think once in school, I don't know if it was in my tiffin box or what, but there must have been some
fruit, or I can't remember exactly, maybe an orange or something, and I ended up swallowing the seeds. And then, and then some other girl in school decided to tell me that now there's going to be an orange tree growing in my stomach. And I fell for it, and I got really, really worried, and I went home crying, and then I told my mother there's going to be an orange tree growing in my stomach. So yeah, that was a myth you believed in. Who was your role model when you were growing up? I loved Cindy Crawford. I loved her, like absolutely, like I just look up to her, all the work and all the, the magazines in those days when she was the face of so many brands, and I would see her with her mole, and I just thought that she was extremely beautiful, and there was something very, very unique about her. Right, and then in every achiever's life there comes a moment जब आपको लगता है कि मैंने कर दिखाया, So I really want to ask you, do you have a हम करके दिखाते हैं moment that stood out for you in your life? When I just entered films, maybe just after my first project or during my first project, there were a lot of people because of the kind of personality I was and had never come from a film background. A lot of people, there was chatter that I would never be able to do it, and that she'll never be a good actor. She's a model. How can she act? All these silly stereotypes that float around. So that was my moment where I said, you know what, I'm going to prove it to you. Watch. Your Instagram bio is a girl, her dog, and dreams. Can you elaborate that? Many dreams. All girls have dreams. Which girls don't have dreams? And I think I'm following them through quite diligently. Are you close to your dog? Very, very. I have more than one dog, but yeah. I don't know, I don't even want to, I have a lot of cats, and I have 4 dogs, and yeah, close to all of them. Lovely. I'm an animal person. Before we, wrap this, I want us to again learn something from Diana. She's had such an amazing career, modeling, acting. She's a great dancer. She's taught us dancing. Those moves were great. But now, how about... I taught you one thumka. No, come on. There were 3 moves, and they are quite handy, I think. They're enough for me. How about we learn ramp walk from her? Yeah? Give a yes or no. I know, seeing me do the ramp walk wasn't on your agenda today. No, I want to see you do the ramp walk. I forgot my heels at home. I'm so sorry. Okay. First you do the walk, show me, and then I'll tell you what you need to change. Okay, lovely guys. Can we have a little bit of music? I'll do, it's not just a ramp walk, okay? I'm going to do a catwalk, okay? Let's learn that from Diana, yeah? Guys, give me sure. How did I do, Diana? I definitely do nice, and now I'll follow what Diana does, okay? But you have to keep cheering us. Lovely. I would want to walk back here as well. Let's do it one more time. Okay, we'll do it one more time. She wants me to put my hands in the pocket. Okay. Lovely, Diana. Really, you're an amazing actor, and so much fun. Thanks a lot for teaching us these moves, making me learn ramp walk. Who would have thought that I would be doing my catwalk debut here? You're a natural. Stop it. I knew it. But thank you so much, Diana. Give her a huge round of applause. Thank you very much, Diana. Thank you so very much. What a candid and engaging conversation, Arun. All right. Politics और Gen Z के बीच trust और relatability का bridge बनाना कितना मुश्किल sound करता है, right? I know, it's quite a humongous task, and हमारी अगली guest इस सवाल का perfect जवाब है. She's a 3rd term MP, National President of the NCP शरद पवार faction, और एक आवाज जो Parliament में हमेशा youth education और women empowerment के issues को उठाती है. Known for her approachable style, उनकी politics
aggressive नहीं, काफी ज़्यादा accessible और relatable है. Give it up for Supriya Sule ji. Please, ma'am, if we can have you on the stage. And joining her is my colleague Padma Joshi. Over to you, Padma. Please take them off. Right at the outset, please. 4-time MP, आप नेता के साथ और कुछ कीजिए और उनका पार्लियामेंट सीट मत ले लो भाई उनके साथ. 4-time MP, round of applause. Supriya Sule, thank you very much for being in our midst. Please, ma'am. Supriya ji, सबसे पहले तो we are at a point now which many people are saying is an inflection point. You know, we are talking to the youth of our country, the youth of Mumbai. और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे देश के अंदर पूरा जो सिस्टम है वही अब डामाडोल हो चुका है, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन चोरी हो रहे हैं, हमारे देश में जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर एक सवाल है. माय क्वेश्चन इज today as a 4-time MP, what would you tell the youth, the Yuva of our country? Should they trust the democratic process or it's over? Democracy is over, the election process is over. What would you say? Because the same process has chosen you 4 times. Yes, well, good afternoon, everybody. And I'm feeling very young and cool being with all of you here. I'm trying to be as cool as I can. You are young and cool. You know, Godrej ki Jawani, so I can't lie so much. But, and I don't lie anyway. But मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगी, इस देश में ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, हर देश में होता है, लेकिन इस देश के सिस्टम पे और लोगों पे मुझे पूरा विश्वास है. तो एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन अच्छे से ही होना चाहिए और अगर किसी ने कुछ सवाल किए तो उसको पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए. और मेरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन सही जवाब देगी. और कॉपी करके किसको पास करना है, मेरिट में और पढ़ाई करके पास होने में जो मज़ा है वो कॉपी करने में नहीं है. एंड आई एम श्योर द जनरेशन थिंक्स एंड अग्रीज विद मी. Absolutely, transparency is a must in democracy. But fundamentally, do you think the election process is rigged, that vote chori is happening? Well, look, there are challenges and data speaks louder than words. This is a generation which wants evidence and they believe in data. Like Mr. Mukesh Ambani always says, data is the new oil. So I guess if there is data coming, let's have a debate on it. I'm not saying it's right or wrong, but why shouldn't we debate something? And just because you debate it, that doesn't mean you're challenging somebody. If it's a democracy, you must debate. It's the way you ask a question. You don't have to be arrogant and rude. You can be still polite and still get the same outcome. So I see no reason why we can't have a debate on data. But the same data also gave the Congress party 99 seats. It gave you results of the kind that nobody had expected. None of the polls had predicted. In Maharashtra, that same data led your alliance, the opposition, INDIA, to say that the Modi government was in the next election going to be thrown out. How can that data be questioned then? No, my point is start with me. I have said कि अगर आपको वोट चोरी की इंक्वायरी करनी है तो मेरे सीट से ही शुरू करिए. Why should I point fingers at other people? And please remember, when you point one finger at others, there are 3 fingers which are pointing to you directly, always. So start with yourself. So if you want to check the vote chori story, let's correlate it with my Lok Sabha and the new Vidhan Sabha and correlate the story. So start with yourself first. So I would like to start with myself first. And let's see where it goes. In your seat, do you think vote chori has happened? Well, I won by 1,58,000 and in my constituency, I'm not saying there's vote chori. I'm saying data driven. I'm not saying hai nahi hai. Look, unless I can prove it completely, it's not fair to make an allegation to anybody for that matter. So my point is that the votes went up by 1,63,000. Maybe it's a coincidence that I won by 158 and the votes that have gone up in Vidhan Sabha is 1,63,000. So the difference is only a 5,000, but it is huge. It's not even a jump, it's a leap. So no harm in finding out. And the challenge is now anybody can just punch in and register their vote.
there's very little, homework being done or being challenged as how it has been done. The paperwork is very, very weak, and some names have come 6 and 7 times. Well, the Constitution gives you 1 vote, me 1 vote, Alia Bhatt also 1 vote. So we are all equal, right? So I think we should all be fair, and our name only should be registered once. So we need to clean up the system if it has gaps. But if that was indeed the case, Baramati was a prestige contest. At that time, I mean, both sides pulled out all stops. And yet you won. Not only did you win by a handsome margin, like you said, of close to 1.6 lakh votes, you were leading in all the assembly segments. How would that have been possible? In such a prestige contest, they would have made you lose by rigging the contest. Should I tell you, for me, winning an election is not prestige. For me, my job is service. So I don't get into this jingoism that you see on TV, itne se aage pad rahe and all that. That is very dramatic for my personality, first of all. Because an election is not, how do I tell you, it's a service, it's a job that you, I got into it because I thought I wanted to serve the people of this nation. So there's no glamour or there's no prestige in it. In a job which is service, you have to be honest and just dedicate your time to serving to make your lives better. What is policy? Policy is to make your lives better. That's why we make policy. That's what being an MP is all about. It's not just going into the building, it's about what you do inside the building. Correct, but the same election commission conducted the elections which you won and won handsomely. Yeah, but so where was the rigging there? But nobody is challenging any individuals. We are challenging a marking system. A lot of times you go to the board exams and you ask for rechecking, right? You feel you've got more marks and you haven't got enough marks. So if you can ask for rechecking, so can we. And nothing wrong in asking for rechecking, right? Okay. And that doesn't mean that we're all in the right or wrong. Let's have a debate. And in a democracy, what's wrong in asking questions? Didn't all your parents and your teacher always tell you ki don't be ashamed of asking questions? It doesn't matter. Somebody may laugh at you. So what? It's better than being unpad. पूछने से तो कुछ समझ में ही तो आएगा ना. What is wrong in asking questions? But in principle, but politely, little polite. पर in principle, अगर महाराष्ट्र के युवा आपसे पूछे कि सुप्रिया जी अगर इतना खराबी है तो वोट डाले कि ना डाले, ये चल रहा है ना सिस्टम तो ठीक है. कोई खराब नहीं कह रहा है. Not at all. Please don't think it's खराब. Not at all. All we are saying कि there are question marks. So the election commission may tell it's like a board exam. कोई नहीं कह रहा है कि CBSE खराब है, SSC खराब है, IB खराब है. या ICSE खराब है, वो नहीं कह रहा है. हम सिर्फ कह रहे हैं रीचेकिंग करवाइए. That doesn't mean the system is bad. You go to your teacher, no, in college, कि मैडम you've cut my half mark, my admission will not go through. Please, मुझे आधा मार्क दे दीजिए, मेरी लाइफ बन जाएगी. So what's wrong? And if you can do it, so can we. But we are only asking for transparency and accountability. That's all we are asking for. There's nothing wrong in that. Ma'am, that is a reasonable stand to have. But I'll be very honest with you. When we see the discourse right now, the allegation being made is not just कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं. गड़बड़ियाँ हर सिस्टम में हो सकती है. गड़बड़ियों को सुधारना भी चाहिए. आज जो डिस्कोर्स है, इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन रिग कर रहा है, ये मिला हुआ है, पूरा हाईजैक, डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजैक्ड. I will ask you simply, has democracy and the electoral process been hijacked by the BJP, according to you? You know, I would not like to take a party's name for the reason that I don't think even Rahul ji has said that this party has done it. We are asking, we are not saying ICSE has been controlled by somebody. We are saying there's a problem in the ICSE system or CBSE or IB or whatever. So all we are saying is that if there are challenging by data driven raised by people, the election commission should just reply. What's wrong with that? Okay. I think we are all on a self-improvement journey, right? There was a time when somebody criticized me, I would go home and feel so bad and think, why is that person criticizing me? Now I feel, please criticize me. Do you know why? Because that gives me a sense to improve myself. So then if I made a mistake in my last interview and somebody criticized me, I'm so happy. Because then I don't repeat the same mistake again. And so your parents are your biggest critics.
Why does your mother tell you, तुमने ये क्यों किया? Because she loves you the most. That's why she or your father is your best critic. So value it. I take criticism the best because I value it. That person is my well-wisher. And it keeps you relevant also, because if he's going on and on and on every day about you, that means you matter, right? Otherwise, why would you criticize? Think about it. So take it as a compliment. And be on a self-improvement journey. The demographics of our country and of our voters are getting younger and younger. Is there a nervousness ever ki, am I able to connect with my voter anymore? What are any significant thoughtful steps that you have taken to ensure that you are reaching out to the youngest person who is looking up to you? No, we are public representatives. Everybody is my stakeholder. That 18-year-old is my stakeholder, and so is the 95-year-old my stakeholder. So I'm never intimidated that, oh my God, what will I do with them? Not at all. It's my job. It's my job. It's like Apple making a phone. From 18 to 95, they are catering to everybody. Or uske chote bhi bachche ho, parents want to give them an iPhone is their problem, not mine. But more or less, it's everybody is catering to that, right? Netflix is catering to that. Amazon is catering to that. Godrej is. Who is not catering to that whole spectrum anymore? Everybody who's in public life, in marketing, in cinema, or making TV serials, everybody, NDTV is catering to everybody. So I don't think there's such a big song and dance about, oh my God, Gen Z. There was always a Gen Z. There was always a Gen Z, but now Gen Z is more demanding. Gen Z is very connected, they are very aware. And the context for this is, what happened in Nepal was, it was put down to the fact that that generation felt unheard. They felt that their concerns were not being addressed. Their politicians were completely divorced with what almost 30% of their population is thinking. Do you think that is possible in India as well? That there could be a disconnect so wide that we fail to understand it, to gauge it, and this discontent spills onto the streets? No, discontent only doesn't come with just one policy. Discontent comes through the economy. Please don't mix oranges and peaches. It's when there is a social issue and there is a financial issue. Discontent can come in any part of society. It doesn't only have to come from the Gen Z. When a system fails everybody, maybe they are a little more younger, more idealistic, so they're maybe not as patient. I won't say impatient. Because I think all of us should be impatient for growth by the right values, not by the wrong values. So I think there's nothing wrong. What happened in Nepal probably is something that happened across a generation. It's not just one thing went wrong, and what happened in Bangladesh, what happened in Nepal, or the instability in Pakistan. So I think very differently than you. I think anywhere where the economy does well, and it's a fair and a transparent system, I'm sure the Gen Z also wants to be a part of the growth story of the country that they come from or they belong. And all of this was happening in our neighborhood, and yet we've had a period of relative calm. What is India doing right to ensure that the instability that we see at our borders, whether it be in Bangladesh and Nepal, earlier in Sri Lanka, to some extent even in America, they had several different, pockets of unrest. What has India got right that we have seen more stability than the rest of the world? I think it's a journey of 80 years and a contributions of millions and millions of people. I mean, these children are not even born at that time when India really went through a whole time. I mean, I did not see the partition of India. But clearly, we were closer because our grandmothers told us that story. So we felt a little close. This generation has no reason to relate to that. But I think what kept India is an effort of many, many, because governance is continuity. Please remember, governance doesn't happen overnight. It's continuity. So it is generations and decades of hard work by many, 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 many people that has built institutions in India. IIT did not come overnight. Xavier's College was not built overnight. Nor was Sydenham, nor was KC, I'm not sure, nor was Bhavan's College, nor was Siddharth College, nor was Mitibai College. These are all colleges built over the last 5, 6, 7 decades. Schools were built in this country. We take all this so much for granted.
वो मैं तो स्कूल चला गया, मैं कॉलेज में बोर हो रहा था यार, कैंटीन अच्छा नहीं था यार, वहाँ से बस का बड़ा लव. Please understand, none of us, all of you sitting here, nobody is studying in the dark, nor did I. I went by a proper BST bus to school, there were proper trains, there were airports, there were highways, there was everything. Maybe the scale has become a lot more, but all this existed. So it's a growth story of India of last 75 years. And a contribution of millions and millions of people's hard work who has brought us to where we are. So in today's, and you're right, a lot of these things we just take for granted. Infrastructure, we have airports, electricity 24 hours. What is the number one issue that matters to the youth of India right now? And should there be reservation? Well, there are two things clearly that the youth of India need is good quality access to affordable education and jobs or opportunities on merit for which the economy has to do well. So it's very, very important to make sure there's good quality accessible education which is connected to opportunity, equal opportunity for all. And you asked me specific about reservation. Reservation has to be for people who really need it, like me. I cannot ask for reservation because my parents are educated, I'm educated, my children are educated. Shame on me even if I apply for it. It's for somebody who probably back of beyond parents did not have education and they needed that. So if my child is studying in India, in Mumbai, going to one of the good schools, has great opportunity in Mumbai, and there could be a child maybe brighter than my child in Chandrapur who may not have access to that. So maybe that child, actually it's not maybe, the child deserves that opportunity because that child doesn't have that same exposure that my child has in Mumbai. So do you think it should be more economic? Well, there is a lot than of caste based? No, it has to be a combination because a lot of times these studies are done by the government. Government does studies on reservation and then it's very data driven. It's a very scientific process that is followed by government. The reason I ask this is because we've just gotten out of an entire phase where there were, Maratha reservation, stir had happened. Now a GR of the government has come on that. Now the other side is saying that OBCs are being discriminated against. When are we finally going to put an end to this cycle of caste-based reservations and this continuous tussle between castes and communities? Well, I have requested the Honorable Chief Minister of Maharashtra several times that these are very sensitive issues. Please call an all-party meeting. Let's all have a discussion. Let's ask every stakeholder of this country what he or she think about it, and let's have an open debate on it. But I'm sure he's very busy with many other things. I guess he's a busy man. But I think what we really need to do is we need to have a debate in colleges, in society, at every platform, and let's all debate it. I would even like to take a quick poll here to find out what they are thinking. About everything that matters in this country, because their opinion matters, and governments are here to serve you, not just to give speeches. The way outgoing is free, incoming also has to be open and free for any government, and even for every public servant like me. I'm here in public life to serve you. I make policies hearing from you, not just for my brain. It has to be my brain plus all the inputs that you have given me, make a combination and implement. Okay, let's do a straw poll. People here, do you think that there should be reservations? Raise your hands. See? Okay. How many people think that the system of reservation needs to be overhauled? See? So what I'm suggesting is what they are saying. I'm Interesting. asking. So there seems to be a majority of people who want an overhaul. Do you think there should be economic background-based reservation? See? Or you think that caste-based reservation as it exists is okay? Interesting, ma'am. Here's possibly a private member's bill next time. I told you. Thank God I feel so connected to the Gen Z. So you're saying that economic status-based reservation is something that we should look at? I'm going to sleep half an hour more tonight.
because I feel so connected with my every stakeholder. So Supriya Sule, a private member's bill on economic status driven Well, reservation. it already exists in this country. Even in the country and even in Maharashtra, people with economically weaker backgrounds do have an opportunity. So it has to be a combination, and that's the beauty of a vibrant democracy. Bolo kam, suno zada. What is a good leader? Who speaks less and listens to more. So I think that's and that leader doesn't mean it's only somebody who's in politics. There's a leader in this room, there's a leader on the table, there's a leader in your home, there's a leader in your group. There is a leader anywhere you go, be it in politics, be it in a company, be it in your home, be it in your friend circle. There is a leader. Leader doesn't mean कि सिर्फ नेता है. You need a leader for society, you need a leader in the family. You know, your father's the leader in the company, but when he comes home, mother's the leader. Because somebody holds that family together. So please value it, value that leadership. Final word, Supriya Sule, as you know, a member of parliament, a lady who's running a house also, is also going to work, you also have NGOs. आपने पूरा देखा है देश में इस वक्त जो क्या सिचुएशन है, देश का युवा, देश का जेनजी इस वक्त किस पार्टी के साथ? Well, I don't know which party they are with. I would clearly want them to be with me. Obviously. If not with your party, तो किसके साथ आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है? It's very hard to tell because अभी election होके 1 साल हुआ है, and this Gen Z is very with it with the news. They're very on top of things very fast. It's like, that's why I got my phone here, because I know you would leave your home without the keys of your house, but you're not leaving your phone behind. It all sort of makes you insecure. Phone reh gaya. But because this phone is not only about chatting, it's an information ka bhandar. I don't know how much of chat GPT you use. Do you all use chat GPT? Well, sometimes chat GPT once has made a mistake on Sky TV. So always trust what you're Googling, but at the same time, please be well read and well informed even for yourself, and trust your own instinct and judgment at the same time. But I just feel it's a very well informed and a very aware society. It doesn't mean that they only follow politics, but they're very sensitive and empathetic to information because it's so easily available to them. Look at Instagram for that matter. It's like a rage. I don't know how many reels you watch every day. I watch, but my reel now has a lock. After a few minutes, it gets automatically locked. Otherwise, it's too much of a distraction for me. What's your reel quota for the day? I'm not telling you, because then I have to argue it at home. You don't watch any reels anymore? Of course, I watch reels every day. So how much is your lock? I ain't telling you because my children will challenge me when I get home. I will tell you off record, what kind not of on reels record. do you watch? Do you watch like dog reels, funny reels, No, whatever. motivational reels? No. Some motivational... Political reels? I like to watch all kinds of reels. I wanted to say who went to see Aryan Khan's function at Jio. I wanted to know what Alia Bhatt was wearing, how beautiful she was looking. I followed that. Then I followed Shabana Azmi's birthday also. Yeah. So I say, kaun gaya, kaun nahi tha. Then I follow things what happened. There are little kids who give sort of funny things on television which make you laugh. I follow everything. Yeah, I'm interested in everything. I'm interested in fashion, I'm interested in the farmer, I'm interested in what new things women are doing. I'm interested in everything in the world. Okay, final question I have to ask you. Politician में सबसे ज़्यादा किसके reels आप देखते हो? In politicians, किसके ज़्यादा सबसे देखती हूँ मैं? It's a very good question actually. Hard to tell. I follow all the politicians. अच्छा reel game किसका है? Very hard to tell. Everybody is quite smart. I just saw Shivraj Singh Ji's the other day. This Gen Z will not like it, but it's a little heavy it is, because I saw him going in the Bard and checking out all that, which the Gen Z will not find cool. So, but that is my work related. So you like Shivraj Singh Chauhan when he went I to just Punjab? watching when he went to Punjab. I saw that. That was, and I love Rahul Ji's Padayatra reels. I really feel that the guy is really trying to do something, and his that new anger look, I find it very cool, because for me it comes very honestly, because I'll say that very bravely, that you may like Rahul Gandhi, you may not like Rahul Gandhi, that doesn't matter, but nobody can challenge the integrity of that man
That's what I like about him. कि कुछ भी हो आदमी ईमानदार है, and his whole body language when he talks is wow. So that's quite cool. I find it very cool. So on the hustings, Gen Z is going to decide who they really like, but real game, Rahul Gandhi has got down pat, according to Supriya Sule. Absolutely. It's not only in the reels, the way he's impacting. Reel is not just about making a statement, it impacts you. It's like, wow. You know, so when I saw Alia Bhatt in that white dress, it was like, wow. And when I saw Rahul Gandhi talking about vote chori, I'm like, wow. So there's a difference in that two vows. Well, Alia Bhatt wouldn't know that she has something in common with Rahul Gandhi. Both of them make Supriya Sule go wow. Thank you very much, Thank Ms. you. Sule, for having joined us. Pleasure. Thank you. Thank you very much, ma'am. The time to inspire us today and time to move on. ब्यूटी की बात करते हैं. ब्यूटी आज सिर्फ ग्लैमर नहीं, एक बिजनेस है, एक इन्फ्लुएंस है, एक पर्सनल ब्रांड है और हमारे अगले गेस्ट उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है. मानुषी चिल्लड़, प्लीज गिव इट अप फॉर मानुषी. और मेरे दोस्त शुभांकर मानुषी से बात करने वाले हैं. Shubhankar, please take the stage. All right, I think she is busy. She's going to take some time. But I want to hear it from the audience. How excited are you to see Manushi in action? Who wants to ask a few things from her? Raise your hand. All right. Can we have Shubhankar on stage, please? Till your guest comes, can we have a little banter? Hello, Shubhankar. This is for you. कैसे हो? बहुत अच्छे लग रहे हो. तो मानुषी के इंतजार करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज आपके मन में क्या फील हो रहा है मानुषी को लेकर. लड्डू फूट रहे. सुंदर लड़कियों को देख के सबके मन में लड्डू फूटते हैं. मिस वर्ल्ड का इंटरव्यू करने वाले हो, आपको और क्या चाहिए? दोबारा बताइए क्या. मैं कह रहा हूँ अगर आप मिस वर्ल्ड का इंटरव्यू करने वाले हो, आपके मन में लड्डू फूटने चाहिए. बिल्कुल. अच्छा ये सोचिए कि एक मिस वर्ल्ड क्लिनिक में आती है डॉक्टर की तरह, स्टेथोस्कोप पहने हुए, तो पेशेंट्स का क्या हाल होता होगा? देखिए यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इमेजिन करेंगे कि बीमार पड़ गए वो. सोचिए वहाँ पर कोई दिल का मरीज हो तो वो हील तो नहीं करेगा, पर शायद और बीमार होकर लौटेगा. दिल के मरीजों का दिल अच्छा हो जाएगा. जानते हैं आप लोग, मानुषी एक ट्रेंड डॉक्टर भी है. वेरी गुड. वाओ, मुझे अपने ऑडियंसेस से उम्मीद नहीं थी. लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने एक ट्रेंड डॉक्टर बनने के साथ साथ फिल्मों में भी एंटर किया और उसके बाद क्रिटिक्स की भी खूब बातें सुनी, क्या लगता है उसका जज्बा कैसा होगा? यार एक बड़ा अच्छा शेर था कि हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे, जिसको देखो बार बार देखो. मैं इसके आगे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मेरे सेशन की बहुत सारी बातें रिवील हो जाएंगी. बट मुझे लगता है कि बहुत शानदार है यार. एक आप जेनजी बहुत सारे लोग यहाँ पर है, आप लाइफ को एक्सप्लोर कैसे करते हो, वो एक आई थिंक कहानी है जो मानुषी से आप सीख सकते हो. क्योंकि मानुषी हर बार कुछ नया कर रही है. अभी भी जब बैक स्टेज में उनसे मिला तो वो बता रही थी कुछ और नया करने वाली है. चलिए आपने बैक स्टेज तो बात की ही, मानुषी यहाँ पर भी आ गई है. लेट्स हैव हर ऑन स्टेज. गिव इट अप फॉर मानुषी. एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए. सारे लड़के खुश हो. लोग ये मानते हैं खाना खाने के बाद उबासी आती है. आपको लग रहा है इन्हें देख के? नहीं नहीं, आई थिंक अच्छा वेलकम था, पर और अच्छा हो सकता है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मानुषी के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वैसे कहते हैं कि भगवान नाइंसाफी नहीं करते हैं, भगवान की नजर में सब बराबर है. लेकिन जब मैं मानुषी के साथ बैठा हूं तो मुझे लग रहा है भगवान कभी कभी नाइंसाफी करते हैं. किसी किसी को बहुत सारा टैलेंट दे देते हैं. कुछ कुछ लोग पूरी जिंदगी एक काम तमीज से नहीं कर पाते हैं
और कोई MBBS की पढ़ाई भी कर लेता है, फिर बॉलीवुड में भी आता है, मिस वर्ल्ड बन जाता है, और फिर उसका अभी पेट नहीं भर रहा, अब उसको बिजनेस भी करना है। नाइंसाफी करते हैं भगवान? नहीं नहीं, मेहनत भी है बहुत। भगवान नाइंसाफ़ी नहीं करते, लेकिन जो मेहनत करता है उसको ब्लेस ज़रूर करते हैं। मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा कि MBBS हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया, बॉलीवुड भी हो गया, फिल्में आ गई, अब इसके बाद क्या? अभी और भी बकेट लिस्ट में है? अभी तो लाइफ शुरू हुई है। इस एज पे तो लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो रही होती है। वर्ल्ड तो मेरे लिए अभी खुला है, तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे होता रहेगा मैं बताती रहूँगी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने वेंचर किया है वेलनेस और हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप में। मैंने अपने फादर जो कि एक मेडिकल डॉक्टर है, उनके साथ हमने एक वेलनेस क्लिनिक खोला है रीजनरेटिव मेडिसिन में, जिसका नाम सोमा वेलनेस है, यहीं मुंबई में। तो मेरी अभी एक सहयोगी कह रही थी कि अगर आप इमेजिन करिए मिस वर्ल्ड का एक हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो, भीड़ तो ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर। वो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे MBBS फिनिश करनी पड़ेगी और वहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा किसी तरह से। एक कॉमन क्वेश्चन मानुषी जो सबके जहन में आता है वो ये आता है कि हम ऐश्वर्या राय को देखते हैं, सुष्मिता सेन को देखते हैं, हमने उसके बाद लारा दत्ता प्रियंका को देखा, हमने हरनाज को देखा, ये सारी जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होती हैं, इनका एंड गोल बॉलीवुड में क्यों आता है? मैं ये क्वेश्चन चेंज करना चाहूँगी, बॉलीवुड क्यों हमेशा हमें कास्ट करता है? आप तो पढ़ाई करके बैठे थे, आप डॉक्टर ही बन सकते थे। पर ऑफर तो हमें बॉलीवुड से आता है ना। बट आई विल से दिस कि जो पैजेंट्री एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जिस तरह का मीडिया एक्सपोजर मिलता है, लोग आपके बारे में जानते हैं, लोगों को आपको देखने में दिलचस्पी होती है, तो उसी तरह से एक एज एन आउटसाइडर, क्योंकि आप फिल्मों की दुनिया से नहीं होते, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे फिल्म की दुनिया को भी इंटरेस्ट होता है आपको कास्ट करने में। अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस, एंड पैजेंट्री जिस तरह का आपको एक्सपोजर देती है, वो कहीं ना कहीं आपकी पहली फिल्म में आपको बहुत हेल्प करती है। तो वाई नॉट? ईजी नहीं है फिल्मों की दुनिया में आना, स्पेशली अगर आप एक फ़िल्म फैमिली से ना हो। तो अगर आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए और अगर एक ऐसी इंडस्ट्री जो इतनी क्लोज नेट है, वो एक आउटसाइडर को एक्सेप्ट करे या एक आउटसाइडर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाए, तो मुझे लगता है उन अपॉर्चुनिटीज़ को मना नहीं करना चाहिए। व्हेन यू आर यंग, इट्स टाइम टू एक्सपेरिमेंट, इट्स टाइम टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आई थिंक वी शुड ऑल ट्राई डिफरेंट थिंग्स बिकॉज यू नेवर नो व्हाट लाइफ हैज़ इन स्टोर फॉर यू। तो बहुत सारे जेंजी यहाँ बैठे हुए, उनके जहन में कई बार हमारे टीचर्स कहते थे कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ लो। जी, आप मल्टीपल करियर को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो एक इंसान जो अभी बिल्कुल 16-17-18 साल का है, किंग ऑफ नन, तो उसे मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, एक काम सलीके से करना चाहिए, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो। 28 साल की उम्र में भगवान ने आपको बहुत कुछ दे दिया है, तो आप क्या सलाह दोगे उस जेंजी को? देखिए, आज कहते हैं कि एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी होना वो शायद आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, और मैंने हमेशा ये माना है कि ईच टू देयर ओन। आई थिंक जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो आपके लिए क्या मायने रखती है, वो डेफिनेशन आपके लिए क्या है, वो सिर्फ आप खुद को ही जस्टिफाई कीजिए। दुनिया की क्या डेफिनेशन है सक्सेस की, उसे चेज़ ना करें तो आप मानुषी की बहुत खुश डेफिनेशन क्या है रहेंगे। सक्सेस की? मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो मुझे एक्सक्यूज़ कर दिया जाता था अगर मेरी अटेंडेंस कम होती थी, क्योंकि मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी। मैं क्लासिकल डांसर थी, पेंट करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। तो मेरे टीचर्स मुझे कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि पढ़ाई में मैं मैनेज कर लेती थी। मैंने हमेशा से माना है कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मुझे बहुत चीज़ें करने का शौक़ है। मैं एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, मैं एक चीज़ नहीं कर सकती। मुझे बचपन में भी कहते थे लोग कि दैट जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन, एक पे फोकस करो। मैं शॉर्ट टर्म के लिए एक पे फोकस करती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि लाइफ में इतना कुछ है, दुनिया में इतना कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए, मैं अपने आप को एक चीज़ से लिमिट करके नहीं रखना चाहती। तो मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं हर फील्ड में ग्रो करती रहूँ, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे वो एक्सपोजर में हो, चाहे वो पर्सनल डेवलपमेंट में हो, मेरे रिलेशनशिप्स में हो। और अगर मैं कल से थोड़ी और बेहतर हूँ इन सभी फील्ड्स में, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगी। नाइस। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था, क्या खूबसूरती या ब्यूटी जो है वो सिर्फ महिलाओं तक सीमित है? क्योंकि मिस्टर इंडिया का जब मैं जिक्र करता हूँ तो मुझे अनिल कपूर याद आते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मिस इंडिया में लड़कियां याद आती हैं मुझे, बट मिस्टर इंडिया में मुझे अनिल कपूर दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ब्यूटी सिर्फ औरतों तक है, लड़कियों तक है? नहीं, मुझे लगता है कि मे बी मेल्स ब्यूटी को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इसीलिए। पीछे तालियां नहीं बजी इस बात के लिए।
देखिए तालियां भी लड़कियां ही बजा रही हैं आगे। नहीं, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। जब भी एक फ़ीमेल को कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो मैं ये देखती हूँ, और आज मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ नोटिस भी करती हूँ कि हमें कहा जाता है यू आर लुकिंग वंडरफुल, ओ शी इज़ सो प्रिटी, शी इज़ गॉर्जियस। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जो आके कहते हैं दैट ओ शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, शी इज़ सो इंटेलिजेंट, व्हाट एन इंटेलेक्चुअल, व्हाट एन ओपिनिएटेड वुमन। वो कॉम्प्लीमेंट्स हमें बहुत कम मिलते हैं। सिमिलरली मैं ये कहूँगी कि हम बॉयज़ को ब्यूटीफुल क्यों नहीं बोल सकते? हम क्यों नहीं बोल सकते उसके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं? आप कोशिश करके देखो। नहीं, आई थिंक जब भी इनफैक्ट जब भी मैं अपने डैड को जाके बोलती हूँ कि टुडे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, he is much happier than me telling him, wow dad, what a smart answer to what I asked you. So I feel like, you know, compliments need to be gender neutral. सबको अच्छा लगता है जब उन्हें अप्रिशिएट किया जाए बियॉन्ड उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है। सिमिलरली सब चाहेंगे कि उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को भी अप्रिशिएट किया जाए। तो आई गेस देयर आई विल टॉक अबाउट इक्वालिटी, कि जब कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाएं तो लड़कियों की इंटेलिजेंस, उनका हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन, फोकस, उनकी जो सेरिब्रल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। सिमिलरली व्हेन एवर मेन जो उनमें कहते हैं एक तरह से श्रृंगार का भाव है, उसको भी अप्रिशिएट किया जाए। सो ये दिस गोज़ बोथ वेज। तो ब्यूटी जो है वो सिर्फ आउटर लुक्स को लेकर होती है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं 20 साल की उम्र में जब मैं विश्व सुंदरी बनी तो मेरे लिए वो ब्यूटी का परसेप्शन ही चेंज हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ से रियलाइज़ किया कि आपके लिए ब्यूटीफुल क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको दूसरे में देख के इतना एक अच्छी फीलिंग दे। और मेरे लिए कहीं ना कहीं वो ये था कि जो लोग अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में कहाँ जाना है और किस तरह से जाना है, और वो किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए वो जर्नी में चल रहे हैं, मेरे लिए वो हमेशा से बहुत ब्यूटीफुल रहा है। चाहे वो एक मेल हो या फीमेल हो, मैंने बहुत इंस्पिरेशन सीख की है दूसरे लोगों से। शायद इसीलिए मैं कुछ कर पाई हूँ जो भी मैंने किया है लाइफ में, क्योंकि जब भी मैं किसी और की जर्नी देखती हूँ, चाहे वो कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मीडिया में हो, पॉलिटिक्स में हो, मेडिसिन में हो, हमेशा मैं ये देखती हूँ मैं इनसे क्या सीख सकती हूँ। और मेरे लिए ब्यूटीफुल वही है जो अनअपोलोजेटिकली अपने में कॉन्फिडेंट है और वो करता है जो उन्हें सही लगता है, वो नहीं जो दुनिया को सही लगता है। नहीं मानुषी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जितने लोग में मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनते हुए देखते हैं, सबको लेकर एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है जी। ब्यूटी का एक स्टैंडर्ड है कि इस फिगर में होंगे तो वो खूबसूरत दिखते हैं। अच्छा। बॉडी पॉजिटिविटी की बात उन मंचों से कम की जाती है, की भी जाती है तो वहाँ ऐसे लोगों में दिखाई कम पड़ते हैं। अच्छा। पहला खूबसूरती दिखाई पड़ती है, उसके बाद, और नाम भी उनका ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट होता है जी, कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट ये है, वहाँ पर ब्रेन का जिक्र कम होता है। सो जब आज 2025 में बैठे, क्या अभी भी ब्यूटी को सब्जेक्टिफाई किया जाता है कि आपको ये फिगर होगा तब आप खूबसूरत किए जाते हैं? एक पैरामीटर अभी भी बना रखा है लोगों ने? मैं इसमें ये बोलूँगी कि मैं जब मिस वर्ल्ड में compete कर रही थी तो हम 120 देशों से लड़कियां रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आई हुई थी। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 120 लड़कियां एक जैसी दिखें, और ऐसा नहीं है कि हर साल इंडिया ही जीतता है या फिर हर साल वेनेजुएला ही जीतता है, अलग अलग देशों की लड़कियां जीतती हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे कभी ऐसा फील हुआ कि मेरा ये वेस्ट होना चाहिए, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्यूटी पैजेंट्स एक आप में जो यूनिक क्वालिटी है और आप उसको किस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, वो उसे रिप्रेजेंट करता है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप बाकियों की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो आप में वो जो यूनिक क्वालिटी है वो तो रहेगी ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जब आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते हो? कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट यू हैव टू हैव व्हेन यू गो देयर। ओके, कोई पैरामीटर्स होते हैं कि ये क्राइटेरिया क्लिक करना है तब आप एंट्री कर सकते हो? देखिए, जब लोग एक पैजेंट को देखते हैं तो वो एक वन नाइट देखते हैं जहाँ पे लड़कियाँ स्टेज पर आती हैं, वो शॉर्टलिस्ट होती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़की को क्राउन पहनाया जाता है। लेकिन बाकी के दिन जो होता है वो मीडिया कवर नहीं करती, तो जाहिर सी बात है कि लोग इतना देखते नहीं हैं। जब मैं आपको मिस इंडिया टू मिस वर्ल्ड की जर्नी के बारे में बताती हूँ शॉर्ट में। जब मैं मिस इंडिया जब मैंने टाइटल जीता तो मेरे पास 2-2.5 महीने थे प्रिपेयर करने के लिए मिस वर्ल्ड के लिए। तो उस वक्त कॉलेज सब कुछ साइड पे रख के मैं मुंबई में प्रिपेयर कर रही थी। तो अलग अलग सब कॉन्टेस्ट होते हैं। तो मिस वर्ल्ड हर पैजेंट अलग है, मिस यूनिवर्स के क्राइटेरिया अलग है, मिस वर्ल्ड के अलग हैं।
तो मिस वर्ल्ड में हमारे 5 फास्ट ट्रैक इवेंट्स थे। स्पोर्ट्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम ज़्यादा मत करना क्योंकि वहाँ पे ऑल दीज लैटिन अमेरिकन गर्ल्स वो आती है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड। उन्होंने कहा तुम टैलेंट पे फोकस करना और अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखना। तो मैं पूरी स्ट्रैटेजी के साथ गई थी वहाँ पर। मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया बिकॉज हमारे इंडियंस इतने सपोर्टिव हैं, इंडियन फैंस पैजेंट कम्युनिटीज़ इतनी बड़ी है, तो हमें आज मिस इंडियाज़ बहुत सपोर्ट मिलता है। फिर एक होता है ब्यूटी विद अ पर्पस। उसमें क्योंकि मिस वर्ल्ड अल्टीमेटली जो आप, इट्स लाइक अ जॉब एप्लीकेशन। अल्टीमेटली जब आप मिस वर्ल्ड जीतते हैं तो 1 साल के लिए आप उनकी एक चैरिटी है ब्यूटी विद अ पर्पस, उसके लिए काम करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फास्ट ट्रैक है। और वो मैंने मिस वर्ल्ड जब मैं कम्पीट करी थी तो मैंने वो टाइटल जीता भी था। तो हमें एक सोशल प्रोजेक्ट बनाना होता है, उन्हें प्रेजेंट करना होता है, और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एक किसी भी स्केल पे, उसके स्केल डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक तरह से आपको बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में जज किया जाता है। जब आप स्पोर्ट्स में कम्पीट कर रहे हैं तो वो ये नहीं देखना चाहते कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे फास्ट है, बट ग्रुप में आप किस तरह से एज अ ग्रुप लीडर आप कैसे एक स्पोर्ट में खेलते हैं, कैसे कम्पीट करते हैं, आपकी कंपेटिटिव स्पिरिट को जज किया जाता है। जब ऑडियंस हमें लास्ट नाइट पर देखती है, उससे पहले 1 महीना मिस वर्ल्ड टीम हमें ऑलरेडी जज कर चुकी होती है, जहाँ पे हमारे पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, हमें स्पॉन्सर्स के साथ हम काम करते हैं, मीडिया इंटरेक्शंस करते हैं उस लोकल कंट्री में, तो ऑलरेडी आपको जज किया जाता है। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जब मैं जिस रात को मैं मिस वर्ल्ड जीत गई, अगले दिन सुबह मैं नीचे जब ब्रेकफास्ट के लिए गई तो वहाँ जो हम जिस होटल में रह रहे थे चाइना में, वहाँ के मैनेजर मेरे पास आए और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, और उन्होंने कहा पता है जितना भी होटल का स्टाफ है, चाहे वो हाउस कीपिंग हो, सबसे एंड ऑफ द डे पूछा जाता था कि किसने किस तरह से आपके साथ बिहेव किया। और लास्ट में हम सबसे पूछा गया था कि कौन हमारे लिए विनर है। नहीं सर, हम सब ने आपको वोट दिया था। तो आपको ये तो इंडिया के संस्कार हैं जो आपको 24/7 देखा जाता है वहाँ फिर पर। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वही रह गया कि फिर इसका नाम ब्यूटी पेजेंट क्यों है? आप इसमें दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसमें सोशल सर्विस देख रहे हो, आप इसमें ब्रेन यूज कर रहे हो, स्पोर्ट्स में जा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप फिर वहीं पहुंच जा रहे हो कि शारीरिक सौंदर्यता जो है वो इंपॉर्टेंस आ रही है। सर, ये तो ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी शब्द को आप शारीरिक सुंदरता की तरह देख रहे हैं। मैं तो ये कह ही नहीं रही कि उसमें बाहरी सुंदरता के बारे में है। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया, हम आपसे बेहतर समझ सकते हैं। हाँ जी। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बॉडी शेमिंग को लेकर परेशान हैं। जी। बहुत सारे उदाहरण है, सेलिना गोमेज से लेकर शहनाज, जब वो पतली थी तो कहा, पहले वो मोटी थी, कहा मोटी हो मोटी हो मोटी हो, अब वेट लूज कर लिया तो कहा पतली हो गई, और ऐसे आए दिन होता है। इवन जॉब में भी होता है जी। बहुत सारी महिलाएं इस ब्यूटी स्टैंडर्ड से परेशान है कि ये फिगर होगा तभी आप खूबसूरत हो। क्या मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनने के लिए कोई ऐसा ब्यूटी स्टैंडर्ड फिजिकल भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये जो आप कह रहे हैं कि किसी को बॉडी शेम करना, इससे जब मैं हरनाज हम नहीं बचे तो फिर और कोई कैसे बचेगा? ये तो सोसाइटी में है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इससे ब्यूटी पैजेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। नाइस। अगर कोई लड़की परेशान हो इस चीज़ से तो आप उसे कैसे, क्या सलाह दोगे? मैं यही कहूँगी कि कभी कभी अच्छा होता है कि अगर आप बाहर के नॉइज़ को बंद कर दें, क्योंकि अगर आप दूसरों के ओपिनियन को मानने लग जाएंगे तो आप अपने से कभी खुश नहीं रहेंगे। बचपन में वो बहरे मेंढक की कहानी सुनाते थे, तो अगर आप बहरे मेंढक की तरह रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे लाइफ में। जिन लोगों को आप एक मेंटोर की तरह देखते हैं, उनसे सीखें, उनकी सुने, लेकिन पूरी दुनिया की आपको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 कान दिए हैं, कभी कभी एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। तो वो एक प्रैक्टिस है, कॉन्शियसली करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उससे जेन्युइनली आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या अपने टुवर्ड्स जो एक सेल्फ लव और एक अपने टुवर्ड्स एक सेल्फ केयर जो होता है, वो कभी उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें। तो मैं यही कहूँगी, मेरा हमेशा से यही एक एफ़र्ट रहा है लाइफ में। देखिए, जब मैं स्टूडेंट थी तो तब मुझे शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इस स्केल पे मेरे बारे में डिस्कशंस नहीं होते थे। वो स्केल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ मिस वर्ल्ड बनने के बाद, लेकिन उस जर्नी से मैंने यही सीखा है कि मैं वही करूं जो मुझे सही लगता है और मैं दूसरों के ओपिनियन से अपने बारे में बुरा ना मानूं। शानदार। शायद आप ऑब्जेक्टिवली सुने, क्या पता उसमें कुछ सीखने के लिए हो,
लेकिन मोस्टली जो क्रिटिसिज्म होता है, स्पेशली जो स्ट्रेंजर्स से आता है, उसमें कुछ आपको वो जेन्युइनली अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें उनका आपसे कुछ लेना देना नहीं होता। तो अगर आप ये समझ जाएंगे कि जो लोग वर्ल्ड में जो देखते हैं, इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट दे फील विद इन अबाउट देमसेल्व्स। द मिनट यू अंडरस्टैंड दैट, यू कैन फिल्टर क्या आपको कोई नहीं, उनको हम साइड में करते हैं और हम आपके टैलेंट को और एक्सप्लोर करते हैं। वो अब आपकी इंटेलिजेंस है, आप उसको कैसे, हम आपके टैलेंट को और एक्सप्लोर करते हैं। आपने कहा आपको बहुत, आप हरियाणा से हैं जी, सो आई एम श्योर हरियाणवी तो आती होगी। आई न्यू दिस वाज कमिंग। मुझे समझ आती है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक हिंदी फिल्म का डायलॉग देता हूँ और आप उसे हरियाणवी में ट्रांसलेट करके रखो। बड़ा फेमस आइकॉनिक डायलॉग है। मेक श्योर कि मैं हरियाणा वापस ना जा पाऊँ इसके बाद। नहीं, बड़ा फेमस डायलॉग है, सारे लड़के कम से तालियां बजनी चाहिए। धड़कन फिल्म एक आई थी, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, मैं हरियाणवी नहीं पर फिल्मी हरियाणवी बोल लूँ, क्योंकि फिल्मों में इतनी अच्छी हरियाणवी बोली नहीं जाती है। एक लाइन ट्राई करते हैं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। गाइस प्लीज हेल्प मी। ठीक है, डायलेक्ट है, मुश्किल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। यो तो हो नहीं सके है कि मैं तरने भूल जाऊं, और तू हमारे को भूल जाए यो मैं होने नहीं दूंगा। समथिंग। अब ठीक है, कोई हरियाणवी नहीं है तो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मेरे डैड होते तो जरूर करते। आप में गाने के भी टैलेंट है? आप मुझसे हरियाणवी में गाना भी गवाना चाहते हैं? बॉलीवुड भी चल सकता है। नहीं, मतलब आपकी आवाज बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, थैंक यू। लेकिन मेरे पीसीआर से बार-बार मुझसे कहा जा रहा था कि एक और प्रतिभा का उदाहरण पेश किया जाए, क्या पता बॉलीवुड में अगली सिंगर भी यही हो। देखिए, आपने अब कहा कि आप इतनी चीज़ों में टैलेंट है, तो शायद मैं गाना गा ही देती हूँ, क्योंकि आपको तब रियलाइज होगा कि हर इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता। हम वही पैरामीटर पे चेक कर लेंगे, बट फिर भी कोई एक गाना जो आपके दिल के बड़े करीब हो। इतनी सारी लोग यहाँ पर है, इंतजार कर रहे हैं। मैं आप चाहते हैं कि मैं गाना गाऊं? हाँ, बस 2 लाइन। कोई भी जो आपके दिल के करीब हो। मेरे साथ गाएंगे तो मैं जरूर गाऊंगी। फिर ये सब उठ के भाग जाएंगे। अच्छा, इसके बाद भी सेशन है तो इनको भगाते नहीं है, ऐसे नहीं करते। मैं आपके लिए खूबसूरत सी शायरी सुना दूंगा। सुनाइए प्लीज। पहले आपको गाना सुन लेंगे। अच्छा, ओके। आप कोई गाना बताएं, मैं गाती हूँ। आपको कैसे गाने पसंद है? मुझे बहुत तरह के गाने पसंद है। डिपेंड करता है ना आप किसको सोच के गाने वाली हैं। मेरी एक फिल्म आई थी मालिक, मैं उसका गाना गाती हूँ क्योंकि मुझे उसके लिरिक्स याद हैं। पर प्लीज मेरे साथ कोई गाना गाएगा। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, आई एम जस्ट। पीछे या तालियां बजा देंगे हम। ओके, वो गॉड आई एम फीलिंग सो शाय। या साथ में हमिंग कर सकते हैं लोग यहाँ पे। It feels like an audition. Okay. Guys, please don't record this. Okay, fine, record. Anyway. है नामुमकिन बिना तेरे मेरा होना है नामुमकिन। चलो, ओके, आई डोंट नो एवरीथिंग नाउ। थैंक यू। एक बार तालियां बनती है। नाइस। मेंटल हेल्थ की बहुत बातें होती है जी। मैं चाहता हूं कि आप बताएं, क्योंकि आई एम श्योर इस प्रोसेस से गुजरना आसान नहीं रहा होगा। हरियाणा वो स्टेट है जहां पर अभी भी कई बार चर्चा हो जाती है महिलाओं को लेकर। बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनके ख्वाब बहुत बड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ सोचती होंगी। उस बैरियर से कैसे आगे निकले? देखिए, मेरी जो जर्नी रही है एक तरह से डिफरेंट रही है, क्योंकि मेरा एक्सपोजर ज़्यादा रहा है। मेरे फादर DRDO में डॉक्टर थे, तो हम पहले बैंगलोर में थे, फिर दिल्ली में थे। तो उस एक्सपोजर के थ्रू जब भी मैं बाकी के डिफेंस किड्स से मिलती थी, तो कहीं ना कहीं हमारी एक बचपन से ट्रेनिंग होती है कि हम अपने हमें बहुत एक तरह से हमारा आत्मविश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आई थिंक सिर्फ घर पे ही नहीं, लेकिन जिस स्कूल में भी मैं जाती थी वहाँ पर भी हमें काफ़ी एनकरेज किया जाता था एज इंडिविजुअल्स कि हम अपने ऊपर काम करें। हमसे पूछा जाता था कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, और हमेशा चाहे आप कितना भी सिली आंसर क्यों ना दें,
हमेशा उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता था, उस चीज़ को एक तरह से बढ़ावा दिया जाता था। और उसके लिए आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला बचपन में जहाँ पर अगर मैं कुछ करना चाहती थी उस चीज़ को नर्चर किया गया। हाँ, ऐसे भी लोग थे जो शायद मुझे कहते थे कि ये नहीं होगा। जब मैं कॉलेज में थी और मैं मिस इंडिया का प्रेपरेशन कर रही थी तो लोगों को लगता था ये बहुत स्टूपिड चीज़ है कि MBBS के बीच में कौन सुबह मैं 4 बजे उठ के वर्कआउट के लिए जाती थी और अपना हॉस्टल में खाना मैं खुद बनाती थी क्योंकि मुझे काफ़ी एक स्ट्रिक्ट मैं डाइट फॉलो कर रही थी उस वक्त। तो आसपास के लोगों को इतना समझ नहीं आता था। लेकिन जो लोग मैटर करते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके टीचर्स हों, जो भी आपके आसपास केयर गिवर्स होते हैं, उनकी क्या राय होती है वो उसमें मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि मेरे पास वो लाइफ में था कि अगर आज भी मैं कुछ करना चाहती हूँ और अगर मैं अपने पेरेंट्स के पास जाकर कहूँ कि जैसे कि सोमा वेलनेस, मैं रीजनरेटिव मेडिसिन में जाना चाहती थी और मेरे पास MBBS की डिग्री अब है नहीं, तो मैं अपने फादर के पास गई और मैंने उन्हें कहा कि आप 30 इयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये मैंने जितना मैंने ट्रैवल किया है बाहर देशों में, वहाँ मैंने ये सेटअप्स देखे हैं, हम क्यों ना इसको इंडिया में लेकर आएँ। तो उनको उस एज पर अपनी एक सेटअप छोड़कर एक नया सेटअप शुरू करना, मैं ये कहूँगी कि उन्होंने मुझ में एज अ चाइल्ड बहुत ज़्यादा फेथ दिखाया। तो उसके लिए आई एम ब्लेस्ड। पर मैं ये कहूँगी दैट जिस चीज़ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करें। जैसे मैंने कहा कि लर्न टू फिल्टर आउट ओपिनियंस दैट डोंट मैटर। चलिए समय का मैं आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, मिस वर्ल्ड का भी दिल टूटा है कभी? दिल टूटा है, हाँ ज़रूर टूटा। मेरी पहली फिल्म जब रिलीज़ हुई मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। मैं इश्क मोहब्बत प्यार वाले दिल टूटने की बात कर रहा हूँ। लोग जानना चाह रहे थे, लोगों ने मुझसे कहा पूछेगा कि मिस वर्ल्ड का भी दिल टूट सकता है? मैं बचपन में फिल्में देखती थी ना, मुझे लगता था मैं जब बड़ी होंगी ना तो मुझे ऐसा प्यार होगा और मुझे ऐसा लगेगा कि ये नहीं तो कोई नहीं। मैं वेट कर रही हूँ वैसे प्यार का। ऐसा लगा था? अरे आई हैव ग्रोन अप वाचिंग ऑल शाहरुख खान फिल्म्स। मुझे लगता था दैट मुझे ऐसे कोई लड़का देखेगा और मेरे बाल उड़ेंगे और म्यूजिक बजेगा। आप कह रहे हो ना आपका दिल लगा ना दिल टूटा? अभी मैं वेट कर रही हूँ दिल लगने का। अभी मेरा फोकस ही मेरे इतनी चीज़ें जो आपने बताई उसी पर इतना फोकस रहता है, तो मैं वेट कर रही हूँ। चलिए मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर दे रहा हूँ। मैंने कहा था मैं एक शायरी सुनाऊंगा, तो जब दिल टूटेगा आपका तो ये आप डेडिकेट कर दीजिएगा। एक फिल्म आई थी आकाशवाणी, उसका बड़ा अच्छा शेर है आप कि क्यों चाहते हैं कि मेरा दिल टूटे? दिल लगाइए तो पहले आप। जी ओके। सो वो शायरी थी कि हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, उनकी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है, रात कटती है आज भी ख्यालों में उनके कि दीवानों से वो मेरी हालत आज भी है। एंड दिस इज माई फेवरेट लाइन, किसी और के तसव्वुर में ना उठती हैं बेईमान इन निगाहों में थोड़ी शराफत आज भी है, कि एक बार फिर चाह कर चाहे दिल तोड़ दे वो, दिल तोड़ उन्हें जाने की इजाज़त आज भी है, हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, उनकी जुल्फों के साए की चाहत आज भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मानुषी। थैंक यू एवरीवन। एंड आई एम श्योर अगली बार हम मिलेंगे तो आपका दिल लगा हो, टूटा ना हो। लवली सेशन बाय शुभांकर। एक शेर हम भी पढ़ देते हैं कि मनुषी के कानों में अच्छी लग रही थी बालियां, शुभांकर के लिए जोरदार तालियां। थोड़ा जल्दी वाला शेर है, ठीक है, ये शेर थोड़ा सा जख्मी था, बट लवली सेशन। वंस अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शुभांकर एंड देन फॉर आवर अपकमिंग गेस्ट। गाइस, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मनुषी जा रही है उधर से गाइस, अब इधर नजरें आप वापस ले आए और वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेशन। अदिति, चलिए, वैसे तो उनकी कहानियाँ हुई हैं 10 सालों से, और आशिकी 2 की अगर बात करें तो उनकी दर्द भरी लव स्टोरी हो या एक विलन का इंटेंस रोमांस या मलंग का वो वाइल्ड अनप्रेडिक्टेबल पैशन, Suri is one of those rare producer directors. Yes, he's one of those rare filmmakers जिन्होंने बॉलीवुड में रोमांस को एक नया अंदाज दिया है और कहानियां जो हैं
बड़े पर्दे पर तो देखी जाती हैं, अब जेंजी के जरिए सर आपने रील्स पर भी जो खुमार है, जो पैशन है, वो ट्रांसफर जरूर कर दिया है। जी, तो मोहित सूरी जी आप आ जाइए हमारे साथ स्टेज पे। जोरदार तालियों के बीच स्वागत मोहित सूरी का। एंड आगे मिले। Talking to him is, of course, our in-house star, Shubhankar. There you go, guys. कहीं पर पढ़ा था मैंने कि जिंदा रखना है तो उसे अधूरा रहने दो, क्योंकि मुकम्मल हुए रिश्ते अक्सर गिले शिकवे शिकायतों में ठंडी राख से बन जाते हैं। लेकिन जब मैं मोहित सूरी को देखता हूं तो मेरा इश्क में विश्वास फिर से जिंदा होता है। 1995 में एक फिल्म आई थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिल्म सुपरहिट रही। आज 30 साल बाद उसी वाईआरएफ से एक और फिल्म आती है, सैयारा, जिसे वाईआरएफ की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पार्ट 2 कहा जाता है। और उसके डायरेक्टर मेरे साथ है मोहित सूरी, मेरे फेवरेट डायरेक्टर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। ये अच्छी बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद 8th या 9th स्टैंडर्ड में था जब मैंने दिल वाले दुल्हनिया लेके देखी थी, और मेरा कोई कनेक्शन आदि सर के साथ कभी था नहीं। और मुझे याद है जब वो फिल्म आई थी, लोग अक्सर एक्टर्स के बारे में बहुत बात करते हैं, म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं, पर मुझे इंटरेस्ट उस शख्स के पे था जो जिसने ये फिल्म बनाई थी, जो कुछ 22-23 साल का था, आई थिंक 24 और समथिंग। और फिर almost 30 years later, I was making a film with him, उनके लिए, and making a love story. So it was a dream come true. और and today we are sitting here after the success of this film means वो जो लड़का जिसको प्यार उस वक्त में बिलीव था, वो आज भी इस दुनिया में अभी तक अलाइव है। So that means a lot. Thank you so much. मैं बहुत सारे बच्चों से मोहित मिलता हूं और वो कहते हैं कि अब प्यार पहले जैसा नहीं रह गया, ये सिचुएशनशिप का दौर है, ये रिलेशनशिप वैसी नहीं रही, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गया है। लेकिन मोहित सूरी की जिंदगी से लेकर मोहित सूरी की फिल्मों तक में मुझे मोहब्बत फिर से यकीन दिलाती है। ये क्या भरोसा आपका कि ओल्ड स्कूल लव स्टोरीज पर अभी भी स्टिक हो आप इस दौर में जब लोग सिचुएशनशिप या कई तरह की शिप्स की बात कर रहे हैं? ऑनेस्टली ट्रूथ ये है कि लोग अक्सर ये कहते हैं एक दूसरे को कि हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते थे कि हमारे टाइम का प्यार होता था, तुम लोग को प्यार करना आता ही नहीं। एंड शायद हम भी इस जनरेशन को ऐसा देखते हैं कि शायद उनका नज़रिया शायद कनेक्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, टिंडर सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू हो रहा है। बट मुझे लगता है दिल जब टूटता है, जब धड़कता है, तो उधर ही दर्द होता है। यू फील गुड देयर ओनली। आई थिंक वो फीलिंग सेम रहती है, शायद उसके बोलने का नज़रिया चेंज हो गया। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम हम वी डोंट लुक एट दिस जनरेशन के इन पास एम्पैथी या इन पास इमोशन नहीं है। शायद वो दिखाते नहीं हमारे तरीके से, या शायद हमारे पेरेंट्स जैसे दिखाते थे। मुझे लगता है जो मैंने पहले भी कहा था, शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खतों से एक दूसरे से बात करते थे, हमारे पेरेंट्स शायद मोबाइल लैंडलाइन से एक दूसरे से रात भर बात करते थे। मेरे जनरेशन में और मेरी वाइफ ने मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात किया था, या SMS के थ्रू। एंड आई थिंक दिस जनरेशन टॉक्स थ्रू सोशल मीडिया। आई थिंक आपके लिए तो आपकी बहन ने बात किया था बट बात तो वही करते हैं। आई थिंक दे से द सेम थिंग्स। जहर जब आई थी तब आप जेंजी से थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे उस उम्र से। अभी सैयारा आई है, जेंजी के लिए पिक्चर है, तो आपकी लाइफ में हम करके दिखाते मूवमेंट कौन सा रहा? एक मूवमेंट जो अगर आपको बताना हो, फ्रॉम जहर टू सैयारा। आई हैव टू this I'm not trying to try to seem like a romantic, but I have to say the moment I think I met my wife, I think we aksar don't give credit to that one person who stood by you for 20 years. I think वो जो moment था जब मैंने उसको एक होर्डिंग पे देखा था और मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, और मैंने ऐसे ही अपने दोस्त को कहता था कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। एंड अभी 25 साल हो गए, आई एम स्टिल हियर विद ओवर हियर, एंड आई स्टिल लव हर द सेम। इट चेंजेस इट्स फॉर्म, बट और फिर आपकी बहन ने जाके उत्ता से कह दिया था कि ये तुम्हारा डायरेक्टर तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे लगता है 2-3 गाने तो उन पे इंस्पायर्ड तो है ही जो बनाए हैं पिक्चरों में। कौन कौन से गाने? वो एक्चुअली पूरा बता नहीं सकता, कुछ हार्ट ब्रेक के भी गाने थे। एक हमदर्द तो आई नो, या एंड बंजारे को घर, तुम ही हो, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। एंड इट्स स्वीट, क्योंकि जब भी मैं ये सारे गाने देखता हूँ, इट्स एक्चुअली कभी कभी जब बारिश शुरू होती है और मैं ट्रैफिक में अटका हूँ और मैं अपने पुराने गाने सुन रहा हूँ,
it's almost like a flashback sequence. मैं हर एक गाने से एक मोमेंट जोड़ता हूँ कि मैं उस वक्त क्या फील कर रहा था, बट फैक्ट है चेहरा हमेशा उदिता का ही था। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको अगर बताना हो, आपने बहुत सारी फिल्मों में मोहब्बत को दिखाया, रुलाया, सैयारा ने तो अभी बहुत जहर बोया था, हर तरफ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल थे, लोग रो रहे थे। यहाँ कितने लोग रोए थे सैयारा देखकर? देखिए यहाँ भी फर्स्ट रो में लड़कियां हाथ उठा रही हैं। मोहित सूरी के लिए मोहब्बत के मायने क्या है? आप कह रहे हो 20 साल से उदिता से मोहब्बत है आपको, क्या होती है मोहब्बत? नो आई थिंक देखिए मुझे हर चीज़ आई डोंट थिंक मोहब्बत फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद बिकॉज मेरे पास आई केम फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, तो मुझे हमेशा आई थिंक आई वॉज ऑलवेज इन लव एंड आई ऑलवेज हैड अ सीरियस रिलेशनशिप। मुझे कभी शायद वो कमिटमेंट फोबिक का इशू नहीं था कि, और कभी कोई दोस्त आके मुझे इसको बोलना नहीं पड़ा कि हाय ला तुझे प्यार हो गया। मुझे हमेशा पता था जब मुझे प्यार था किसी से। तो वो कभी न्यू एज लव मैरिज तो हुआ नहीं। बट आई थिंक लव वॉज connected to how you wanted to live. It was what Bollywood was for me. क्योंकि हम जाके फिल्में देखते थे. It was what music was for me. I love love songs the most, rock songs जिसमें love था. So I think love played an important role in my life. But I think it changes form. अब हर साल you realize it changes in a different way. And now the important woman in my life is also my daughter. So I think it always changes its structure how you love it. तो मान लो किसी का ब्रेकअप हो जाए ना, आई एम श्योर यहाँ लड़कियां जो हाथ उठा रही थी वो शायद ब्रेकअप फील हुआ होगा उन्हें, इसीलिए हाथ उठा रही थी। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए तो वो सैयारा की वाणी की तरह अपनी डायरी फाड़ दे, चुपचाप बैठ के रोने लगे, आवारापन के इमरान हाशमी की तरह गलतियों को ठीक करना शुरू करे, या मलंग के आदित्य रॉय कपूर की तरह कहे बैक पैक करना है एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर लाइफ नाउ। देखिए इससे क्लियरली ये पता लगता है कि मेरे पास अभी तक आंसर है नहीं। मुझे भी अभी तक पता नहीं कि कैसे ब्रेकअप से हैंडल किया जाता है, इसलिए मैं फिल्में बनाते रहता हूँ और एक हैप्पी एंडिंग देते रहता हूँ। वो एंड तक पहुँचा नहीं हूँ मैं खुद। बट एक इंसान के लिए प्यार करना ज़रूरी है रिश्ते में, या सेल्फ लव होना ज़्यादा ज़रूरी? क्योंकि कई बार लोगों की शिकायतें होती है कि वो प्यार में खुद को खो देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी खो देते हैं। सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लव, सेल्फ लव और लविंग योर पार्टनर? नो, आई थिंक यू हैव टू हैव इनफ ऑफ लव इनसाइड योर सेल्फ टू गिव इट टू समबडी एल्स। यू कैन नॉट लव योर सेल्फ एट ऑल। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिपेंडेंस, लव आर रिलेशनशिप्स दैट यू शुड एक्नॉलेज। हम लोग डरते हैं शायद प्यार करने से, उससे भी डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली अब डरते हैं कि हम इतना वी नॉर्मली कंफ्यूज नीड विद लव। आई थिंक लव इज व्हेन यू आर ब्रिमिंग एंड यू आर हैप्पी एंड यू वांट टू कॉशियसली बी विद समबडी। तो मुझे लगता है सेल्फ लव नॉट इन अ सेल्फिश वे बट सेल्फ रिस्पेक्टिंग वे इज गुड, एंड then only you can really give love to somebody else. एक किसी ने मुझसे अभी कहा कि पूछेगा मोहित से कि आशिकी 2 देखने के बाद एक सवाल आया था कि हमारे दौर में या जेंजी के दौर में लोग प्यार में मरने की कसमें बहुत खा लेते, तुम्हारे लिए हम जान दे सकते हैं, साथ नहीं निभा सकते। आशिकी 2 में क्यों बेचारा मर गया? वो साथ भी निभा सकता था शराब छोड़ के। देखिए वो नैरेटिव है एंड आई वुड नेवर प्रोपेगेट दैट एवर। ओके, इन फैक्ट आई डोंट थिंक taking your life is a solution to anything. It is dramatized only in movies and it's not a solution to anything, first and foremost. But yes, अगर वो प्यार ये है ही नहीं कि आप सब कुछ उनको देने को तैयार नहीं हो। It was a way to show and express in a cinematic way कि आप वो कितना दे सकता है अपने लिए, चाहे उसके। But I do believe in sacrifice. I think sacrifice in the sense कि आप सिर्फ अपनी अच्छाई के लिए नहीं, आप जो पर्सन यू लव यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग ताकि वो बढ़े, वो कुछ आगे बढ़े। एंड आई थिंक आरजेस कैरेक्टर का मतलब ये था कि अगर वो नहीं हटता रास्ते से उसके, तो ये लड़की कभी वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। तो मर गया बेचारा खुद, तो बेचारा वो फिल्म में मर गया। बट आई डोंट सजेस्ट इट्स प्रैक्टिकल इन टुडेज वर्ल्ड। तो प्यार करना मुश्किल है, प्यार में साथ निभाना मुश्किल है? सबसे ज़्यादा प्यार में पढ़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, प्यार निभाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मेरे फेमस गाने ने कहा था कि मेरा चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी बस तुम ही हो। आई थिंक दैट इज वन। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अभी बीती रात मोहित में आर्यन खान की एक सीरीज़ आई है बैट्स ऑफ बॉलीवुड, वो देख रहा था। तो उसमें जब इमरान हाशमी यहाँ पे कज़न आते हैं तो मुझे पता लगा कि वो इंटीमेसी सिखा रहे थे एक्टर्स को, और बड़ा अच्छा फेमस डायलॉग आया कि सारा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। अब इमरान क्योंकि आपके बचपन के बड़ी रहे हैं, आपके भाई रहे हैं, इमरान हाशमी मोहित सूरी साथ में कब आ रहे हैं? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग आपको साथ देखना चाहते हैं। देखिए मैं एक्चुअली इमरान नासिर मेरा पहले फिल्म का हीरो, मेरा बड़ा भाई भी है।
ही इज समवन हु आई डिस्कवर्ड माई आर्ट थ्रू। मैं 22 साल की उम्र में उनके साथ सेट पे था और ये कह सकते हैं हम लोग ने शायद साथ में अपना सिनेमा का जर्नी शुरू किया था, फ्रॉम एन असिस्टेंट टू अ डायरेक्टर। वो एक्टर बन गया, मैं डायरेक्टर बन गया। तो वो जब भी कहे, और एक्चुअली इसमें क्या प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है कि मैं कोई भी कहानी ऐसे लेके नहीं जा सकता उन पर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है, आई हैव टू लिव अप टू व्हाट ही इज़ बिन इन माई द रिलेशनशिप इन माई लाइफ। सो व्हेन आई हैव अ स्क्रिप्ट, आई हैव अ स्टोरी दैट आई थिंक लिव्स अप टू इमरान हाशमी, मैं पहले उनके घर के बाहर खड़ा हूँगा। मैंने आज आपकी बहुत सारी फिल्मों को लेकर जेंजी को रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस बनाए जी, थोड़ी क्रिएटिविटी सोची है। तो आपकी फिल्में ही हैं, जैसे एक विलन में आपका हीरो बदला लेता है जी। बहुत सारे जेंजी यहाँ बैठे हैं, क्या प्यार में बदला लेना चाहिए? अच्छी वो बदला नहीं लेता है, उसको वो लड़की सिखा के जाती कि बदले से, नफरत से सिर्फ नफरत फैला जाएगा। प्यार तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हें बचा के है, विच इज़ एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट यू नो विलन में वो सीरियल किलर का एंगल है, बदला है वो सब, बट एक्चुअली ये थॉट मैंने कहीं ना कहीं चुराया था गांधी जी से, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप आपके खुद के दर्द को ये नहीं निकाल सकते बाय कॉजिंग मोर हार्म टू अदर पीपल, बट बाय एक्चुअली बीइंग sharing love with the enemy's child also, and that was something that stayed with me all throughout my childhood, जो एक थॉट मैंने से। तो आई डोंट थिंक रिवेंज वाज द आंसर, लव वाज द आंसर। नाइस। मलंग में फ्रीडम दिखाया गया। आपने अभी एक जेंजी एक्टर के साथ एक फिल्म की, सैयारा, दोनों नए नए बच्चे थे जी। ये जो नए बच्चे हैं ये मेंटली कितने फ्री हैं? अरे बहुत लिबरेटिंग होता है सर इनके साथ काम करने में। हमें तो पता नहीं लगा ना, आपने छिपा के रख दिए दोनों एक्टर्स हमें दिए ही नहीं इंटरव्यू करने के लिए आपने। उसके लिए आई थिंक यू हैव टू होल्ड द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल एट द टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, बट नहीं, मुझे लगता है कि एक न्यू कमर के साथ येस देयर इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका हाथ पकड़ के उनको सिखाना पड़ता है, कराना पड़ता है, बट एटलीस्ट आपको वो फ्रीडम मिलती है, वो लिबरेशन मिलती है कि आपको जो फिल्म बनानी है वो आप बेझिझक कहे बना सकते हैं। एंड चाहे वो आदित्य श्रद्धा के साथ हो या इमरान हाशमी के साथ शुरू में हो, या आहान या इनके साथ हो, या कंगना के साथ हो शुरू में, इन सब के साथ मैंने शुरू में काम किया है, एंड आई थिंक आई हैव एंजॉयड दैट प्रोसेस सो मच। तो मुझे याद है जब लास्ट डे शूटिंग कंप्लीट हुआ था, द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माई प्रोड्यूसर, थैंक यू सो मच फॉर पुशिंग मी टू मेक दिस फिल्म विद न्यू कमर्स एंड अलाउइंग मी टू मेक इट विद न्यू कमर्स, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत एक लिबरेटिंग सा एक्सपीरियंस था। अच्छा, क्या ये जो फेलर होता है या रिजेक्शन होता है इसमें भी सक्सेस की अपॉर्चुनिटी होती है? क्योंकि जब मैं आपको पढ़ता हूँ फ्रॉम जहर टू सैयारा, जहर में मोहित सूरी को कोई बड़ा एक्टर नहीं मिल रहा था, इसलिए न्यू कमर्स आ गए। सैयारा में सैयारा से पहले मोहित सूरी को बहुत सारे रिजेक्शन मिले, फिर सैयारा आ गई। क्या आप मानते हो कि ये रिजेक्शन भी गॉड्स प्लान है और यहाँ से भी एक नई सक्सेस की कहानी निकलती है? वेल ऑनेस्टली आशिकी की भी स्टोरी ऐसी थी कि लोग करना नहीं चाहते कि क्योंकि हीरो एंड में मर रहा था, इंक्लूडिंग इमरान बट क्योंकि उसने वो प्रीवियस फिल्म में भी मरा था और वो 3 फिल्मों में बैक टू बैक मरना नहीं चाहता था, तो फिर आपने वो एक्टर पकड़ा जो मुझे पहन के ऑडिशन, चप्पल पे मोजा पहन के ऑडिशन। एग्जैक्टली नहीं, वो स्टेटस तक पहुंचे नहीं, बट आई थिंक especially in our field, in any art, in any this thing, you will feel rejection, and rejection is a part of the process. आपको वो कभी ये नहीं करना है कि आपको rejection से टूटना है, but use it to inspire yourself. क्योंकि for every time if I got rejected, if I broke, I would not be sitting here today. तो सबसे ज़्यादा जहर में पहली पिक्चर या 22 साल की उम्र में शुरू की थी, 24-23 तक रिलीज हो गई थी, और उस उम्र में सडनली वहीं से बीवी मिल गई। It's a big difference it's a big difference between an assistant director and a director. आपको लगता है making a film is about putting up shots and shooting a scene. It is not about the technique ever. आपको लिखने का शौक है? जी, मैं सारी कहानियाँ खुद लिखता हूँ। तो जैसे सईद कादरी साहब की बहुत सारी खूबसूरत लाइनें आपकी फिल्मों में आती हैं, मिथुन का म्यूजिक आता है, मोहित लिरिक्स नहीं, लिरिक्स आई डिपेंड ऑन प्रोफेशनल्स। चलो, सईद कादरी साहब की आप बहुत खूबसूरत, क्योंकि मोहित सूरी और इमरान हाशमी गाने हम सब ने बहुत एंजॉय किए, एंड आई एम श्योर यहाँ पर लोग एक बार ताली बजाए कह सकते हैं। आप कोई भी गाना प्ले कर दीजिए आपकी फिल्म का, वो सुपरहिट है, आप उसे ड्राइव करते हो घंटों सुन सकते हैं। सबसे फेवरेट राइटिंग आपकी कौन सी किसी गाने की, और उसकी 4 लाइन बोल के सुनानी होगी? तो आई डेफिनेटली वुड से एक गाना था जो बहुत चला था, बट मुझे मेरे रेटिंग में मुझे लगता है ये गाना बहुत ऊपर आता है विद ऑल द कॉम्पिटिशन ऑफ सॉन्ग्स आई हैव गॉट, बट एक गाना है फिर मोहब्बत करने चला है तू, मिथुन शर्मा जी, जो मुझे लगता है एक बहुत स्पेक्टेकुलर सा गाना था, और उसमें एक अंतरा था कि जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से मैं हूँ गुजरा।
शायद तू दिख जाए, फिर कहा वो जो अंतरा था, आई फील इतना सिंपल सा था, बट आज भी मुझे आई मीन बहुत लोग ये शायद डिनाई करेंगे ओपनली, बट आज भी अगर आप कोई किसी बिछड़े हुए प्यार से आप उसके घर के नीचे से आप पास करते हो तो मुड़ के एक बार देखते तो ज़रूर हो, शायद आप एडमिट करो घर पे या नहीं करो, सब ना सब कोई वो करता ही है। और ये अभी मत पूछना मैं किसके लिए करता हूँ ये। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जिस गाने का जिक्र मोहित सूरी ने किया है वो अरिजीत सिंह का पहला गाना था? मोहम्मद इरफान अरिजीत सिंह का ये पहला गाना था जिससे मिथुन ने कंपोज किया था। और सबसे शानदार बात ये कि मिथुन की एक और वाइफ है, मोहित की एक और वाइफ है जिनका नाम मिथुन शर्मा है। उनके साथ इनका कमबैक था, सही हूं मैं? 100%। आई मीन मैं मिथुन को उस उम्र से, मैं अपनी बीवी को नहीं मिला था जब से मैं मिथुन को जानता हूँ एक्चुअली। और आई थिंक मिथुन के प्रॉपर फेशियल हेयर भी नहीं आया था जब मैं उस उम्र से उसके साथ काम कर रहा हूँ। आई थिंक 19 ईयर्स का था वो, 19 साल का था, एंड मैं 21 या 22 साल का था। और एक्चुअली सच ये कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता और मैं डायरेक्टर, और कोई हमको सीरियसली ले नहीं रहा था। उनको लग रहा था ये बच्चे लोग क्यों आगे फिल्म बनाने हैं, आई थिंक। तो आई थिंक वी हैड नोबडी बट ईच अदर। तो और वो रिश्ता आज तक भी, हम लोग प्रोफेशनली पर्सनली मेंटेन कर रहे हैं। आपकी फिल्मों में जो हीरो होता है वो अक्सर खोया हुआ होता है। इमरान हाशमी आवारापन में खोए हुए थे, मलंग में खोए हुए थे, अभी सैयारा में भी आपका हीरो खोया। बहुत सारे युवा रिलेट करेंगे कि वो भी लाइफ में उनको क्लैरिटी नहीं होती क्या करना है। तो ये खोने वाला जो है ये आप से ढूंढते हो, और इसमें एक युवा जो आपको सुन रहा है उसे कैसे इंस्पायर कर सकते हो कि अपनी लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढे वो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं सब यूथ को ये कहना चाहता हूँ, बीइंग लॉस्ट इज नॉट रॉन्ग। दैट एज लॉन्ग एज बीइंग लॉस्ट एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट इज द प्रॉब्लम। अगर आप खोए हुए हो और कुछ सीख रहे हो, वी हैव ऑलवेज बीन, ऋषि महर्षि वक्त से हम लोग हमेशा सीकर्स रहे, हम हमेशा खोज रहे थे। हमें वो सिविलाइजेशन वैसे है जो यहाँ तक पहुँची है बिकॉज वी बीन सीकिंग, चाहे सीकिंग लव, पैशन, वर्क, करियर। बीइंग लॉस्ट एट दिस एज, आई स्टिल फील लॉस्ट। आज भी मुझे पता नहीं मुझे क्या बनाना है नेक्स्ट, मुझे क्या इमोशन करना है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। एंड इट्स ओके टू फील दैट वे एज लॉन्ग एज यू गेट अप एवरी डे एंड लुक फॉर एन आंसर। So seeking should not stop, whether it's even God, or whether it's religion, whether it's anything. As long as you're seeking, it's good. When you have the answers, that's when the problem has started. From आशिकी 2 to हमारी अधूरी कहानी, जिससे मैंने शुरुआत भी की थी, मुकम्मल हुए रिश्तों की चर्चा क्यों नहीं होती है? उन्हीं की चर्चा क्यों होती है जो अधूरे रह जाते हैं? किसी ने कहा था कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो, पासवर्ड प्रेसी ही बनती है। आई थिंक 10 साल बाद फिर सैयारा आता है, जिस एक रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाता है आई थिंक, एंड फिर शायद आप खुद ही देख रहे हो उसका सक्सेस लेवल कितना ज़्यादा है। आई थिंक वो शायद आई थिंक आप खुद भी मैच्योर करते हो आपके रिलेशनशिप में, आपके अंदाजे में। मैं उस वक्त मैंने आशिकी की शूटिंग कंप्लीट करके उसी साल शादी कर ली थी आई थिंक, एंड उसी टाइम ये 3 पिक्चरें बनाई थी, विलन, आशिकी और हमारी अधूरी कहानी। आई थिंक आफ्टर दैट एक रिजॉल्व सा आ गया था। आई काइंड ऑफ थिंक आई चेंज्ड एज अ पर्सन ऑल्सो। मेरे बच्चे हुए, और आई कुड सी लव स्टोरीज फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। तो आई थिंक एनी आर्ट शुड चेंज विद यू। आपको अगर आप वही फिल्म या वही आर्ट 20 साल से वही बना रहे, आई डोंट थिंक यू विल हैव द सेम टेकर्स फॉर इट। चलो लास्ट क्वेश्चन है, अगर कोई इनमें से युवा आपसे कहे कि मोहित आपकी फिल्म ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, जी, मोहित सूरी अपनी किस एक फिल्म का नाम लेंगे जिसने उस लड़के को इंस्पायर किया हो सकता है, या आपको लगता है कि आपकी इस फिल्म ने काफी इंस्पिरेशन? देखिए, मेरी सक्सेसफुल फिल्म से इंस्पायर होना आई थिंक शायद मैंने बहुत लोगों से बहुत सुना है, चाहे वो कलयुग से लोग जहर कोई, बट एक फिल्म थी मेरी जो मुझे मेरे बहुत पर्सनली मेरे लिए बहुत फेवरेट थी, जो जब रिलीज़ हुई थी चली नहीं थी, एंड आज भी वो लम्हे, नो एक्चुअली आवारापन आई थिंक। और उसमें एक स्पिरिचुअल सा एंगल है, इट्स गॉट म्यूजिक, इट्स गॉट लव, इट्स गॉट फॉर मी उस वक्त वो देखो, आपकी सक्सेसफुल फिल्मों के बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, बट एक अनसक्सेसफुल फिल्म की सीक्वल आज बन रही है विच मीन्स अ लॉट। आवारापन, जी, एंड आई थिंक आवारापन इज वन ऑफ माई फेवरेट्स दैट
ऐसी आवारापन के लिए अभी तालियां बज रही है। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हो। मैं बार बार शिकायत करता हूँ, आप मना करते हो मुझे, लेकिन मैं कहता रहता हूँ व्हाई नॉट मोहित सूरी इन आवारापन। मुझे एक्चुअली जॉब ऑफर मिला नहीं, दे डिड ऑफर मी टू डायरेक्ट द थिंग एंड नो बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। आई थिंक दे वांट अ डिफरेंट टेक टू इट, और शायद मेरे लिए उस ओरिजिनल फिल्म से हटना बहुत मुश्किल होता, बिकॉज फॉर मी आवारापन वाज कंप्लीट एज अ फिल्म, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इन एवरी एंगल। तो मुझे और कुछ नया उसमें बताने के लिए शायद है नहीं, एंड मे बी द न्यू डायरेक्टर राइटर कैन डू दैट। बस आखिरी 10 सेकंड सर, एक बड़ा अच्छा शेर है कि इंसान की ख्वाहिश की इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद। व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर सैयारा? आई हैव नो आइडिया एट ऑल, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। एंड फॉर ऑल, जो ऐसे आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, नॉट नोइंग इज अ गुड प्लेस दैट यू डोंट नो, so then you can start learning and start again, and I will go on this process again। जैसे कि एक नए बैट्समैन ने एक मल्टीपल सेंचुरी स्कोर कर दिया है, पर वापस क्रीज पे आ रहा है, एंड आई हैव टू बैट लाइक अ न्यूकमर अगेन। कोई नहीं, मैं आपको जाने की इजाजत दूंगा, लेकिन उदिता को याद करते हुए 4 लाइन सुना के चले जाइए। कोई भी आपके गानों की लाइन उदिता को याद करते हुए। 22 साल पुरानी मोहब्बत। मैं परिंदा बेसब्र था, भटक रहा इधर बदर, कोई मुझे यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मोहित सूरी, लवली टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट विशेस जो भी आपका अगला प्रोजेक्ट हो। चलिए फिल्मों से अब पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। किस किस को लगता है पॉलिटिक्स बोरिंग है? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। अरे वाह, आज का युवा तो बदल रहा है। तो क्या पॉलिटिक्स को एक क्रेडिबल करियर बनाया जा सकता है यंग इंडिया के लिए? ये आज एक अहम सवाल बनता जा रहा है, और चर्चा करने के लिए आई हैं हमारे पास पूनम महाजन। ज्वाइनिंग हर आवर यंग एंड पैशनेट फ्रेंड आशुतोष चतुर्वेदी। थैंक यू अदिति। तो क्या बोले, इंग्लिश और हिंदी? लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पहले तो जोरदार तालियां आप सब खुद के लिए बजा लीजिए। एनर्जी मुझे बहुत पसंद है, पेस बहुत पसंद है, तो पेस कायम रहना चाहिए। और नेताजी बस मंच पर आने ही वाली हैं। जी हाँ, नेताजी नहीं, नेत्री जी कहते हैं। और पूनम महाजन जी हमारे साथ आएंगी, बस थोड़ी देर में आने वाली हैं। लेकिन एक बात तो है यार, मैं कब से इंतजार कर रहा था, मैं लेकर आने वाली हूँ। आई मीन जेंडर चेंज हो रहा है। एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों को देखकर, सुबह से आप लोगों के पेस में और एनर्जी में कोई कमी नहीं हुई है। कारण क्या है? इतनी सुंदर हमारी होस्ट अदिति के सामने आप लोगों ने क्या कुछ जादू चला दिया क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं चला क्या? कितने खूबसूरत मुस्कुरा। तुम आए हो तो जादू चल रहा है। ऐसा है? अरे थोड़ा तो बोल दो। हाँ, मैटर करते हैं कि नहीं जेंजी? अरे है कि नहीं? ये पूनम महाजन जी, आपको प्रणाम, नमस्ते, हेलो। अच्छा सुनिए, जितने भी हमारे भारत की पूरी बात कर ले तो नॉट ओनली महाराष्ट्र, आपको जेंजी में काउंट किया जाता है कि नहीं है? नहीं है? बता दूं? चलिए दिखाते हैं और बताते हैं, क्योंकि मन में जो अभी चल रही हैं चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत मौज मस्ती होने वाली है, क्योंकि हमने टॉपिक ही ऐसा रखा है, बोरिंग नहीं चलेगा बॉस, बोरियत होने नहीं देंगे बॉस, मजा आने वाला है बॉस। जोरदार तालियां बजा दीजिए बॉस। और पूनम महाजन को हम ले जा रहे हैं स्टेज पर बॉस। प्लीज वेलकम पूनम महाजन जी। वैसे ये सब कुछ लाइंस लिखी नहीं गई थी, ये ऑन द स्पॉट था बॉस। या प्लीज कैन आई हेल्प यू? ऑल सेट? किस्सा कुर्सी का है। किस्सा कुर्सी का, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। धन्यवाद। क्योंकि मैं पायलट थी, सो कुर्सी भी मैं ठीक करा रही हूँ मेरी। ऑल ओके? गिरने नहीं देंगे। I think you have to put it- गिरने की तो मेरी तमन्ना नहीं है, लेकिन हो ना जाए तो आप थोड़ी ये मैं कुछ हेल्प करता हूँ। मान लीजिए मैं विपक्ष हूँ, मैं कोशिश करूँ गिराने की,
मैं महाजन हूँ, मैं विपक्ष को भी उतना ही प्यार वाह! करती हूँ जितना। जोरदार तालियां। देखिए ट्रेलर, और ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है दोस्तों। अच्छा। प्लीज, ऑल सेट? या आई थिंक इट्स लिटिल हायर। वैसे में हाँ, तो मेरा शारीरिक और राजनीतिक वजन से कुर्सी सेट हो गई चुकी क्या बात है। चलो, वैसे मैं आपके साथ हूँ, आपकी कुर्सी में गिरने भी नहीं दूंगा पूनम जी। थैंक यू। हाँ, पहले ऐसे लगना चाहिए ना कि प्लांटेड है, मैं विपक्ष का आदमी हूँ। अच्छा, ठीक है, तो आपका स्वागत है। कहाँ से शुरू करें? कैसे, सीधा? चलिए शुरू करते हैं। पूनम जी, आप मंच पर आई, सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये फॉर्मेलिटी होती है। हम आपको कहना चाहेंगे, आप हमेशा आते रहें, और आपको अक्सर टीवी पर हमेशा से देखा है, सबने देखा है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा आप राइज किए हैं। 2 बार आप लगातार बैक टू बैक MP चुनकर आती हैं, तो बिना जनता के ये पॉसिबल होता नहीं है। आप BJYM की नेशनल प्रेसिडेंट रहती हैं, ये छोटी बात तो होती नहीं है। कम उम्र में इतने मुकाम तक आप पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात, इसके पीछे का राज। और एक बार पहले तालियां बजा दीजिए, ये छोटी उपलब्धि नहीं है किसी की भी लाइफ के लिए। पूनम जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं NDTV युवा, हिंदी या अंग्रेजी? हिंदी, इंग्लिश, बोथ, यू कैन, व्हाटएवर यू। इंग्लिश में बोलना है, भारत की भाषा। सबसे पहले NDTV युवा में मुझे बुलाया गया, तो मैं एक ऑफिशियल युवा और कूल हूँ, ये तो पता चल गया मुझे, इसलिए NDTV बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर विमेन हु टेक। युवा में क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ, युवक बहुत आगे बढ़ जाता है, युवती में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, फिर वो महिला बहुत जल्दी हो जाती है। युवा तो अपने 80 साल में, लड़का तो युवा ही रहता है, लेकिन युवती थोड़ी कहीं ना कहीं जाके महिला में परिवर्तित होती है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ देख के कि मैं स्टैम्प्ड युवा हो चुकी हूँ। जेनजी ने 2-4 तालियां मार के मुझे हाँ भी बोल दी है। 2-4 तालियां नहीं, जोरदार तालियां पड़ी थी यार। क्या मैं गलत हूँ? मुझे गलत साबित करो और सही तालियां मारो। ये भी स्क्रिप्टेड ही था। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सब लाइव न्यूज़ है, ब्रेकिंग। सो ये बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ NDTV युवा को। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भारत एक एस्पिरेशनल देश है। डेमोग्राफिकली हम सारे युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब विश्व को देखा जाता है, व्हेन यू लुक एट इट विद ग्लोबल पर्सपेक्टिव, youth of India is going to decide the future of the world. So we are not only Indian citizens, we are global citizens. इसलिए भारत के युवा बहुत ज़रूरी है, और ये वो समय है जहाँ पे युवा भारत का ऐसा डंका पीटेगा कि पूरा विश्व देखेगा। क्या बात तो है, यही बहुत ज़रूरी है। That's what Gen Z, आप पे जिम्मेदारियाँ बहुत है। Gen Z of India is going to decide where India is going to steer. And I have full faith in you all Gen Z that your aspiration is our country's aspiration and you're connecting India's aspiration to your aspiration. So I'm very proud of it. आपने बहुत कम, अरे वाह, आपके लिए भी तालियां जोरदार। Thank you. आपने बहुत कम एज में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था, तो ये फैसला दिल से था या एक फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए? आधा आधा था, क्योंकि अभी किसी को आपने पूछा कि आप राजनीति से बोर होते हैं, तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो राजनीति में काम करते हो कभी कभी थक भी जाते हैं, बिकॉज इट्स अ एंडलेस वर्क, यू ऑलवेज इन पब्लिक स्क्रूटनी। तो कभी कभी हमने हमारे पिताजी को देखा है कि उस स्क्रूटनी से कभी कभी दर्द तकलीफ़ होती है, लेकिन दर्द तकलीफ़ लेके ही कहीं ना कहीं युवा भी आगे जाता है। सो थोड़ा दिल से, थोड़ा दिमाग से सोच के आए हैं, और ऐसे ही चल रहे, दिल और दिमाग को साथ लेके। ऐसा कहा जाता है कि आपको हाथ पकड़ के कहीं पर लेकर जाया तो जा सकता है, लेकिन आगे आपको क्या करना है, आपका फ्यूचर क्या है, खुद को सेट करने के लिए आप में कितनी शक्ति है, वो आपको खुद ही तय करना होता है। तो आपके लिए हम करके दिखाएंगे मोमेंट, वो क्या था, कब से? आई थिंक ये कंस्टिट्यूएंसी 2014 में जब मुझे पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सबने कहा था कि ये गढ़ है कांग्रेस का, मैंने, मेरे मित्र साथी मेरे साथ जो लड़ रहे थे वो मेरे भी मित्र थे, लेकिन ये गढ़ है कांग्रेस का, और ये गढ़ कोई नहीं तोड़ सकता, इस गढ़ को कोई भेद नहीं सकता। लेकिन ये किला, ये गढ़ हमने भेदा, बिकॉज चैलेंजेस आर एवरीथिंग, अ यूथ टेक्स इट हेड ऑन। और मैं फिर से एक बार, मैं पायलट थी इसलिए मैं हर वक्त कहती हूँ को आप उड़ान भी लेते हो तो आप हेड विंड पे उड़ान लेते हो। व्हेनेवर यू हैव टू टेक ऑफ, यू हैव टू टेक ऑफ इन हेड विंड। सो मुझे लगता है हर युवा को चैलेंज बहुत ज़रूरी लगता है, एंड आई थिंक चैलेंज ओनली गिव्स योर मेंटल हेल्थ मोर एस्पिरेशन, डोपामाइन, स्ट्रेंथ। सो यही चैलेंज हम लेना चाहते हैं। मुझे लगता है 2014 का चुनाव निर्णायक था, और बहुत अच्छे वोटों से लोगों ने प्यार दिया।
लेकिन यूथ को, चूंकि यूथ से यहाँ पर बैठ रहे हैं और उससे हम जुड़े सवाल भी ले रहे हैं, तो थोड़ा उनको भी इंस्पायर करने वाला सवाल कि आखिर यूथ पॉलिटिक्स में आने से कतरा क्यों रहे हैं, डरते क्यों हैं, क्यों डरते हैं वो पॉलिटिक्स में आने से? उनको क्या डर लगता है, क्यों लगता है? नहीं, बिल्कुल करियर नहीं युवा नहीं है, डरता, नहीं, या नहीं, फिर नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है? मैं ये कहना चाहती हूँ पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है। आप राजनीति को इतना मत खराब समझिए। कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स है, जर्नलिज्म में पॉलिटिक्स है, हर जगह स्कूल कॉलेज में भी पॉलिटिक्स हो जाती है, बट वी फेस इट एंड वी टेक इट फॉरवर्ड। तो राजनीति में तो राजनीति होगी ही। मुझे नहीं लगता आजकल का युवा डरता है, और युवा डरना भी नहीं चाहिए। आज मेरे साथ जब इंटर्नशिप के लिए सारे बच्चे आते हैं, दे इंटर्न विथ मी एट द एज ऑफ 14 to 50 तक लोग अलग अलग रूप से पढ़ने आते हैं, मेरे साथ सीखते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग आज युवा पॉलिटिकली कहीं ना कहीं हैं। जब मैं युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी, आज आप देखेंगे जो जो नई टीम आई हुई है, जो यंग लड़कियां हैं जो टीवी पे भाजपा के लिए बोल रही है, वो युवा मोर्चा से है। सो यू हैव टू फेस इट। लीडर तय करता है कि उसको किस रूप से लोग चाहिए, एंड आई बिलीव एज अ लीडर दैट अ लीडर हु बिलीव्स दे जस्ट नीड फॉलोअर्स विल नेवर गो फॉरवर्ड। अ लीडर टू बिकम मच बिगर लीडर हैज़ टू क्रिएट लीडर्स फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। सो आपको नेताओं बनना है तो आपको नए युवा नेता तैयार करने पड़ेंगे। सो मुझे लगता है डोंट बी अफ्रेड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली नेतागिरी, भाषण करो, तो क्या जनता में ऐसा जाओ। लगता है कि नए लीडर तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा। राजनीति का परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है। आप राजनीति का परिप्रेक्ष्य सिर्फ भाषण देना, जनता में फोटो खिंचवाना ये नहीं होता। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प मी व्हाट टू स्पीक इन पब्लिक। हर चीज़ मेरे पास नहीं होगी। कभी लोकसभा में क्या सवाल पूछने हैं, वो मेरे लिए कोई मदद करके देता है, पूछता है, रिसर्च करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स में भी आयाम आए हुए हैं। लेकिन सिर्फ उस भाषण जनता करो, को, उन लोगों को एक बात से चिढ़ होती है कि जब चुनाव होते हैं, नेताजी हर एक घर पे जाते हैं, जाने भी चाहिए वोट मांगने के लिए, वो उस वक्त हर एक घर में नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल के पहले ही 3 महीने 4 महीने या कोई भी अगर जरूरत होती है उस इलाके को, उनके लोगों को, रफ्तार को, विकास को, किसी भी चीज को, तो नेताजी वहां पर नदारद रहते हैं। I'm sorry, you're asking a very millennial question. I'm very sorry. क्या ये सवाल गलत था या सही है? No, it's a very millennial question क्योंकि आजकल स्पेसिफिक आपके लिए नहीं। नहीं, मैं अपने लिए तो लूंगी भी नहीं क्योंकि I'm always active. बट मैं इसको क्यों बोलती हूँ millennial question है? आज हम सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं, और सोशल मीडिया से हर किसी को पता चलता है कि नेता या अभिनेता या कौन क्या कर रहा है। जब आपने मुझे ये विषय दिया था कि युवा की सोच में आप क्या बोलना चाहती, तो मैंने जेन AI पे टाइप किया व्हाट डू जेन Z एक्सपेक्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, और मैंने उसमें बहुत सारे मुद्दे देखे। मैंने कहा ये तो मैं करती हूँ, लेकिन बाद में उसमें और एक चीज़ है जो हम नहीं समझ पाते, ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि हम किस रूप से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड दैट इज़ नॉट ओल्ड एंड दैट इज़ नॉट न्यू ऑल्सो। मैं उस हिसाब से देखती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी आदमी वोट मांगने 5 साल कुछ ना करके जाए तो जनता उसको माफ़ कर देगी, बिल्कुल नहीं। ये नया ज़माना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। ये यहाँ पे बैठे हुए युवा जो सोशल मीडिया पे, किसी को पूनम महाजन नहीं पता तो गूगल करके पहले ही चेक करने का ज़माना है। ये वो ज़माना है, यू कैन नॉट प्ले विद देम। ठीक है, आपने सोशल मीडिया की बात कही तो एक सोशल मीडिया से जुड़ा सवाल ले लेता हूँ। सोशल मीडिया के आने के बाद से आप नेताओं की भूमिका, जनता से कनेक्टिविटी बढ़ी है या चुनौती बढ़ी है? ये इसने आसान कर दिया है आप लोगों के लिए या दोनों होता है? हर रिश्ते में चीज़ें दोनों होती है। अभी मैं मोहित सूरी जी को सुन रही थी कि अधूरा प्यार भी बहुत अच्छा लगता है, पूरा प्यार भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही उनके डिस्कशन से मुझे यहाँ पे जो बैठे हैं बहुतों के प्यार अधूरे होंगे, क्यों है कि नहीं है? तालियां नहीं? अच्छा, अभी भी देखो वो बजा दिया भाई साहब ने। अरे कभी कभी मजाक भी समझ लिया करो यार, हाथ उठाने के लिए बोला था, कोई थोड़ी ना उठाएगा अधूरा प्यार के लिए। लेकिन उसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ। अधूरा प्यार पूरा करने के लिए भी लोग काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था इसमें कि लोग, सोशल मीडिया से एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि आप लोगों से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। पहले क्या होता, अखबारों तक जर्नलिस्ट ने मेरा नहीं सुना, मेरी तस्वीर नहीं लगाई, मैंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, बुरा ज़्यादा छप जाता था, अच्छा कम छपता था। TRP का भी ज़माना तभी भी होता था। लेकिन आज मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ, मुझे ज़्यादा यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे इनको कह सकती हूँ दे कैन ओपन वेयर पूनम महाजन इज़ गोइंग, व्हाट शी इज़ डूइंग। तो आज सोशल मीडिया कठिन भी हो गया है क्योंकि आपके लिए कंपटीशन बढ़ गई है, लेकिन आसान भी हो गया। आज यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को मुझे हर वक्त ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कहीं से भी AI में चेक कर लेंगे व्हाट डिड पूनम महाजन डू इन पास्ट 10 years। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो आसान है।
अच्छा आप अच्छे लोगों के लिए आसान है बस, नहीं बिल्कुल सही बात नॉन है। कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों के लिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि यू कैन क्रिटिसाइज देम बट यू कांट इग्नोर देम। दैट्स द यूथ ऑफ दिस कंट्री हैज़ टू बिलीव। क्रिटिसाइज तो आप करना, इट्स मुझे लगता है क्रिटिसिज्म एक बहुत अच्छी सीख होती है सीखने के लिए। आप इग्नोर करोगे ना करोगे, लेकिन क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ लर्निंग लेसन। आप पॉलिटिक्स में हैं, आप एक मदर भी हैं, तो राजनीति और घर दोनों को कैसे बैलेंस करती हैं? पता नहीं, चल जाता है। जैसे जरा? ये किसी ने कहा कि युवा जो होता है वो धुंधला सा रहता है, तो मैं भी ऐसी थोड़ी बहुत धुंधली सी रहती हूँ, लेकिन सब ठीक है। मेरा बेटा भी जेन ज़ी है, दो आई लुक लाइक अ वेरी कूल मदर, बट यहाँ पे मैं कूल लोगों के घर पे लेम रह जाती हूँ। सो यही कहानी होती है, हर किसी की कहानी घर घर की। एंड मैं ये प्रतीत करना चाहती हूँ कि एक माँ होने के बाद कोई गृहिणी बन के महिला नहीं रहती, वो भी इतनी कूल रहती है, उतनी इंक्विजिटिव रहती है, उतनी अपने रूप से देखती है। सो घर मैं तो बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, राजनीति से परे मैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करती हूँ। आज ही हम 2000 बच्चे युवा कॉलेज से ले आए, हमने ओशन क्लीन अप डे किया था, उसके बाद हमने पेड़ लगाए। तो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती हूँ। मैं क्या नहीं करती हूँ, और मेरे बच्चे भी मेरे साथ ऐसे करते में मेरे रहते हैं। एग्जाम में सवाल आ रहा है कि अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होती तो पूनम महाजन आज क्या कर रही होती? ये बहुत ही पुख्ता सवाल है, और इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन होगा, क्योंकि आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ। लेकिन आपकी जो मन में है वो, मैं इफ बट्स पे विश्वास ही नहीं रखती, और इफ और बट पे विश्वास रखूंगी तो मैं वही जेनजी की तरह कहीं ना कहीं घूम जाऊंगी। मिलेनियल हूँ, अपने आप को उसी रेजिमेंटल लाइफ में रख देती हूँ। मेरे पास वो समय नहीं है सोचने का कि मैं नहीं होती तो क्या करती। मैं ये सोचती हूँ आज हूँ तो इससे अच्छा कैसे करूँ, तो उस रूप से मैं अपने आप को देखती हूँ। गाने पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा, बस गा नहीं पाती, ये दुख की बात है। एक आवाज़ भाषण करने की होती है, एक आवाज़ गाने की होती है। आपने ऐसे तो नहीं समझ लिया मैं पहले बोलूंगा 2 लाइन गा दीजिए? नहीं बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल चलेगा, लेकिन वो ट्रोलिंग के लिए बहुत अच्छे से चलेगा, और जो मुझे नहीं आता मैं उसने अपने आप को सीधा आपके प्लेलिस्ट में सबसे ज्यादा गाने किसके चलते हैं? जेनजी के गाने चलते हैं। मैं अंग्रेज़ी से शुरू करूंगी तो माफ़ करिए, मेरे घर में टेलर स्विफ्ट बहुत चल जाती है, आपके यहाँ भी होता ही होगा। और उसके हर गाने मुझे लगता है सिर्फ जेनजी को नहीं लगते हैं, मुझे भी लगते हैं। जैसे आज ही मैं वो गाना सुन रही थी कि आई कैन डू इट विथ अ ब्रोकन हार्ट। आपको गाना पता है? थोड़ा सुर में अगर हो बिल्कुल नहीं, माफ़ करिए। या हिंदी में गाने सुनती हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ लिरिकल गानों में भी हर किसी को गाने कैसे पसंद है। पीपल लाइक म्यूजिक, आई लाइक व्हाट इज़ रिटन इन इट। एवरी सॉन्ग हैज़ टू हैव दैट मीनिंग टुवर्ड्स इट। मैं जुबिन के गाने बहुत सुनती हूँ। जुबिन आने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद। हाउ वंडरफुल, वो पारिवारिक मित्र है तो मैं उनको ज़्यादा सुनती हूँ। अरिजीत के गाने सुनती हूँ। मुझे असम के हमारे सिंगर हैं पैपॉन, अरे शानदार, मुझे उनके गाने बड़े पसंद हैं। और उनकी जो आजकल हर कोई गाता बहुत अच्छा है, लेकिन वो डेप्थ उस आवाज़ में, वो ठहराव है ना, वो उनमें है। लता दीदी, किशोर कुमार, मतलब मैं आपको क्या कहूँ, गाने तो हम सब सुनते हैं, और मैं हर भाषा के गाने सुनती हूँ। अच्छा। जी, मराठी भी बहुत सुनती हूँ। हम अजय अतुल की वजह से मराठी एक अलग तरीके तो से हम मुंबई महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो मराठी में अगर 2 लाइन कुछ सुना रहे तो हमारे पूरे भारत के जो दर्शक हैं वो भी पूनम महाजन को एक नए रूप में सुन ले। क्या आप सुनना चाहेंगे? आवाज आनी चाहिए तभी सुनाएंगी। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यस पूनम जी प्लीज। मुझे पता है जेनजी बोर होता है, आप आज गवाओगे कल नहीं, ऐसा नहीं ऐसे तो होगा नहीं। नहीं मेरी आवाज गाने की नहीं है, माफ करिए। मैं गा सकती तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन 2 लाइन बस। माफ करिए, अभी माफ करिए गाना तो होता नहीं है। मैं वही सोच रहा था कुछ, लेकिन गाना जो भी आपको लगे, कुछ पंक्तियां, कुछ जो भी मन में आपके जहन में आए। मैं बहुत दुखी सा गाना है, मतलब बहुत डीप गाना है, लेकिन एक शंकर महादेवन का गाना था, प्लीज मैं उसकी सिर्फ पंक्तियां बोलूंगी। मन मंदिरा, मैंने वो गाना ऐसा है कि उजड़ू न दे, मैं मुझसे नहीं होगा, माफ करिए। आई जस्ट थॉट मे बी आई कैन डू इट। ये वीडियो मेरे बच्चे देखेंगे तो मुझे कैंसिल कर देंगे, एंड आई डोंट वांट टू बी अ कैंसिल। नहीं अप्रिशिएट करेंगे। बट ये है, बहुत अच्छे गाने हैं, हर गाने के पीछे एक कारण होता है, और मैं खुश हूँ और हैप्पी हूँ कि मेरी बेटी जेन अल्फा है। आप तो जेन जी की आप अगर कहेंगी तो मैं सुना दूंगा आपके लिए गाना। आप गाना गाइए प्लीज प्लीज, बहुत अच्छा। शंकर महादेवन आपने बोला है तो मेरे भी फेवरेट हैं, वो बहुत सुंदर गाते हैं। सुना दूं, कोशिश करूं, बोर तो नहीं हो गए आप लोग, भागोगे तो नहीं? पक्का 2 लाइन कर दूं? ऑन योर रिक्वेस्ट। वाह 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 वाह। मेरे मन ये बता दे तू
किस ओर चला है तू, क्या खोया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तू ना तू छुपा, सोनिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दिस इज आई थिंक कोई भी जनरेशन हो, शाहरुख खान का गाना तो हर किसी के दिल पे छू लेता है, तो शाहरुख के लिए भी तालियां हो जाए। जोरदार तालियां शाहरुख खान के लिए, शंकर एहसान लॉय के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए और पूनम महाजन। लेकिन चलते चलते तो हम आपसे कह रहे थे कि अच्छा एक चीज़ बहुत जहन में मुझे ध्यान आ गया, वर्ली से भारतीय जनता पार्टी अभी मेयर की चुनाव की भी शुरुआत कर चुकी है। वर्ली जहन में आते, चूँकि वर्ली पूरा आपका बीता है, प्रमोद महाजन जी उस वक्त अगर जाएँ, 2 घर छोड़ के आप भी रहती थी, आपने सब कुछ देखा, हमने वो टीवी पर देखा था। फ्लैशबैक, वर्ली, ये चुनाव, मेयर चुनाव, वर्ली कहीं खींच कर ले जाता है आपको? मुझे पता नहीं यहाँ वर्ली वाले कितने हैं, मैं तो अभी बैंड्रा रहती हूँ और मैं पहले सोबो थी, फिर सबर्बन हो चुकी हूँ, बट मैं हूँ प्योरली हार्ट ब्रोर मुंबई का। वर्ली पोचखान वाला रोड जो है और समुंदर के वर्ली का सी फेस है, वो बहुत सुंदर है और मुझे लगता है बचपन की बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी दुखी भी यादें हैं। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आधी मुंबई रही हूँ, आधी दिल्ली रही हूँ, पूरा देश घूमी हूँ, लेकिन है कहीं ना कहीं दिल से वर्ली से कहीं ना कहीं नाता है, क्योंकि वो समुंदर बहुत याद आता है। अभी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे समुंदर नहीं दिखता, लेकिन मुंबई की एक अलग शान है और मुझे लगता है मुंबईकर यहाँ पे बैठे हुए, भाषा जात धर्म कुछ नहीं होता, मुंबईकर होता है। उस रूप से हम सारे, हमारे मुंबई के स्पॉट बहुत अलग है। आप मुंबई से हो? मैं मुंबई से नहीं हूँ, लेकिन मुंबई से नाता है, आता जाता रहता हूँ, बहुत सारे मेरे फिर आपने मुंबई का वड़ा पाव ट्राई किया है कि नहीं? बिल्कुल, कई बार, मेनी टाइम्स। क्योंकि मैं जब भी कभी दिल्ली जाती हूँ एक बैग सिर्फ वड़ा पाव से ही निकलता है, क्योंकि हर कोई मेरे मित्र जो है जर्नलिज्म में, आप पूछेंगे दिल्ली में अभी भी वड़ा पाव के बिना दिल्ली वालों का कुछ नहीं होता, तो ये मुंबई की एक याद रहती है। ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, लेकिन चलते चलते मैं चाहता हूँ कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमको मिल जाए इस मंच से। मैं जैसे हमेशा सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है और आपके ठाकरे खानदान से बहुत अच्छे रिश्ते, खासकर रश्मि जी से हमने बहुत बार देखा है, तो क्या कहीं सब ठीक है? राजनीतिक रिश्तों के बारे में आप पूछ रहे हैं या पारिवारिक रिश्ते? अब आपने पूछ लिया। देखिए, मेरे नाम में सब कुछ जवाब आ जाता है। हम पूनम प्रमोद महाजन। राजनीतिक रिश्तों में हर वक्त हम राजनीतिक ऊंच नीच होती रहती है, हम उसको ऐसे देखते हैं कि हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्ते पारिवारिक रहते हैं। और आप महाराष्ट्र के क्या पूछ रहे हैं, आप कोई भी देश में रिश्ता निकालिए जो ऑपोजिशन में, पूनम उनसे कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है राजनीति में हम विचारों से लड़ते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, लेकिन विचारों से इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वी आर डूइंग बेटर देन देम, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विथ पीपल एंड वी आर डूइंग बेटर विथ पीपल एंड पीपल आर सपोर्टिंग फॉर अस फॉर दैट। तो मुझे लगता है जब पब्लिक जनता हमें आशीर्वाद देती है इसलिए हम अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर नहीं पाते, लेकिन पारिवारिक रूप से बहुत प्यार देती हूँ उनको मैं। हमारे एनडीटीवी के व्यूवर्स के लिए 2 शब्द चलते चलते। मैं एनडीटीवी को ये कहना चाहती हूँ, सही खबर, अच्छी खबर आप हर वक्त देते हैं और अभी एनडीटीवी का नया रूप एक नए चेहरे के साथ जो युवा है इसको आगे ले बढ़ रहा है। मेरे भाई का नाम भी राहुल है, यहाँ पे भी राहुल बैठे हुए हैं, उनका भी मैं करियर देख चुकी हूँ। हर वक्त एक निष्पक्ष और एक बहुत अच्छे रूप से खबर लोगों तक पहुंचाना, ना इधर का ना उधर का, जनता की एनडीटीवी, जनता की खबर और जनता को आप आगे ले जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं का विचार करें और युवाओं को भी आप आगे ले जाएंगे और स्वस्थ भारत तो आप 12 साल से कर ही रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हमारे एडिटर इन चीफ सीईओ के लिए, राहुल कमल के लिए एंड पूनम महाजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच का शोभा बढ़ाने आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। Thank you, Poonam. Thank you for giving me. A huge round of applause for Ashutosh as well. Guys, a huge round of applause. Yeah, lovely. And thank you, Poonam, for giving me a song to add to my list. One Can Do With a Broken Heart.
Yes. And now we'll move from politics to financial freedom. Aditi. Indeed, yes, that's very important क्योंकि युवाओं का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है financially independent होना. तो पॉलिटिक्स से अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में. अरुण बताएंगे इसके बारे में. Sarthak Ahuja is a leading startup advisor, CA and finance educator who's helped thousands of young Indians decode money, entrepreneurship and financial freedom. Yes, and in this session, Freedom Hack, money on your terms. He unpacks how we can take control of our earnings, savings and investments early on. Drum roll please. Sarthak. And do we have Sarthak? For this, we'll throw it to our colleague Alex there. Over to you, Alex. Thank you so much. So I'm going to be starting from the middle of this lovely hall, and I can see so many young faces out there. The energy is palpable. Can you give me a shout? Can you give me a shout? There you go. All right. We're going to be talking about money, and we're going to make this real because youth like real, right? So let's talk about the actual issues. I don't want to start on the stage. I want to start with you guys right here, and I want to ask you a few questions, yeah? Everybody wants to be rich? I've met a monk, okay? I've met a monk, and the monk also wanted to be rich. His definition of rich was different. He was talking about spiritual richness. But we're talking about money, right? I can't hear you guys, come on. We're talking about money, eh? Okay, so the thing is, everybody perceives wealth differently. Everybody perceives the idea of being rich differently. But then, if I ask you to think about a number, if you had that number today, you would call yourself rich. You wouldn't have to work another day in your life. What would that number be? I'm going to go across to a few people over here, and you're going to tell me. I'm going to start with you. What would that number be? Yeah. Like the figure? The figure. Quick. Crores maybe. Crores? What crores? 55. 55 crores here for the lady in the white. What do you want? Billion, 100 billion. 100 billion what? Rupees, dollars, pounds? Dollars. 100 billion dollars. We're talking about billionaires right here. Anybody else have any idea? You wouldn't have to work another day in your life. She said 100 billion dollars. I think she could feed all of us, our families and our neighbors as well, right? 5,000 crores. 5,000 crores. Okay, so we've got some interesting numbers. $100 billion is way out there. And she talked about dollars. We're not talking about rupees. Okay, but the second question to you, and I think everybody can participate. The second question is, would you work till you're 60 or would you retire early? And I think you can give me a show of hands if you think one or the other. Work till you're 60? Okay, there are a few people out there. Retire early? Okay, you know what? What about the rest of you? You're not going to work, you're going to start up. Because I don't see an even number. All right, the next question. Would you buy a house or live on rent? Buy a house? Live on rent. What is the rest of you going to do? You're going to live with your neighbors, is it? Okay, and the final question. I'm going to ask a few people this. Gold, equity or cryptocurrency? You can pick all three. Gold equity probably. Not cryptocurrency. Okay, what about you? Gold equity. Gold and equity. Very sensible investors in the crowd. Okay, let's take this to the stage now. Sarthak, you want to join me? Okay, so I've kind of set the stage, I hope, for what is going to be a fun conversation. We're going to keep it real. Yeah, we're going to talk about stuff that affects all of us. And you all know Sarthak. You've probably seen some of his content. But I want to start with the concept of FIRE, right? Everybody's heard about financial independence, retire early. But Sarthak, I want to ask you, you're hearing this a lot more now. Our parents didn't talk about it. Parents work till they're 60, retired comfortably now. But you're hearing FIRE now. Why is that? I think it's because a lot of people have realized that working is very different from just being able to earn money to meet their livelihood. I think working today is all about joy. What really gives you fulfillment, what you really want to do, you want to leave a legacy, you want to have fun while you're on this planet, right? And I think in that context,
financial independence becomes important, because I do realize there are a lot of people who would need some amount of money coming in just to be able to meet their basic needs and save enough to be able to retire. And that financial freedom where they can do exactly what they wish to do. If they want to take 2 months off and just relax and think of what is going to give them fulfillment in life ahead, so be it. So I think the idea of just wanting to buy control over people's time is a beautiful thing, right? And why not? It ties into Maslow's hierarchy, where your food and shelter is taken care of, you're just looking for what you want to do. But that's a powerful concept, the ability to control your own time. And I don't think it means that you quit your job if you have a certain amount of money. You keep doing what you want to do. And I think only a few people in the crowd did put their hands up when they said they wanted to retire early, right? So people want to work for a while. But what I see also is this need to get there quickly, this desire and the urge to earn money very quickly. Are you seeing that as well? 100%. And I think it's both positive, and I wouldn't say as much negative. I think it just goes to show where India's reached after all these decades, because the generation that came before us didn't even have that option. So those aspirations, those dreams didn't exist. And today, India, the leadership, the entire environment and the economy has reached at a point where people can dream. And very honestly, when you look at economic data, back in the 70s was actually the best time to be going into the US. And the 20 years after that is what people would call the American dream. Similarly, when you think about it, in the 2000s was the perfect time to actually be in China and ride the wave of the next 2 decades, which has made China what it is today. And to be honest, India right now is exactly at that per capita income and absolutely at that inflection point where people should be dreaming, because only when they do dream will they really be able to capitalize on what our economy is going to bring for all of us over the next 2 decades. And I am excited, and I'm glad all of them are excited. So that's a powerful concept, and please listen to this carefully. I wish that somebody had told me this when I was 2022 to start your SIP, start your investments right now, because you want to take advantage of that. But I do want to ask you about a concept that you've spoken about, 4 levers to wealth, right? You want to define that, because you've also said that people tend to go to the last lever first, which is not necessarily a good thing. Correct. I mean, I would say whenever you think of finance and optimizing your wealth, there are 4 levers. It always starts with the kind of income you earn. That's the first step. Moves on to your expenses, which is what kind of lifestyle you live. That leads to your savings, and the third thing that eats out of your savings are actually taxes. And the fourth thing, whatever is left, is you actually invest. And unfortunately, a lot of people tend to obsess a lot about where to invest their money in the early ages, when ideally, when you think of effort to return ratio, I think really optimizing in the early ages on how to increase your income, which is directly related to upskilling, will actually have much better outcomes in wealth creation. So I think figuring out where to invest is necessary. But if I were in my 20s and I had to pick, I would probably look at what are the skills which are necessary, which would just immediately help me increase my income, and that would have a much larger impact on my wealth creation journey. Important point that you're making there, because we're speaking today. I don't know how many of you have looked at NDTV Profit, NDTV, or read the news, or seen what Donald Trump posted, or what you know, the H-1B issue, the fact that it's going to be tougher in the near term, at least if nothing changes, for Indian IT workers to go to the US. So the reason I bring this up is that already with artificial intelligence, with so much changing in the digital landscape, we're not really certain about the outlook beyond the age of 45, particularly people in the software space. How do you deal with that uncertainty? Because you tie that with skilling yourself, upskilling yourself constantly, and investing in yourself early on. How do you ensure that you're not left behind? I think first is even understanding what do you want to be upskilled in. If I had to really bet on certain industries or knowledge of the future where a lot of wealth can be created, I would say think about it as A, B, C, D, E. When I say that, I mean
A, of course, is AI and artificial intelligence. B, I would say, is biotechnology. C, I would say, is crypto and blockchain, which is a wave which is going to come back again and very wildly so. D would be for drones and robotics, and E would be for energy transmission. And I think anyone today who has to pick on which industries to get into and where to upskill, if they just think about this and can possibly expose themselves to what is happening in these industries, maybe on a YouTube or on the internet, you don't need to do an expensive course about it. At least it will put you in the right mind frame of thinking on what are the skills of the future. And that could be a great start. And you mentioned H1B, right? And what's happened today, for people who may not have read the news yet, is that yesterday President Trump of the United States mentioned that for all H1B workers in the US, the US is going to impose a fee of $100,000 annually that the employer would have to pay if they have a foreign employee, which means, can you imagine, for every Indian who is working in the US at a Microsoft, at an Amazon, these companies would have to pay close to 88 lakh rupees every year just to hire Indian talent. And 71% of Indians are part of that H1B, which essentially means if this really goes through, a lot of very talented Indians are going to come back to our country. Which is a good thing, and there are It's a opportunities great as thing. well. So that's an important point to understand. But I do want to ask you very quickly, which is we started with get rich quickly and the idea that a lot of people want to get there faster. But you say that the middle ground is better, whereas generations in the past were more conservative. I know my dad went all out and invested in the Employee Provident Fund. He went as much as he could. He didn't invest in equity till he was 65. But then people today are trading derivatives, they're investing in equity. What, according to you, is the middle path? How would you go about it? Personally, my portfolio is just 1/3, 1/3, 1/3 into gold, into equities, and into real estate. And when I say that, I know real estate has come in much later in my life, much closer to where I am right now. But if you're starting off early, both gold and equities are great to start with. And when I mention equities, I must personally confess, I don't pick stocks. I mean, I'm very happy to be investing in the index and getting close to 12-13% per annum for an extraordinarily long period of time, because I do go by Mr. Warren Buffett's philosophy where time in the market is much more important than timing the market. And I feel if I had to really study and pick stocks, I think all that time I rather spend in upskilling myself, and that may create a lot more value in my life. Would that work for everybody, though? I think it definitely can. And you know, all financial planning essentially stems from what are you really saving for in your life. And I would say for people, if they're really saving for a retirement at a 40 and you're at 25 at the moment, right? You've still got 15 years to really make money. What would you make in 15 years if you were getting 13% or 14%? Oh, I'll give you a simple example. There's a very simple thumb rule to say, which is called the 15-15-15 rule. Yeah? And it says if you save and invest 15,000 rupees every month for the next 15 years, and it gives you about 15% per annum, you'll add up to about 1 crore at the end of that 15-year period. But can you imagine if that number of 15,000 were to keep increasing every year as you get upskilled, as you earn more? That number can actually be very close to your retirement amount, because how much money does a person need to retire in India? I have a formula for it, which is, you need $1 million for India, 2 million for the UAE, 3 million for the US, and 4 million for anywhere in the world. So I'm very happy to hear numbers like 5,000 crores today. But and to be honest, $100 billion. Yeah, and $100 billion. And God bless you, and I really wish that is the ambition of our nation, and we all should hope to get there someday. But 50-55 crores should be more than sufficient for you to retire anywhere in the world. Okay, fantastic. Hopefully we've gotten you started, or at least gotten you thinking about how you're going to get started. But I do have to ask you about your own personal journey, and pretty much the last question, right? You're a chartered accountant, you're an investment banker, you're an educator. There must have been some moment in your life where you questioned your decisions and you said, okay, this is that moment you need to pump yourself up. What was that hum karke dikhate hain moment for you? Oh, for me, I think
it definitely comes from a bit of privilege, but the first bet that I took with all the money that I had saved, working for about 5-6 years, is I decided to invest in a good education at a good institute. And despite having done my CA, I went to ISB and I put that money, and I know it's an expensive education, and I put that money and I took that bet on myself, and I think it's really paid off in a lot of ways. And even today, when I think of my work, I like to not define myself as I'm a CA or I'm a financial advisor. I think you never know, 5 years later I could be a spiritual guru, because I would love to look at myself as a malleable personality, and my interests would change with time, and I would hope I can keep changing my profession with time. Is there a Ferrari in the offing? Yeah, absolutely. Then we can say, the monk who sold his Ferrari. All right, Sarthak, thanks so much for taking the time. Pleasure having you. Big round of applause, please. What an insightful session. Give a huge round of applause for each and every guest and our lovely anchors as well. So, love it. And now we are moving on to our next session, and that's also going to be as interesting as this one. Today's icons are the ones who are building dream companies. They're not only chasing the jobs. Our next guest turned a simple idea into one of India's fastest growing mobility platforms. With Rapido, he's not just solving last mile connectivity, well, he's creating opportunities, changing the way India moves and inspiring a whole new generation of founders. Well, his journey is proof that when you have clarity of vision and the courage to take risks, the road literally opens up for you. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the co-founder of Rapido, Pavan Kuntupalli. A huge round of applause. We want him here on stage, but with a lot of swag. So the man knows how to make an entrance. Give him a big round of applause, please. Grab a mic. See, we spoke a little bit about financial freedom, but increasingly a lot of young people are thinking about starting up. And I think the gentleman who's sitting with me kind of set the tone for that. He proved that it is possible to do. He did it back in 2015, but Pavan, I want to talk about what came before that, right? IIT student or IIT graduate, you had the world in front of you. In fact, you got a job, and then you quit that and you decided to take the entrepreneurial journey. Yeah. What pushed you? So, I think this is in my second year of my university. I came across a short book, an excerpt on Dhirubhai Ambani. And I myself am not a reader, so as to say, I don't read enough books. But I ended up completing that book, and my major takeaway from that book was, if one man decides, he can change the path and the fate of a nation. And I'm talking about a person who has put a 500 rupee phone in the hands of a farmer back when a normal phone cost 40,000 bucks. People called him crazy, and he did it. I think when I read that book, I literally had this one feeling that I need to do something. I need to do something that can impact hundreds of millions, if not a billion lives. Okay, so it's a powerful thought, everybody, and you can relate to that. But, it wasn't an easy journey. You had the decision to quit your job. You had 7 failed attempts at starting up. What was the first one? What was the seed of the idea? Yeah, so definitely. So when I was starting, all I had was this inspiration and this raw motivation. Kuch karna hai, I need to do something.
Honestly, I did not know what to do. I did not know with whom to do, where to do, any clarity. So I started with the known parameters. My father was into real estate. So I said, okay, let me do something, let me try my hand at real estate. And I don't know if a lot of you guys are familiar, a lot of traditional real estate is people dressed in white and white, you know, having a lot of bling, and them trying to, you know, play with money and buying land, selling lands. And here was a young 22-year-old saying that, hey, can we use technology? Can we use a fractional? So I started with the concept of fractional ownership of homes back in 2012. It's picking up now. It is picking up now. Thank you. You were a little early. Okay, so that was the first one that failed. You want to talk about a few others that seemed like great ideas at the time? Oh, I think everything seemed like a great idea until I failed. So I got into manufacturing tiles, Gujarat, Morbi. For houses? For houses. Okay. Very unorganized industry, very few brands. Lost not just my time, but also a lot of my dad's savings, my own savings. Okay. Then I got into marketing. I thought, okay, let me do something with something that I have some education in. So went into marketing, failed terribly. Then I went into payments. So back in the day, there was this infrastructure called IMPS. We said we'll discuss. It still exists. It still exists, yeah, it still exists, but it has been renewed like UPI, and a bunch of platforms are doing amazing work on top of it. Then we went into logistics, and my 8th attempt is Rapido. 8th attempt. So let's talk about that, right? In 2015, you had some push. Something must have... Did you not get a cab? Is that it? So one of the key pillars for our journey, not just mine, all the founders' journey at Rapido was to create impact. And when we were doing our previous startup, which was into aggregating trucks, logistics, while we were doing great business, one thing that wasn't feeling right is the impact it was creating. We were raking in great revenues, our investors were happy, our team was happy, but then something wasn't feeling right. And it's at that time then we took a conscious call. So all the time, for a lot of people who do not have an idea over here, I'll tell you, we call ourselves entrepreneurs by choice. We did not have a flash moment, you know, or I was taking a shower and I got a eureka moment. None of that stuff. It wasn't. We literally went and figured out what all problem statements we can solve, what are our strengths, and if we have the guts as well as the skills to do it. And that's how we pursue. So you had you had everything drawn up, you had a chart flow, and you decided, okay, you probably discounted a lot of things at that time. Maybe you'll take it up in the future. But the question is, did you have a safety net? Your dad supported you early on. I think the safety net that we had, definitely, I had the privilege of having great education, a great degree. I had a bachelor's from IIT. And I have 2 supporting parents and a very supporting family. And I think I had enough affordability to have 3 square meals a day. And I believe that is a safety net enough for any youth or any individual to go out and take a risk. Okay, there must be a lot of people in the crowd that have ideas that they want to execute at some point. Maybe they're dreaming about it now. You faced 75 rejections for Rapido funding, right? I don't know if a lot of people know that. How did you deal with the 70th and the 75th? Because it probably got tougher as you went. I think very recently in another event I was telling, I don't think any of these rejections are easy. But I remember this dialogue from this movie. Why do we fall? So that we can learn to pick ourselves up. And I think every time we failed,
We took time, but we eventually picked ourselves up. We learned where did we fail, and then we moved on. Okay. Talk about what you're planning right now. You've already launched in several cities. What's on the anvil? Is there something that you'd like to share? Definitely. So one of the ambitions at Rapido, and I'm sure a lot of Mumbai cars would relate. One of the fascinating things about Mumbai is a lot of Mumbai cars say, I want to catch that 827 local. I want to catch that 943 local. It is so much so a part of their life, right? We want Rapido to be that. As of today, we are currently in 400 cities, expanding to 1,000 cities. We are currently the largest player in the two-wheelers and three-wheelers, about to become a leading player in the four-wheelers. Okay, and I wish you all the best with that. Thank you know you. what? I've got in my hand, I've got Rapido Fire. That's what I have. And I have 8 questions for Pawan. Pawan, I'm going to start this off. And you got to think quick, yeah? Okay. The first one, if you weren't a startup founder, what would you be? I think I would be in a garage tinkering with some other idea, probably in fintech. Okay. Which Bollywood actor should star as Pawan in a Rapido biopic? Oh, we thought about this a lot. Ranveer Singh. Wow. Okay. If you could launch your service overnight anywhere in the world, which city would you pick? Sorry? If you could launch your service overnight in any city in the world, which would you pick? Definitely a city in India, Mumbai. Okay, there you go. Biggest inspiration in the corporate world? Dhirubhai Ambani. Okay. When was the last time you used a peer's service? Every day. I mean, that's the way you get to know how to improve. There you go. Order in or eat out? Eat out. Socialize. You know why I'm asking. Okay. If you could swap places with any Indian startup founder, who would it be? Alive or dead or? Alive or dead? Dhirubhai Ambani. Okay. Yeah, he was a startup founder. All right. If you could time travel to the day before Rapido's first launch, what advice would you give yourself? Gear up for the ride. It's actually a very crazy ride. Okay. And you faced so much rejection over the course of your life. I think I've asked this question already, but I will ask you, what was your hum karke dikhate hai moment? I think it's back, like, we were just about to pivot. And, you know, I was a IIT graduate. After a lot of show, I was out of job for 3 years because I was just trying a bunch of business ideas. And then I was taking a walk with one of my friends, and he said, "You are wasting your potential." And then I told him in a still cocky manner, I told him that, "Hey, you are sitting beside me, but I am in the driver's seat. I am able to see the road and you are not able to." And I had to prove it right. See, I'm pretty sure Ranveer somewhere is taking notes already. All right. Thank you so much. And pleasure having you. Thank you. Big round of applause. हर युवा के दिल में एक सवाल है, what do we really want? Jobs, justice, या just जश्न? Our next guest has spent years shaping policies that speak directly to young India's aspirations. As the working president of the BRS and a leader who has put innovation, investment and infrastructure at the heart of governance, he is often called one of the most dynamic political voices in the country today.
From making Hyderabad a global tech hub to championing entrepreneurship and skilling, he has shown that politics can actually be about solutions and opportunities, not just about speeches. And today he is here to decode what Gen Z truly wants and how leaders can respond to those ambitions. So please welcome K.T. Ramarao. Music, please. Thank you. I've never had music ever played it when I was introduced, but thank you very much for that. Thank you, guys. Good evening. My name is K.T. Ramarao. I am a politician. I know most of you loathe politicians, most of you hate politicians. So I'll try and keep this simple, try and keep this as brief as possible. I come from Telangana. I worked as a minister for about 10 years. From 2014 until 2023. Prior to joining politics, I've had a bit of exposure working in the Western world. I have 2 master's degrees, one in biotechnology from Pune University, and one more in business administration from City University of New York. Then I worked in the corporate world for about 6.5, 7 years, came back to India, worked here for 2 more years, and then eventually joined the statehood agitation for Telangana in 2006. For about 8 years, I was part of this public movement for statehood for Telangana. In 2014, after the state of Telangana was formed, we were given a chance to serve the people, and I became a minister for the first time in 2014. For about 10 years, I've handled multiple portfolios, including technology, commerce, industry, urban development, municipal administration, handlooms, etc., etc. So why am I here? I'm here to share some of my thoughts, some of my learnings, and also to hear from you on what you want from politics and politicians and probably governments as well. I wanted to start off by saying 2 things. One, when I look around, when I see you, I see a lot of restless people, trigger happy, quick to go on to the digital world, wanting to put out a statement, wanting to put out a post a story, set a reel, restless, young, ambitious, bold. That's Gen Z, if we have to quickly sum up. You're truly the DIY generation, not the do-it-yourself, but disruptive, imaginative, absolutely youthful generation is what Gen Z is all about. I would like to believe that my state, Telangana, is also a Gen Z state. Wanted to start off by saying 3 things. One, when we start looking at events like this, thank you NDTV for this wonderful gathering, because this is a unique opportunity for lawmakers, for politicians to interact, to mingle, to understand what Gen Z really wants. When I look through this room, I can think of 3 Gen Z journeys. One, of course, my children. I have a 20-year-old and a 16-year-old. So obviously, both Gen Z and both of them, of course, grill me more than probably what Padmaja would, more than what any journalist could on several issues of social relevance. 2, of course, I meet a lot of youngsters as part of my job. I interact with a number of youngsters. I talk to a lot of youngsters. I keep getting fresh bout of energy every so often when I speak to them. 3, my state, which has done tremendously well in the last 10 years. Gen Z has truly conquered, has truly led the charge on the digital mediums. You guys have literally taken the world by storm, across the world. I'm not even talking India, I'm not talking my state. One of the things that I can think of from my state, where Gen Z had a positive impact by way of social media activism, was as recent as about 3 months ago. In my state, in my city, Hyderabad, when the government of Telangana wanted to sell about 400 acres of forest land, Gen Z, in the form of Hyderabad Central University students, led the charge and started demanding answers from the government on why they're selling a valuable piece of urban lung space, which is also a demarcated forest.
went on for a while. Eventually, even though the government was non-responsive, this apex court of India, the Supreme Court, responded. Supreme Court came to the rescue, and eventually, because of Gen Z's media activism, social media activism, 400 acres of land in Hyderabad was saved purely because of that activism. Now, does that mean mere social media activism, does that mean mere social media presence is enough? No. I think Gen Z also has to step in, understand that this is your moment. This is your moment to seize. Why am I saying that? Because as the world is getting older, India is getting younger. India's median age today is 27. More than 50% of India is less than the age of 35. This is your time, this is your opportunity under the sun. This is the opportunity that you can seize. In case you're thinking this lecture is getting really boring, let me give you 3 examples of how generations in the past, youngsters in the past, have redefined their country's destinations. In 1985, China and India. You all know China, you all use Chinese products, I'm sure. China and India both had a similar sized economy in 1985. But today, if you look back, exactly 40 years later, India's economy is around $4 trillion, whereas China is almost $20 trillion. They're 5 times bigger than us. In mid-1980s, we were similar in terms of GDP size, in terms of per capita. In fact, China was lower. They were $300, we were $500. And today, China is about $13,000 of per capita. India is only $2,700. What happened? Where did we miss the bus? How did they race past us? I think one simple thing. They were focused on the best. They wanted to beat the best. They were focused on the US. They were wanting to be better than Europe. Whereas India, we were happy comparing ourselves to Pakistan. We were very busy comparing ourselves to Bangladesh. And we were thankful that, we were growing. That's all. We didn't care that others were growing faster, others were doing better. The second example I'd like to give you is that of Japan. I'm sure all of you have Japanese products at your home, possibly one of the cars, one of the electronic goods you use, etc., etc. Now, Japan, for those of you who are probably familiar, you're Gen Z, so you're born post-97. 50 years prior to that, in 1945, Japan actually is the only country on planet Earth which had experienced a nuclear attack. 2 Japanese cities were bombed, Hiroshima and Nagasaki. Lakhs of people died in World War II in Japan. But what did Japan do? Did it lose its hope? Did it give up? Did it throw in the towel? Japan has so many odds stacked up against it. In terms of size, Japan is only 1/9 of India. In terms of inhabitable space in the country, inhabitable as in human inhabitable, only 30% of Japan is inhabitable by humans. 70% of the terrain is inhospitable. And also, only 11% of Japan is actually good. Japanese land is good for cultivation. Almost 89% is not good. And also, Japan is frequently rocked by earthquakes, volcanoes, tsunamis. So there are natural disasters and then man-made disasters like atom bomb. But Japan didn't give up. After 1945, it only took Japan 23 years to rebuild from a disaster, from devastation, to absolute economic miracle. And by 1968, in less than 23 years, just by sheer innovation, industrialization, just by culture and mindset, Japan has become the 3rd largest economy in a span of 23 years. And in about another 20 years, Japan has become 2nd largest economy. And even as we speak today, it is the 4th or 5th largest economy in the world. And the third example that I would like to give is that of my state, Telangana. I know all of you are trigger happy, all of you have butterfingers when it comes to cell phones. May I request all of you to pull out your phones for a second? Please.
Please open Google. Please type in the world's largest lift irrigation project. World's largest lift irrigation project. And I think you would find the answer. That is, can anybody tell me, please? Anyone? Kaleshwaram project in our own country, in my state, Telangana. It's not India's largest, it's the world's largest project. May I also request you, bade bhai 2 minute ruk ja yaar, 2 minutes. May I also request you, world's largest Amazon campus. You all use Amazon. World's largest Amazon campus. Where is it? Which city? Can you please say it loud? We are in Bombay. Hyderabad. Thank you very much. And the third question I'd ask you, world's largest innovation campus. World's largest innovation campus. Anybody? T-Hub, Hyderabad. So I just named 3 things which are world's largest. World's largest lift irrigation project is in Telangana, India. World's largest Amazon campus is also in Hyderabad, Telangana, India. And world's largest innovation campus is also T-Hub, Hyderabad, Telangana, India. If Telangana can do all this in the last 10 years, why can't the rest of India do it? If China can beat India and become 5 times larger in about 40 years, why can't we do the same? And if Japan can recover from a devastation of a nuclear bomb and become the 3rd largest and 2nd largest economy in the world, why can't we do it? That's the question I'm asking you. How long are we going to be content being the CEOs of the world? We take great deal of pride in Sundar Pichai, in Satya Nadella, Arvind, Shantanu Narayan, and many others who have done very well across the US. But name one Indian product which has truly been benchmarked by the rest of the world as the best in the business. Not one coming from India. If the co-founder of Perplexity, Arvind, can be an Indian guy in the US, why can't one of you in Gen Z from India, 37.7 crore Gen Z Indians, why can't you come out with something truly path-breaking? I'll leave you with 3 parting thoughts. I know Padmaja is looking at me because we have also some chat out there. 3 parting thoughts. What India needs today from Gen Z and what India needs from governments across the country is 3 things. And also from the industry is 3 things. India does not have the luxury of leapfrogging. हम बार-बार सुनते रहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि 2047 तक इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाना है. India does not have the luxury, अगर बना है 22 साल में, we don't have the luxury of leapfrogging. We have to pole vault. We cannot leapfrog. The second thing I'll tell you, India does not have the luxury of inviting venture capital. We need our industry to open its purse strings. We need our industry to be adventurous. What India needs is not venture capital, but adventure capital. Also from Gen Z, what we need, what India needs to truly become first world country is not for you to come out with the next Amazon, not for you to come out, become the next Uber. I think best practices are dime a dozen. What we need from young Indians, what we need from Gen Z is next practices. We need you to redefine the world order. We need you, along with the governments and the industry, to work on next generation practices, next breakthroughs for the rest of the world. Because like I said, while the world is getting older, India is getting younger. And today, the opportunity that Gen Z has in India, there's never been a better time. Because governments are attentive, industry is attentive, capital is not a concern. You're only limited by your imagination, you're only limited by your ambition. And I'm sure with more and more such events, many of you will become innovators, many of you will become disruptors, many of you will truly come out with world-class products. I was just listening to Pawan, who's also from Telangana, by the way. Thank you for that that's enlightening inputs. Once again, thank you NDTV Yuva for giving us this opportunity. Truly delighted to be here. Cheers. Thank you.
you had restrained them for so long, it's almost... I know. Thank you, boys. Appreciate it. No, so now in this session, we are going to do a few Q&As. If you like the answer given, please feel free. Go for it, Mr. Drummer. I've never had this, so I'm a bit confused. Okay, so since you said that there is a lot of scope yet for a Gen Z ecosystem, and you've done a lot of, three options statements, let me start by asking you, if you were to choose a state which has truly developed a good Gen Z ecosystem, would it be Maharashtra, Telangana, or Gujarat? You know my answer. Okay, let's leave out Telangana because you'll be my biased. fiduciary responsibility, of course. Karnataka, Maharashtra, Gujarat. I'd say each of them have their strengths, but I'd say for Gen Z, I think Bangalore continues to remain the favorite. Without a question, I think it beats Maharashtra and Gujarat. I think most of you are Mumbaikars, you'll hate me for saying this, but Bangalore wins hands down, even though I'm sitting in Mumbai and talking to you. What are we saying about this Mumbai? Best Gen Z ecosystem is in Bangalore and not in Mumbai? Up your quotient, you can certainly compete with not Bangalore, but in fact, Mumbai has the ability to beat Silicon Valley. Why not? Okay. What does Mr. Drummer think about it? I think he's a Bangalore guy. Thank you. Okay. Who's a good Gen Z neta, according to you? Is it Mr. Modi? Is it Rahul Gandhi? Is it, and I'm not going to mention anyone from your party or you, is it Revant Reddy? Well, I'd say सबके सब बूढ़े हैं, तो तीनों भी Gen Z नहीं है. सारे के सारे बूढ़े हैं. Gen Z is beyond 97, yeah. They should have been born beyond 97. But you can be a neta who appeals to Gen Z, no? Say, put it that way. Then I think I'd say, right now, I only have 3 choices. Yes, only 3 choices. Only 3? Only 3. Caught between devil and deep sea. I don't know who to choose. So I'll probably play it safe and say Narendra Modi. Okay, if you had to give a 4th option of your own, who would you say? I think in our country, Yes, in India, our country, yes. I'd say that appeals to Gen Z. Who you think has got the pulse of Gen Z right? My friend Conrad Sangma, the Meghalaya Chief Minister, he plays very good guitar. I think he appeals to Gen Z more than any other politician because he's a very, very cool politician. I think You want to take a shot at it? I mean, if you want to be cool and acceptable. Unfortunately, I can't. I'm very bad. Okay, tell me this. Why is it that politics, even now, despite the fact that, you've got young people like yourself, people who've been educated abroad, people who are bringing a lot of, a very corporate background into politics, still has a very old boys club sort of image. Why is that? I mean, I think the question goes back to what you were saying a few minutes ago, the choices we have today. Unfortunately, a few, but it can be changed because especially after the advent of social media, we see unfiltered, unedited, direct, unadulterated feedback coming to us. Because otherwise, politics is not only an old boys club, politics is also a club of psychophancy and psychophants, unfortunately. So with social media's advent, I think the kind of feedback we've all been getting, the kind of direct, unfiltered feedback we've been getting, is truly going to change India's politics in the next 10 years. That's something I truly believe. So let us talk probably another 5 years and 10 years from now and you'll realize that politics will have a lot of these youngsters also joining in, either directly or indirectly. I don't mean not everybody will become an MP or MLA, but at least they'll start participating in the process. They'll start taking more active interest because end of the day, politics decides your future. I mean, आपके मोहल्ले में रोड बनना है कि नहीं, आपके यहाँ जो एक मोहल्ला क्लिनिक बनाना है उसका मतलब किस कदर बनाना होगा, कैसे बनाना होगा. All these things ultimately, I think, have to be determined by us participating. Today, I don't see urban voters and Gen Z really participating in voting, but I'm hopeful that once they start participating actively, things will change. It won't remain an old boys club. We'll have a lot of infusion of youngsters as well. This immediate feedback, social media feedback, can also be a double-edged sword. It can be enlightening, but it can be rather nasty. Has there been something which you thought was just like, okay, great feedback, but was really raw, honest, and perhaps a little cruel? Yeah, when I give a terrible speech, I'm told directly कि आज का speech बहुत घटिया था, बहुत सीधा बोल देते हैं. So that's all right.
It's perfectly fine because see, it's better to be told directly onto your face कि कुछ गड़बड़ है, rather than just living in your own fool's paradise thinking everything you do is absolutely brilliant. So I would any day want unfiltered, fresh, raw feedback and get unadulterated content directly from the my voters, my. What did you say so wrong in that speech कि बिल्कुल घटिया ही बोल दिया किसी ने आकर के? नहीं पता नहीं यार किसी को पसंद नहीं आया होगा होता है ना. I mean not everything. See, I just said Bangalore is a better ecosystem. I'm sure Mumbai guys wouldn't like it. So when somebody sees that and especially media is very notorious for playing only those clips that they like. I'm not saying you NDTV, but I'm just saying So no, what wait till you go and check your Twitter feed. There'll be some people there saying, "क्या घटिया बात थी ये." शायद कुछ Mumbai होगा. is way better than this. शायद even my kids actually don't spare me. So when I say something which isn't very interesting or which is a bit cliched, they're on my case. So. What is the most honest thing you said your children grill you the most? What's been the most cruel thing that your children have said to you? Cruel? Cruel. Because children can be cruel. And they're unfiltered because they're your children, so. Absolutely. Well, last night I was asking my daughter, she's 16. So I was asking my daughter, what do Gen Z kids want to, want a politician to say? She simply said, well, she was being kind to me personally, but she said, I don't think Gen Z really likes politicians, is what she said. Like, obviously, as you can see. So therefore, it's okay, I understand. But what they need to understand also is that everything that they do right now, or everything that they do from the time they get up till the time they go to bed, including GSTs and everything that affects their life, day-to-day life, are the decisions taken by politicians. So they better start getting involved. They better start paying attention. You spoke about the journey of your party. Obviously, it was born of a revolution. Yes. And at the forefront was your party, the TRS at that time. But the lifeblood was the youth of Telangana, the youngest people then. What happened? How is it that you stormed into power 10 years ago, 11 years ago, and then equally unceremoniously, if I may use the word, Not really. you were ousted from power? No, not Why? really. I'll tell you why. Did the youth reject you? No. Did you not 10 years. figure out what the youth Gen Z of Telangana wanted? I'll tell you what. 10 years we were in government, we've been given an opportunity to serve. We did really well. And when we lost in 2023, it was not unceremonious. The difference between the victor and who came runner-up, which is us, was hardly 1.8%, which is about 4 lakh votes. There's nothing unceremonious about a loss in politics. Ultimately, end of the day, you have to take it in your stride. You have to reflect. You have to introspect. You have to come out with, what probably course corrective steps that you have to do. So one of the reasons could be that the youngsters in Telangana probably did not get what they want, possibly in the sense of the number of jobs we created in private sector versus the number of jobs that got created in government sector. We did not publicize well. And on the other hand, you had my opponent, Congress, which literally promised the moon. They promised 10 grams of gold in every marriage to a young lady's family. They promised scooties to young women who would go to college. They promised the moon, literally. I mean, it would probably take the budget of 4 states, 4 southern states, to deliver on all the promises that they made, but people bought into it. That's why the difference was 1.8%, and we lost by a whisker. And I don't see it as a unceremonious loss whatsoever. Okay, but this was good communication. I think perception management, politics is about 3 kinds of management: people management, perception management, and also alignment of expectations, expectation management. So I think we failed possibly on one of the 3. So which politician, according to you, does the best in perception management? Revant Reddy, I'll give you options, or you want to go straight off the bat? I think I'll go with Barack Obama. Play it safe and go with Barack Obama. No, it has to be based in India. Because you're reeling me back into Indian politics, and you're pitting one of my opponents against the other. So I really don't. No, but the people here, they want to hear from you about Indian politics because this is what they engage with. ठीक. So. बताइए, choice बताइए. अच्छा, choice. Perception management, Arvind Kejriwal, Revant Reddy. Can I give more than 3 choices? 5 ले लीजिए. Narendra Modi, Rahul Gandhi, and I think I'll go with 4. See, I'll tell you what. India में मैं 40 साल से मैं politics follow कर रहा हूँ और देख रहा हूँ closely.
Indian politics is about, Indian elections are about 90% of the time about rejection. अगर आप पसंद नहीं तो किसी और के पास जाएंगे. Ultimately किसी को हटाना है तब जाके दूसरी तरफ देखेंगे. सिर्फ 10% of the time people look for a new hope, new wave. That which happened in the case of TRS, which happened in the case of AAP, which happened in the case of BJP, etc., etc. Otherwise, it's a status quoist kind of a politics. So, in terms of perception management, if you ask me, in the last 11 years, I'll confine myself to the last 11, 12 years, I'll say that Prime Minister Modi has done exceptionally well, even though, if you ask me in terms of what he has delivered to the nation, not much, but in terms of perception management, in terms of how, he gave this impression that he's done enough and more. Because, let me remind you, he promised that India will become a 5 trillion economy by 2022. Did not happen. He promised a home to every poor in India. Did not happen. He promised a null to every home. Did not happen. He promised 2 crore jobs to every year in the last 11 years. Did not happen. But he still continues to win. That means he's doing something right, which I believe is perception management and probably a little bit of media management as well. Really? 11 years purely on perception management? I would say so. And primordial emotion management, if I may also add. Emotional management? Primordial emotion management. Primordial emotion. Would you care to elaborate on that? Well, simple. Ultimately क्या होता है ना, जब मैं चाइना की बात करता हूँ, जापान की बात करता हूँ, अगर कहता हूँ कि अगर चाइना ने 40 साल में हमसे 5 गुना जो ग्रोथ दिखाया, इंडिया में क्यों नहीं होता है? सिंपल सीधी बात है. चाइना तो फोकस है यूएस पे, उसको चाहिए कि दुनिया में बेस्ट बनना है, बट हम किस चीज़ पे फोकस्ड है? मंदिर मस्जिद वाली झगड़ा में कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे भाषा बोल रहा है, etc., etc. So what happens is, when you bring these primordial emotions to the fore, and that takes center stage over everything else, none of the promises that you made have worked, none of the promises that you made have been delivered, but still you win elections because election के time आपको याद दिलाया जाता है 80, 20, etc., etc., and that पर उन्होंने अगर 11 साल तक ये मैनेज किया है, this could be your हम करके दिखाएंगे moment. See, ultimately, I'll tell you what. End of the day, you can fool all the people sometimes. Some people all the time, but you can't fool all the people all the time. So there will come a time when people will see through all these perception managements and media managements and will pick the right choices. Now you're out of power. I want to ask you a final question. When did you have your, that moment of reckoning where you said, ये हम करके दिखाएंगे moment, you might be out of power, but you will be able to bounce back? Well, 2 things. One, today if you look at Telangana politics, I already see the triple R playing. Not triple R the movie, but triple R, factor. Recall, regret and revolt. Recall is already happening. People are already recalling how better our government was vis-a-vis the current Congress government. Regret is also being seen that गलती हो गई, फिर इनको वापस लाना है. मैं उम्मीद करता हूँ 1-2 साल में रिवोल्ट भी शुरू हो जाएगा और 5वीं साल में हम लोग वापस आ जाएंगे. Revolt? Revolt as in not. I hope you are not telling people to hit the streets कि Gen Z रास्ते पे आओ. Not like Gen Z and Nepal. No, I'm not talking about that. That might also happen if governments actually fail. I'm also forewarning you on that. Because what happened in Nepal recently was nothing but suppression of democracy, was suppression of the voice of Gen Z. Initially, even the media mocked when the Gen Z was protesting. They said they're protesting internet disruptions. But eventually, what were they protesting? They were protesting for their future. You're saying a Nepal-like scenario can happen in India? If governments continue to fail them, if governments continue to fail the aspirations of people of India, why not? Yes. Do the people here agree that we could have something like this happening in India? Well, you never know. Come on, Gen Z, let's be heard. कितने लोगों को लगता है यहाँ पे होगा Gen Z? नेपाल जैसा? How many people think नहीं होगा? Well, let's see. The night is still young, let's see. Okay, let's hope for the best. The night is young, but K.T. Rama Rao, thank you very much for having come here. Thank you very much. Spoken to us here at NDTV Yuva. Cheers, Thank you. You're playing it safe. Do you want to take a last shot at the guitar? You still have a shot at being young. I really have. that we have here at NDTV Yuva. जोरदार तालियां.
Before we move on to the next session, again, I would want to warm you guys up. So repeat after me. Say why. Say you. Say we. Say A. We are. We are. Louder this time. We are. Lovely. So since we are ready for the next session, अदिति, ये अभी जो हमारी अगली मेहमान आने वाली हैं बहुत कम टीवी इंटरव्यूज देती हैं और हम लकी हैं कि वो यहाँ पर पहुँच गई। यस, इस मंच को एनडीटीवी युवा के मंच को चुना गया है और आज हम बहुत सारे उनके सीक्रेट्स और बहुत सारी उनकी जो जर्नी है उससे उनकी जो लर्निंग्स है वो हम सीखने वाले हैं। बिल्कुल, तो बताते अपने ऑडियंस को कि लाइफ के टफेस्ट मोमेंट्स को फेस करके उन्होंने अपनी आवाज़ वापस पाई और आज वो अपना नेक्स्ट चैप्टर आपके साथ शेयर करने आई हैं। शी हैज टर्न्ड हर स्टोरी into her strength, her silence into her voice, and her struggles into stepping stones for a new chapter. Yes, for millions of young people, she represents resilience, reinvention, and the courage to say, this is my story, my voice, my next chapter. By now, you have guessed her name. Ladies and gentlemen, please welcome Riya Chakravarti. Joining her is our colleague, Shubhankar Mishra. Over to you. हरिवंश राय बच्चन साहब ने कभी कहा था कि गिरना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर, ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। सो वेलकम रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, क्योंकि आप नॉर्मली इंटरव्यूज़ करती नहीं हैं और आज जब मिली हैं तो आज चेहरे से, हाव भाव से, बातों से आपको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, पहली बात तो बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी हैप्पी टू बी हियर आप सबके साथ। एंड औकात की बात हम ना ही करें तो मेरे लिए बेटर है। बट देखिए, मीडिया वालों ने आपको बहुत परेशान किया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आपको एक जजमेंट आया जो आपके फेवर में गया, क्लीन चिट मिली, तो मुझे लगता है कि उस परेशानी के बाद थोड़ा सा हंसा देते हैं आपको। इससे पहले कि मैं भारी भरकम सवाल आप पर डालूं जो लोगों के जहन में है, एक छोटा सा रैपिड फायर रखा है मैंने, ताकि थोड़ा सा आपकी मुस्कुराहट की वजह मीडिया वाले ही बने। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा कि मीडिया वाले भी हंसाएंगे, पर लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर सेगमेंट है, कुछ फनी क्वेश्चंस हैं जिसमें इंटेंशन बड़े प्योर है, सवाल थोड़े से ट्रिकी है। तो अगर मान लीजिए जेल में कोई फिल्म बन रही हो और रिया चक्रवर्ती उसकी डायरेक्टर हो, तो कौन सा हीरो और हीरोइन से कास्ट करेंगे? देखिए, ऐसी बदकिस्मती मैं अपने किसी भी कॉलीग पे नहीं चाहूँगी और ये फिल्म इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कुछ हो नहीं सकता है। और एक्चुअली आपको कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी हीरो और हीरोइंस जेल होके आ चुके हैं। हम लोग तो रियल लाइफ में लोग जा चुके हैं। वैसे भगवान ना करे किसी को जेल जाना पड़े, लेकिन जब वहाँ थे तो सबसे ज़्यादा मिस क्या किया? घर का खाना या फिर वो नोटिफिकेशन जिस पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो आप? नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिस करते हो। आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि लाइफ में क्या क्या आपके पास था जब आप सोच रहे थे कि आपके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि आपके पास स्विगी है या इंस्टाग्राम है या मोबाइल फ़ोन है या मम्मी पापा जिनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो कि क्यों परेशान करते हो, क्यों पूछते हो कितनी बार खाना खाया कि नहीं। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। पर सबसे ज़्यादा मैंने मिस ऑब्वियसली अपनी फैमिली को किया उस वक्त पे। मैंने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा था कि जेल जाकर क्या सीखा आपने? उन्होंने कहा कुछ सीखने नहीं गए थे, बट आई एम श्योर समय सिखाता बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, जेल जाके आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हो। क्या अंतर है उस लड़की में जो जलेबी में हमें नजर आ रही थी, बिंदास सी, बेबाक सी, और आज जिस रिया चक्रवर्ती के साथ बैठा हूँ मैं? अंतर तो एक्चुअली पर्सपेक्टिव में है। एक बार आप जेल चले जाते हो ना, तो आप का नज़रिया बदल जाता है ज़िंदगी को लेकर। आप एक तो लोगों के बारे में, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में सोचना छोड़ देते हो, क्योंकि अगर वहाँ सोचोगे तो कंफर्म डिप्रेशन है, राइट। लोग तो अच्छा नहीं सोच रहे हैं किसी के बारे में जो जेल गया है, राइट। तो आप पब्लिक परसेप्शन से हट जाते हो। फिर आप सोचते हो कि अच्छा, पब्लिक जो मेरे बारे में सोचती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या इम्पोर्टेंट है? और आप अपने अंदर ढूंढने लगते हो कि आप कौन हो।
आप किस तरह के प्राणी हो आपको खुद पता नहीं रहता है। मैं 27 की एज में गई थी, उस वक्त आपको ये आइडिया नहीं होता है हु आर यू एज अ पर्सन। धीरे धीरे आप जानने लगते हो कि अच्छा मैं सिर्फ किसी की बेटी या कोई एक्ट्रेस या अपनी अगली फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक लड़की भी हूँ। तो उस डिग्री में जो देखने का नज़रिया है वो बहुत बहुत 180 डिग्री शिफ्ट रहता है उसमें। दूसरी बात, आप खाने की वैल्यू बहुत ज़्यादा करने लगते हो। घर का दाल चावल भी अब पिज़्ज़ा से कम फील नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो उनका मायना बहुत बढ़ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ज़रूर पता चल जाता है कि आपके 3 या 4 दोस्त ही हैं इस दुनिया में अगर आप लकी हो, और बाकी सब आपके दोस्त नहीं हैं। पहले मुझे लगता था मेरे 200-300 दोस्त हैं, किसी को एक बार मिलने में लगा ही इज़ माई फ्रेंड, या वो मेरा दोस्त है, शी इज़ माई फ्रेंड। पर फिर जेल जाने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं। बट जैसे आप कई सारी फिल्में करके जेल गए थे, आप हीरोइन थे, अब जब जेल के अंदर एक हीरोइन जाती है, क्या सबसे अजीबोगरीब सवाल लोगों ने अंदर पूछा? डांस करके बताओ ना। आपने शायद किया भी था नागिन डांस, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ जी मैंने किया था। जिस दिन मेरी बेल हुई थी, हाँ उस दिन मैंने डांस किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि इन लोगों से पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी, और अगर इनको 2 पल की खुशी में दे पाऊँ तो क्यों नहीं। क्योंकि ज़्यादातर अंडर ट्रायल प्रिजन में जो लड़कियाँ होती हैं, जो महिला जेल होता है, काफ़ी हद तक काफ़ी लोग इनोसेंट होते हैं तो, और होपलेस भी होते हैं, क्योंकि उनके पास तो लॉयर भी नहीं है जो लड़ रहे हैं, उनके ऊपर मीडिया का ध्यान भी नहीं है क्योंकि कुछ स्कैंडल नहीं है, कुछ वाव नहीं है, तो फिर उनको कौन निकालेगा। तो उनको 2 मिनट की राहत के लिए मैंने नागिन डांस किया था उनके साथ। आप डांस में, नागिन डांस में प्रो? वो लोग मुझसे ज़्यादा प्रो थे। क्योंकि जो हमने सुना वो ये सुना था कि जेल के अंदर 28वें दिन, आप 27 साल के थे, 28वें दिन आपसे कहा गया कि नागिन डांस चाहिए, और बड़े देसी अंदाज में आपने नागिन बीट पर वहाँ पर जी। और मैं ये सोचता रहा कि यार 28 दिन में जेल रहने के बाद क्या मेंटल स्टेट होगी कि इंसान डांस करते हुए निकला है। एक अलग सी लिबरेशन भी होती है, क्योंकि जेल में ना सब बराबर होते हैं, कोई किसी की सैलरी नहीं होती, सबका एक यूटी नंबर होता है, आपको नंबर से बुलाया जाता है, आपका नाम भी नहीं होता। तो कोई सोसाइटी, कोई हायरार्की, कोई BMW, कोई मारुति वाला एंगल नहीं है इसमें। तो सब बड़े जो हैं वो हैं, जो बोलना है बोल देते हैं। और मेरी एक डायरी होती थी जेल में, जिसमें मैंने पहला लाइन जो लिखा था वो ये था कि पीपल इनसाइड जेल आर वे बेटर देन पीपल आउटसाइड। और आज जब मैं उसे पढ़ के देखती हूँ मुझे लगता है कि हाँ ये सही था, पीपल इनसाइड जेल आर वे बेटर देन पीपल आउटसाइड। क्या ऐसा रहा जो आपको ये एहसास हुआ? अंदर वालों से अच्छा क्या लगा? अंदर ना सोसाइटी नहीं है, तो सोसाइटी नहीं है तो कोई रूल्स नहीं है, और सब ने लाइफ देखी है और लाइफ के दुख दर्द देखे हैं, सब अपने फैमिली से दूर हैं, होपलेसनेस ने होप चाह चुकी है, पता नहीं बाहर आएंगे, 7-8 साल से भी लोग अंदर हैं। तो जो खुशी है ना, खुशी को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। एक समोसा भी उनके लिए ऐसा है कि $1 बिलियन का चेक मिल गया हो। एक पब्लिक हॉलिडे में कुछ एक गाना बज गया जेल में तो ऐसा है कि मतलब हनी सिंह का कॉन्सर्ट देख लिया हो। तो ऐसा होता है। एंटरटेनमेंट होता है अंदर? एंटरटेनमेंट कई तरह के होते हैं, कुछ मैं बताऊंगी नहीं लेकिन कुछ मैं आपको बता सकती हूँ। एंटरटेनमेंट एक जेल की लाइब्रेरी होती है, आप किताबें पढ़ सकते हैं। मेरा काफ़ी वक्त सॉलिटरी में था क्योंकि क्वारंटीन था उस वक्त, तो मैं लोगों से मिल नहीं पाई, लेकिन सेकेंड हाफ में लोगों से मेरा इंटरेक्शन काफ़ी था। लोगों की कहानियाँ यार बहुत मस्त होती हैं, कैसी कैसी लाइफ लोगों ने जिए और उसके बावजूद भी हिम्मत दिखाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और जीना चाहते हैं। आप एक बार ऐसा कुछ देख लेते हो ना लाइफ में, फिर कभी छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप कंप्लेन नहीं करते हो। तो कोई नया टैलेंट जेल के अंदर डिस्कवर किया आपने अपने अंदर? जैसे दिल टूटता है तो लोग गाने लिखने लगते हैं, शायरियाँ लिखने लगते हैं। एक्चुअली हाँ, मैंने कविता लिखी थी। क्या लिखा था आपने? कुछ सुनाओ ना हमारे दोस्तों को। कविता? हाँ, जो भी आपने लिखा हो। सुनोगे? हाँ हाँ। कविता का नाम है इतनी सी खुशी। जब इतनी सी खुशी है, थैंक यू। जब इतनी सी खुशी है तो इतना बड़ा आंगन क्यों? इतनी सी बारिश में इतना सारा सुकून कैसे? सदियों से दिल तो थामे, फिर भी इतना सारा इंतज़ार क्यों? इतनी सी खुशी के लिए इतना बड़ा इम्तिहान क्यों? गहरी सांसें तो ले ली, फिर भी इतना परेशान क्यों? इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ इतना सा इंसान क्यों?
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सुशांत सिंह राजपूत की मोहब्बत में लोगों ने आपको विलन बना दिया। लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हमारा एक हीरो जो हमारे जैसा था वो चला गया और सब आपके पीछे पड़ गए। जब आपको क्लीन चिट मिली, किस बात की ज़्यादा खुशी थी? कानूनी दावपेच से निकल गए उसकी खुशी थी, मन की शांति थी, क्या एहसास था उस वक्त? बड़ा ही अजीब होता है यार। जिस चीज़ के लिए मुझे अक्यूज़ किया गया था उसके बारे में जब क्लीन चिट मिली तो भी आप खुश नहीं हो सकते, बिकॉज उसके जो कोर पे है ना, उसके कोर पे मेरा एक बहुत क्लोज इंसान चला गया। अब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हारी वजह से नहीं गया, ये तो मुझे तो ऑलरेडी पता था, राइट? खुशी नहीं कहूँगी, बस मॉम डैड के लिए खुशी थी कि इन अ सेंस वो लोग सोसाइटी में रहते हैं, पेरेंट्स ज़्यादा सोचते हैं कि नेबर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनकी रेप्यूटेशन, उनका उठना बैठना मिलना, वॉक पे जाना, किसी से बम्प इन करना, अब वो इतना ख़राब नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने पढ़ लिया है और उनके ऊपर जो एक प्रेशर आया है और ये नेगेटिविटी आई है वो हट जाए, तो उस बात की खुशी थी। अजीब बात ये थी कि जिस दिन ये हुआ, एक तो मम्मी ने बताया कि अरे न्यूज़ में आ रहा है कि ये हुआ है, सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दी, हमको क्लीन चिट दी है। मैंने कहा गलत है, न्यूज़ तो गलत ही बोलती है, न्यूज़ वालों ने कब आज तक सही रिपोर्ट दिया है? तो मैंने बोला चेक करते हैं, रुक जाओ, जब तक लॉयर नहीं बताएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। जब पता चला कि सच में हुआ है तो मेरे घर में सब रोने लगे। अजीब बात ये थी कि जब मैं अपने भाई को हक करके खुद भी रो रही थी, मैंने अपने घर में अपने डैड और अपने मॉम को देखा और मुझे एक सेकंड में रियलाइज़ हुआ कि शायद हम हमेशा के लिए बदल चुके हैं और कभी भी वो फैमिली जो हम थे, जितने केयरफ्री थे या जैसे भी थे, वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि उस मोमेंट तक ऐसा लगा था कि जिस दिन ये हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट उस मोमेंट में जब वो मोमेंट एक्चुअली हुआ, मुझे ये समझ में आया कि सब हमेशा के लिए बदल चुका है और सब लोग, मॉम डैड मेरा भाई, सब हमेशा के लिए बदल चुके हैं, मैं भी बदल चुकी हूँ। ये सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था कि अगर किसी शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ और वो शख्स दुनिया से चला जाए, अभी भी जब सुशांत की डेथ एनिवर्सरी आती है, बर्थडे आता है, लोग पोस्ट करते हैं, हर साल नंबर 1 ट्रेंड होता है। आपके लिए ये लॉस कितना मायने रखता था? क्योंकि आपको एक्यूज़ कर दिया गया, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कभी किसी ने बात ही नहीं की कि आपको भी बुरा लग रहा होगा, या आप क्या सोचते हो, या आपके लिए पर्सनल कितना बड़ा लॉस था? मुझे भी बुरा नहीं लगेगा, मुझे ही बुरा लगेगा ना। आई फील कि सब लोगों को लगा कि वही लोग थे जो ग्रीव कर रहे थे, बट आई थिंक उस हालात में ये भूल जाना कि जो सबसे करीबी इंसान था, सबसे बड़ा लॉस तो उसका रहा होगा। मैंने ग्रीविंग का मतलब बहुत अलग वे में समझा है, क्योंकि मुझे उस वक्त ग्रीव करने का नॉर्मल वे में मौका नहीं दिया गया था। ग्रीविंग एक प्रोसेस है जिसके लिए मुझे लगता नहीं कितना भी टाइम इनफ होता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा मेरी लाइफ में जहाँ मुझे लगता है ओ मेरा ग्रीविंग प्रोसेस ख़त्म हो गया है एंड आई एम फाइन नाउ। और गुस्सा इस बात का भी आया था शुरुआत में कि कैसे लोग हैं भाई, हमारे आसपास कैसे लोग हैं जो इस इतनी सी बात, सबसे बेसिक ह्यूमन इमोशन को नहीं समझते। लेकिन फिर समझ में आया कि ये मेरा जो ग्रीफ है ये प्राइवेट है और बाकी सारी चीज़ों में तो सबका ओपिनियन है और बाकी सारी चीज़ें तो मीडिया ने अपना अपना सब बना के कर दिया जैसे कि उनका ही है, चाहे फ़ोन का चैट हो, डेटा हो, कुछ भी हो। ये मेरा पर्सनल है और आज भी मैं इसको अपना पर्सनल रखना चाहूँगी। मैं आपकी मॉम से ऑफ द स्टेज बात कर रहा था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं चाहता हूँ एक माइक उनकी मॉम को दिया जाए। नहीं, वो नहीं बात करना चाहते हैं वो तो मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। और नहीं, मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, पूरे मीडिया मैं चाहता हूँ मीडिया से बात नहीं करना चाहते। नहीं जी। अच्छा, जब इस प्रोसेस से आप निकले, अब अपने आप को आप नए सिरे से आप री इन्वेंट कर रहे हो, क्या करते हो अपने आप को खुश रखने के लिए, कैसे मस्ती करते हो? देखो, खुशी जो है ना रिलेटिव होती है। एक बार आपने लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट देख लिया है, रिलेटिवली सब कुछ बेटर ही रहता है और रिलेटिवली आप खुश ही रहते हो। तो मैं रिलेटिवली आज खुशी हूँ, चाहे मुझे फिल्म ना मिले या कोई मेरी गाड़ी एक्सीडेंट में चली जाए या कुछ भी हो जाए, रिलेटिवली मैं खुश हूँ। तो खुशी एक बाय प्रोडक्ट है इंटेंस ट्रॉमा का।
इंटेंस ट्रॉमा से गुजरने के बाद खुशी आ जाती है अपने आप समझ जाते हो कि खुश रहो। अगर अपनी लाइफ को एक गाना डेडिकेट करना हो, अपने लिए कुछ लाइन है जो आपकी जिंदगी को दर्शाती हो। अजीब दास्तां है ये। तो फिर 2 लाइन सुना भी दो। नहीं आप सुनाइए, सब कुछ मैं क्यों करूं? मैंने आपके लिए इतना अच्छा शेर सुनाया शुरू में कि मैंने आपको कविता सुना के दी तो पूरी। एक लाइन ही सुना दो आप अजीब दास्तां की। मैं इतनी अच्छी सिंगर हूँ कि अगर मैं गाऊंगी तो ये लोग ज़रूर यहाँ से चले जाएंगे। देखिए लोगों का आपने बहुत कुछ झेला है, I'm sure लोग आपकी 4 लाइनें झेल सकते हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। बस। आखिरी चीज़ आपसे, आपने कहा कि आपको ये एहसास हुआ कि गिने चुने लोग होते हैं जो आपके अपने होते हैं, उनमें से एक आपकी माँ आपके सामने बैठी है, कुछ उनसे कहना चाहें आप, क्योंकि इस उतार चढ़ाव में मैं आज भी उनके अंदर वो दर्द महसूस कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपका परिवार भी सेम नहीं रहा, सो मुझे लगता है एक अच्छा मंच है, एक अच्छा मौका है, अगर अपने परिवार के लिए कुछ कहना चाहें आप। वैसे तो परिवार से मैं घर पे बात कर लेती हूँ, ऐसे सबके सामने बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मम्मा से ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर द अपब्रिंगिंग। आई थिंक अब इस जो अच्छी अपब्रिंगिंग होती है, जो एक फ़ौजी बच्चे की होती है, जो मेरी रही है, वो अपब्रिंगिंग आपको ज़िंदगी में किसी भी उतार चढ़ाव से हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो दम रहेगा, आपके अंदर वो सारी चीज़ें रहेंगी। एंड होपफुली अगर जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी ऐसी अपब्रिंगिंग मिले, तो चाहे जेल हो या मीडिया, आप कुछ भी झेल पाएंगे। तो आपके लिए वो कौन सा हम वाला मोमेंट था कि हाँ मैंने करके दिखा दिया? एक लम्हा आता है ना जहाँ फ़र्क पड़ना बंद होता है, या आपको लगता है कि हाँ अब मैं स्ट्रांग हूँ? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो मैं हमेशा से थी, बट आई डोंट थिंक कोई ऐसा मूवमेंट था और ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं लाइफ में वापस आगे बढ़ी हूँ। मैंने अपना ब्रांड खोला है चैप्टर 2 अपने भाई के साथ। हम लोग टी शर्ट बेचते हैं, कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में टी शर्ट बेचेंगे। सोचा था अगर कोई टी शर्ट नहीं खरीदेगा तो लिंकिंग रोड जाके बेच ही देंगे। आज लिंकिंग रोड पे स्टोर खुल गया है, तो लगता है कि हाँ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पहले सिर्फ एक्टिंग क्लासेस और डांस क्लासेस करती थी, बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था। अब एबिटा के चक्रों में हूँ, तो ज़िंदगी में खाली एबिटा पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, ब्रांड में भी और ख़ुद भी। और ये मोमेंट लगता है कि हाँ अब शायद ज़िंदगी में हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरे एक सहयोगी हैं, वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि मीडिया वालों ने परेशान बहुत किया है, थोड़ा सा आपको हंसाते हैं और अच्छे से, जिसमें शायद मैं नाकाम रहा। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। And I'm sure कि थोड़ी सी मुस्कुराहट हम आपको दे पाए। Thank you. Thanks, Shivankar. Thank you, Shivankar. First of all, we have a caricature artist here who's done something really nice for you, Riya, here. What is your opinion on this? What do you think? Can we also show it to the audience? देखिए एक्चुअली दरअसल मेरे बारे में इतने मीम्स बन चुके हैं, तो जब कोई मुझे फोटो देता मैं डर जाती हूँ, पर ये तो काफ़ी अच्छी है। You like it? It's a good job. Well, give it up for our caricature artist here as well. Now Riya, आप आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आप काफ़ी ज़्यादा किसी भी शख्स में कोई टफ एलिमेंट हो उसे आप लेकर बाहर आ सकते हैं। आप एक ऐसे रियलिटी शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टास्क दिए जाते हैं, एडवेंचर वाला वो शो है। सो देयर आर 2 boys here who are big fan of you. I want you, okay, उनका हाथ ऑलरेडी खड़ा हो गया। Why don't you come on the stage? Now I want you, we'll give it another name, of course. जल्दी जल्दी आ जाओ। ओके, सो ऑफ कोर्स हम जो शो है उससे इंस्पायर होकर हम इन्हें कुछ चैलेंज देने वाले हैं। अब पहले अपना नाम बता दीजिए। we'll call this युवा चैंपियंस। Are we good with that name? Yeah. तो आज हम इन दोनों में से युवा चैंपियन चूज करेंगे। जज हैं आप, टास्क भी आपको ही देना है। आपका नाम बताइए। आई एम अनित प्रकाश फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। अब रिया के आप कितने बड़े फैन हैं और उनके क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, एंड स्पेशली मैं रोडीज़ आपके लिए देखता हूँ मैं, बिकॉज आपका जजमेंट फॉर रियल मेरे को लगता है कि इज़ द परफेक्ट, एंड यू नो ऐसा फेक नहीं लगता कभी कि आप एक्टिंग करके स्क्रिप्टेड है आपका शो वगैरह ऐसा। थैंक यू। लवली। व्हाट्स योर नेम ब्रो? सिद्धेव जैन, मैं फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। आप क्या कहना चाहेंगे रिया को?
सेम आई हैव बीन वाचिंग रोडीज बहुत टाइम से एंड जब से मैम आई है रोडीज और अच्छा हो गया है आई थिंक अगर जब मैं टास्क दूंगी इसके बाद ये मेरे फैन नहीं रहेंगे. Let's see. So Riya, we are choosing Yuva champion and you are the judge, the jury. So आज आपको फैसला सुनाना होगा. So बताइए क्या टास्क है इनके लिए. पहला तो 2 टास्क रखते हैं. ओके. एक मेंटल और एक फिजिकल. लवली. ज़्यादा हार्ड नहीं होगा पर हार्ड होगा. रेडी? यू आर अप फॉर इट? ओके, सो आई थिंक पहली बात तो आपको बजर दबाना पड़ेगा. राइट? बजर आप खुद हैं. मतलब मैं एक सवाल पूछूंगी, अगर आप उसका आंसर आता हो तो आपको जंप करना है और बोलना है कुकड़ुकू. कैसे करेंगे? क्या बोलना? कुकड़ुकू. कुकड़ुकू. जिसने पहले किया उसको सवाल का आंसर देने का मौका मिलेगा. This is the mental strength round. और देख लीजिएगा क्योंकि एक ही सवाल है तो गिव इट योर ऑल फॉर द कुकड़ुकू. हाँ, नहीं, आप उनकी तरफ देख के दे सकते हैं. ऑडियंस है ना, ऑडियंस को इंप्रेस करना. ऑडियंस भी वोट करेगी. Observing from here who will do it the first. So रिया का सवाल होगा, आपको कुकड़ुकू करना है, right? Okay. For the mental round of the Yuva champions, question 1. What is the capital of Karnataka? Guys, you are Yuva. Please. No kukuruku also. अच्छा भाई तू ऐसा कर, तू तुक्का मार दे कोई. कर्नाटका ना. कुकड़ुकू के बिना आंसर ही नहीं है. नहीं पहले कुकड़ुकू तो करो. तू एक तुक्का मार. तेलंगाना. Ouch. What did he say? He said Telangana. बैंगलोर सही जवाब है, लेकिन आपने कुकड़ुकू किया नहीं तो none of you get the points. He did. Before him, he did the kukudukudu, Okay. but I wanted to hear his answer because I knew he'll come up with a gem. But of course, इस mental strength round में 1 and 0. Do you have another question? No, I have another Physical task. Okay. अब जो ये टास्क जीतेगा फिर टाई होगा, फिर टाई ब्रेकर होगा. अगर आप Yeah. जीत गए तो आप रेस में हो. ओके? चलो. You all have to do 10 burpees. Burpees पता है? Jump up, go And then down, do a push push-up. up and jump up again. Right? 10 burpees जिसने पहले कर दिया वो जीत जाएगा. 3 सामने And can we have some music as well for this? 3, 2, 1, let's go. Okay, I'll count his. You count 2, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 10. 8. He's done. Whoa! Give it up for Anirudh, who's of course our Yuva champion. Well done, boys. I think we should do the final champion moment. Why don't you hold their hand and declare him the winner? No, but he's won and he's Oh, won. no, We need a yes. tiebreaker, and I Yes. have the easiest tiebreaker for you all. Okay? We'll do an arm wrestle. Okay. अब ये जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा. And Riya, can you sign this for us? Because I think the winner should get something. So the Of winner course. will get this lovely caricature signed by Her Highness अरे Riya. मेरे कैरिकेचर का क्या करेंगे ये लोग? Arey, it'll be signed. It'll have your sign, Riya. Okay, can we also get a marker for the and winner, then the NDTV will give you all a cash gift. Come. Okay, मेरे 10 रुपए का नोट 10 रुपए का नोट नहीं मिल रहा अरे है. मीडिया वालों से पैसे निकालो, ले लो. चलो. Ready? Okay, are we ready? We'll again do it with music. And meanwhile, can I also have a marker if we have? Okay. You do the countdown, Riya. Ready? Take in positions. 3, 2, 1. Woohoo! Okay, who's cheering for him? Who thinks that Anirudh will win? Okay, keep clapping. Woo! Hold this. Come on. Okay, it's quite a tough fight. Nobody is ready to lose. Bro, well Now done. we can do the fight. The fight is final what we winner care about. announcement.
Okay, can we have that moment? Riya, why don't you come in between? I want you to declare him the winner and also give So him guys, here's the winner of the Yuva Championship. But I would also like to add that what's important is to put up a fight. Winning and losing is not the only thing, and you fought hard, and I'm really impressed. Oh, you're our best friend, so he won, you won, same thing. But take your prize with you, take your trophy. Why don't you sign it for him? पैसे ले लेना NDTV से, कैश चेक है, दोनों स्प्लिट कर लेना. Let me just open this and we do it. We can keep the music rolling. Lovely. Why don't you take it from her? Many congratulations, dude. Good fight Thank there, you, both of you. congratulations. Well played. Well, with that, we've come to an end of this segment. Thanks a lot, Riya. You've been quite a sport, and भाई ने हमारे property भी नहीं damage की, so that's a good save. And हमारा कोई पैसा भी नहीं गया जेब से. नहीं पैसा दे देना, वो लोग मांगे नहीं आएंगे बाद में. ठीक है. Thank you so much for having me. Thank you very much, Riya Chakrabarti. Thanks for coming to Thank you NDTV guys. Yuva. Lots of love. Thank you. Give it up for Riya Chakrabarti. A louder applause. And now, of course, we are moving on to our next conversation, a next segment. She's fresh, fearless, and fabulously talented. From making her debut in Shuddh Desi Romance to redefining glamour and grit in films like War and Chandigarh Kare Aashiki, she's an actress who connects strongly with today's youth because her journey is as real as her role. Please welcome the stunning and versatile Vaani Kapoor on the stage. A huge round of applause. And to have a conversation with us, I would also like to invite my colleague, Aditi Girotra. Over to you, ladies. Thank you, Arun. All right, I had requested Vaani that, to begin off, we'd start by dancing. But I think Riya's session infused quite a lot of energy here. So I would not request it right now. But Vaani, maybe later on, yeah, perhaps we're certainly once doing we it. are done talking, then we can focus on fun. Yes, certainly. Hi, everybody. Oh, my God. I love the energy in the crowd here. The audience is impeccable. Great. Lovely. Vaani, if you talk about your upcoming projects, they offer a range of diverse genres. You recently made a streaming debut with Mandala Murders. It was quite impactful and quite gripping, I would say. A gritty crime thriller. And then now your upcoming movies, Raid 2, Khel Khel Mein, comedy dramas. Does it have anything that connects with our youth, our Yuva, to begin with? Does my work connect with the Yuva? Yes, anything that you have, whatever movies are about, आपको लगता है वो किसी तरह से हमारे युवा से connect करेंगी? I feel every story is so unique and relatable when done. When you infuse humanity and life into any character, it becomes soulful. And when there's soul and you can connect in a meaningful way, of course, we are empathetic, as human beings. We empathize, we sympathize, we understand that there are so many different kind of people in the world who could be like us and who could be very different. And I think that's the beauty of cinema, where you get to play different people, different characters, just different lives. So I'm hoping like it connects to our lovely audience, and that's what we all strive as actors to do, to be able to connect in the most meaningful way. Indeed, मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि जब आप अपने रोल्स पिक करती हैं, तो क्या आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करती हैं उन रोल्स को चुनने में, क्योंकि सिनेमा जो है हमारी यूथ के साथ या फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमको, हमारे इमोशंस को, हमारी लाइफ्स को. तो जब आप ये जिम्मेदारी से रोल्स पिक करेंगी तो एक मैसेज भी जाएगा. तो क्या आप वो जिम्मेदारी महसूस करती है रोल्स पिक करने में?
आई थिंक मेरी ज़िंदगी में जितने भी रोल्स आए हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उस मुकाम तक पहुँच गई हूँ जहाँ मेरे पास बेस्ट ऑप्शंस आते हैं, बेस्ट रोल्स, एंड आई एम ट्राइंग टू व्हाटएवर दैट कम्स टू मी, उसमें से जो भी मैं पिक करती हूँ, ऑफ कोर्स आई डू इट समथिंग जो मुझे सही लगता है, जो मेरे कोर्स से कनेक्ट करता है, जो एज अ ह्यूमन बीइंग जिसकी कहानी मुझे इंट्रीग करती है या इंटरेस्ट करती है या क्यूरियस करती है. सो something which connects to me even in the smallest way is something that I try to pick. Yes, I do try to be responsible when it comes to picking roles, but as an actor I don't judge my characters. वो गलत भी हो सकते हैं, वो सही भी हो सकते हैं. हाँ, वो किस नज़रिए से अपने आप को देखते हैं या ज़िंदगी को देखते हैं. तो आई थिंक हर तरह के लोग होते हैं, हर इंसान की कहानी अलग होती है, यूनिक होती है, एंड यू जस्ट वांट टू बी एबल टू टेल एज मेनी स्टोरीज एज पॉसिबल. Right. Young people, juggle with emotion and ambition a lot. आपकी जर्नी से कुछ ऐसा जिसके थ्रू आप उन्हें एडवाइस दे पाए, उन्हें बता पाए गोइंग फॉरवर्ड क्या करना चाहिए? आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में जो लोग इमोशन और एम्बिशन से जगल करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? अपनी जर्नी से, आप अपने एक्सपीरियंसेस से बताइए. Okay, I can speak for my profession. Anybody here who wants to be an actor? Anyone? Yes, there. I see some hands. See, guys, it's a difficult profession, I won't lie. You will face rejections. You will have, you'll need tremendous patience. Some days of self-doubt, and to add on to that, unwarranted hate and trolling at times. But despite all that, if you still have the will to fight for your dream, you have the love for your craft, you know that you want to follow your heart, sooner or later there will be light at the end of the tunnel. So don't give up. I think जो आपकी खुद से fight होती है, अगर आप वो lose कर जाएं, then that's the day you're done. Don't let anybody tell you you're not good enough, because only you know your truth. Nobody else will know what your potential is as much as you guys do. So I feel self-belief, as often as it's spoken about, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि खुद पे भरोसा और खुद की एक होता है ना, अंदर से खुद से कनेक्ट करना. बाहर नॉइस बहुत होगा, देयर विल बी पीपल, टाइम्स यू फेस क्रैब मेंटालिटी वेयर पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन, बट इफ यू गिव इन टू दैट परसेप्शन, दैट विल बिकम योर रियलिटी. You can change your reality by your own conviction. Nobody else can believe in you as much as you do for yourself. So I think don't lose the fight within yourself. That's the biggest fight, and that's the most important thing that matters. Right. चंडीगढ़ करे आशिकी की बात करते हैं. You portrayed a very bold and a very independent character, very progressive. आपको लगता है that our youth needs that kind of portrayal that pushes boundaries? I feel our youth is already ahead of its time. They can differentiate from, wrong to right and right to wrong. We'd be underestimating our youth if we say it otherwise. I think जब मैं podcast देखती हूँ, मैं YouTube बहुत देखती हूँ, मैं podcast देखती हूँ, YouTubers के, conducting podcasts or just speaking about their experiences or what their opinions are. And they're very forthcoming, and it's very impressive to see so many people have a voice, so many people being fearless to speak so unabashedly. And I think I'm part of the society. I'm as human and I'm as vocal as the way my parents have brought me up, people around me, the society that I've grown in. And I try to do right. I try to pick roles like I said earlier, which feels right by me. Which feels right to my core, right with the right intent. And I think Chandigarh Kare Aashiki, as controversial as some might say, I believed that story had to be told. I believe that there are so many people who are still living with a lot of injustice, or there's not fairness to when it comes to their existence in our society.
So I felt that need, I connected to it, and I deeply felt responsible while portraying it. So I hope like more stories are told like that in the future. और अब चंडीगढ़ करे आशिकी की बात हो ही रही है, तो you know we all fell in love with the music of the film. तो एक दो steps हो जाए, dance steps चंडीगढ़ पे. They're just going to play the music and we're not really going to play the song, but let's just do a few steps. So that, and I would request everybody out here to join us. Stand Does somebody up, want to come and cheer. dance? Anyone? I mean, they're raising their voice, so we can call some people. So why don't we turn it into a workshop? Okay, you teach me like one step, and the second step we'll ask somebody from the audience also to join. For the first step, I think let's two of us do it. You teach me one move, one groove. Okay, what song do you want to dance? Any they'll play a beat, or you have a specific song they can. Chandigarh Ashiki only. Yeah. Chandigarh kare Ashiki. Okay, any step that you like. It has to be any step. Just help us. Ghungru, Nashe Si Chad Gayi, anything, guys. Okay, let's vote for Nashe Si Chad Gayi. Okay, there are quite many hands there. Nashe Si Chad Gayi, teach us. Don't do like those difficult ones that Ranveer did. No, I'll go groovy. Okay. I'm in heels. It'll be easier for you in sneakers. Okay, lovely. Okay, we're doing Nashe Si Chad Gayi. You teach us some moves, okay? You see this, and then we'll ask one of you to join us, okay? You can join us now. Why don't you join us now? Okay, come. Only two people, okay? Can we have two ladies for this? Listen, let's have two girls join us. One more girl. Come. Okay, come. Let's do four. That's it. Let's do four. Hi guys, what are your names? Venya, Bhavya, Riyan, Adishri. Okay, now, this is not a workshop. This is a dance competition. She's the judge. No pressure. Yeah? So, Vaani, why don't you? I'm the judge, so I don't the judge dance. And you're also the coach here. You show us a move, and then they repeat after you. Okay. Yeah? Who remembers the Nashe Si Chad Gayi step? Okay, can we have the music? Give it up for them, guys. ये मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी की बारात में आई हूँ. अच्छा, she wants to do the war one. Chal, we'll do Ghungru. Sir, Ghungru, sir. They're quite war fans here, so we'll do the Ghungru steps. कौन गाएगा? Any of you would like to sing along? Okay, wait. Okay, listen. This is not gonna work like that. You just show us one move. They'll play the music. You just show us one move, and which will they do? Lovely. Okay, so why don't you start grooving, and they'll pick up from there. Yeah. 3, 2, 1, go! Not bad. Wow. Keep supporting them, guys. You have to keep clapping along. Lovely. I think it'll be unfair to select just one of you. All of you dance really well, so give it up for all of them. Vaani, what do you have to say about these young girls? They are lovely. They know my steps better than I do. I'm ashamed. But guys, thank you. It's a pleasure to see you all here. Really. Yeah,
Thank you, ladies. Thank you very much. And Arun, you could not hold back when I said, let's dance, right? That's what Rahul was saying, that moment, the moment we introduced See, the I'm a dance. Punjabi, Aditi, you have to understand. Yeah. You say the word dance and I'm here on the stage. Exactly, this was not planned. But good thing that you joined us. Wonderful. But thank you very much, ladies. Thank you. Give it up for both of them. Wonderful. Thank you so much for doing it for us. All right, going forward. आपने कॉमेडी की है, आपने क्राइम थ्रिलर किया है. Mike, you took the mic. All right, hold this. I have the mic already. You have a mic? Yes. Okay. Don't worry. Okay, तो आप कॉमेडी आप कर चुकी है, क्राइम थ्रिलर आप कर चुकी है, आपने हर तरह का जॉनरा एक्सप्लोर किया है. Thank you so much. Which is the genre that you feel at home in, and that challenges you at the same time? I enjoy comedy, although I haven't had the privilege to be in a lot of comedy films yet. But that's a genre which you can either nail or you can completely go flat. And it's difficult, huh, guys, to laugh, on cue, to have the perfect comic timing. But my friends think there's a side to me which a lot of people have not seen yet. I have a very different, an image that gets built, for the kind of parts that you play, and people perceive you as your characters. But I do feel I have a bit of a side which is goofy and very cartoon-like, and that comes out when I'm completely at ease and, with my loved ones, be it my friends, family. So I truly enjoy comedy. I like a good laugh. I love watching happy films and comedy films. So that's something that I still want to explore more. आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है जिसमें आपने भरपूर कॉमेडी की हो और आपको बहुत मज़ा भी आया हो? I think अभी ये यूनिवर्स में एक मैसेज डालना पड़ेगा to for all the brilliant filmmakers that please, I'm right here and I'm happy to explore this genre, and it's something that I really want to experiment and try out for myself. So yeah. Wonderful. Vaani, आप बहुत fit हैं, and ever since you made your debut, you've been a fit person. How do you maintain your fitness? What do you do for it? मैं अपने आप को पनिश नहीं करती हूँ guys, और ना ही मैं कोई blessed हूँ. There are some people who are just they're blessed with the best metabolism. Yeah. I do have to work out. I do have to work out every day, but I also love food. I'm Punjabi. There was a time in my life I used to eat butter chicken for dinner every night. Wow. And I used to love my butter garlic naan with butter chicken. I love Indian Chinese. So everything, all the junk under the sun is something I love. So to balance that, I had to insist on training every day. And of course, it's a visual medium. You have to be fit. 7 days a week. And you know what? I think my biggest motivation was when I saw my parents' health deteriorate. I saw कि आपको कितने health issues आ सकते हैं. So me and my sister, we made a pact that we will try and ensure that we stay healthy and we stay, because it's also equally important for your mental health. Indeed. When you work out, आपकी सिर्फ physical body के लिए नहीं है, वो आपके your very being, जो आपका function है, the way you feel, the way you think, you need the dopamines and you need that rush and you need that, just that energy to sustain a hectic lifestyle. So fitness is something I have to do. I'm not a gym lover. It's not like every day I look forward to going to the gym, but it's important. And it doesn't have to be gym. You can pick up a sport. You can pick up football, cricket, anything that you like. But just be active. That's the essence of truly feeling fit. Exactly. Even mentally. It's important to feel fit. Yeah. All right. आप ग्लैम इजी कर लेती हैं, आप डी ग्लैम रोल्स भी होते हैं, इजीली कर लेती हैं, पर कुछ ऐसे रोल्स जो आपके मन में हो, आप करना चाहती हो आने वाले समय में? I was actually watching documentary of Amrita Pritam, and she's very fascinating. Her life is very fascinating. That's something that's been on my mind. If ever, I don't know if the universe listens, if ever anybody is making it, I'd be happy to audition for her role, because I find a sense of this, this fearless voice of love and rebellion in her. बहुत ही raw emotions है और honesty है उनकी life story में.
तो वो एक किरदार है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी इन द नियर फ्यूचर इफ ever the universe comes together and makes it happen. ऑल राइट, टाइम कम है तो एक जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं. आपसे जल्दी से सवाल पूछूंगी, आप फटाफट एक का आंसर देना मुझे, एक वर्ड का आंसर देना मुझे. इफ नॉट एन एक्टर, व्हाट वुड वानी बी डूइंग? I think this question's being asked to me a little late in the day because now that I've become an actor, I don't see myself doing anything else. Yes, there might be their thoughts, आता है idea कि चलो अगर किसी दिन films नहीं, I'd like to be associated to the industry in some way. अगर पर्दे के आगे नहीं तो पर्दे के पीछे ही सही. But I want to learn the skill of editing, directing, creating something. So I think anything to do with creativity excites me. Instagram reels or long form cinema? Cinema, always. Great. Craziest DM you've ever received? I don't check my DMs that often. I mean, only from the people who you follow, and then I think the others go on a But do different you request. receive No? crazy DMs? Crazy DMs. I've actually not seen the other request, the ones who I'm not following. I tend to see the people who I follow, and the craziest DMs I get are for my best friends, मेरे school के दोस्तों से और मेरे college के time के जो दोस्त हैं वो बहुत ही funny, crazy, unthinkable DMs भेजते हैं. All right. Co-star you have the most fun with? No, I've got along with pretty much everybody, but I think, what do I say? Everybody was fun. One name. Okay, I'll take Ritik's name. Wonderful. A fitness trip you swear by. A fitness tip you swear by. Wear your shoes, your fitness shoes, and head out to the gym, even if it's for 5 minutes. That's all. Trust you for saying Just that. think in your head, मैं आज सिर्फ 5 मिनट जिम करने वाली हूँ. Trust me, once you make it to the gym, वो 5 का 15-20 मिनट होगा, and that'll turn into an hour. It'll just happen. You just have to mentally make up your mind कि यार जूते पहन लिए, कपड़े पहन लिए जिम के, अब बस पहुँच जाओ. Trust you for saying that because मैंने आपको लहंगा के नीचे भी फिटनेस शूज पहने हुए देखा है. Thank you so much, Vaani, for joining us today. Thank और you. जाते जाते थोड़ा सा शेक हो जाए, थोड़े से मूव्स हो जाए, स्टेज से नीचे उतरते उतरते. What do you say? मैं गाती हूँ चंडीगढ़ करे आशिकी. Yeah, I love that song indeed. Music, please. चलो. चंडीगढ़ करे आशिकी, चंडीगढ़ करे आशिकी, मुंडा चट्टा दा जलंधरों आके. Thank you so much. So that was a lovely session. युवा, अब आप मुझे जवाब दीजिए एक बात का. Do we want another session? Do we want a tea break? Those who want tea, raise your hand. काफी ज़्यादा चाय प्रेमी है. So we're taking a tea break, but just for 15 minutes. Be right back and grab your seats. Thank you. तू कब आया अभी लाइफ से? अरे वाह ताई, पहचान गई? शहर जाके आँख का ऑपरेशन करा लिया क्या? शहर जाए मेरी जूती. नहीं, यहीं अपने गांव में ही करवा लिया. वो जो सूरज है ना अपना, वो सब कर रहा है. अरे राकेश. अरे वाह छोटी, ये स्कूल में सीखा? इंटरनेट पे. इंटरनेट? हाँ, सूरज भैया है ना. कौन है ये सूरज भैया? आपको उनसे मिलना है क्या? हाँ. चलो, वो रहे सूरज भैया. हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं. अदानी, हम करके दिखाते हैं. हाँ, कपूर जी क्या संडे है ना?
नसीब दास्तां नहीं सी पत्थरों में होश सुई चुकना पोश Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Radico Khaitan is Check one of करना एक बार। India's oldest and most trusted liquor companies. Founded in 1943, the company has a rich heritage and a portfolio of iconic. आ रहे हैं? हेलो चेक 1 2 3 4 चेक 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 हेलो चेक 1 2 3 4 यार सुनो दादा उसको अभी भी ऑडियो जा रहा है ये देखो अगर मैं कौन सा हेलो चेक 1 2 3 4 ये तो नहीं है हॉलो यार सुनो दोनों मिल गए आपको पीजीएम मेन बैकअप दोनों मिल गए एक सेशन है ना अभी आप सुनो अभी श्रीरंग करेगा वहाँ पे क्योंकि क्या है ना उसने रिटर्न में कितना छोड़ा है वो कितना बाहर जा रहा है हमें नहीं पता चल रहा है वो क्योंकि हम ये ब्रॉडकास्ट के लिए दे रहे हैं वहाँ पे तो वो नहीं पता चल रहा है फिश फिंगर आहे अरे दुपारी जेवायला नाही मिळालं यांच्या नादामध्ये हेलो चेक 1 2 3 4 चेक 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 हेलो चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेक हेलो चेक मैं बीसीआर में खड़ा हूँ सारे लोग बात ही कर रहे हैं चेक हेलो 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 चेक 1 2 3 4 हेलो चेक हेलो चेक 1 2 3 4 चेक चेक चेक
तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ, कमजोर हो जाता हूँ मैं। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ, आवारा बन जाता हूँ मैं। तुझे छू लूं तो कुछ मुझे हो जाएगा, जो मैं चाहता ना हो मुझको। तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे।
Hello, check 1 2 3 4 5 6. Hello, check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Testing, mic test. Hello, mic testing. Hello, check. Check 1 2 3 4 5. Hello, mic check. Check 1. Hello, check. Okay. Hello, check. Hello, check. Mic testing, mic testing. Hello. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mic testing, mic testing, mic testing. Hello, check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hello, check 1. Hello, check. इधर का होगा लो उधर जा ओके करे
Thank you. He can't hear anything, the guitar on his in-ears. Check if it's paired properly. It is Arman. Arman for everyone says Arman. Yeah, mine is Arman 3. Which one? He's animal. So there is 1, 2, 3. Guitar is what number? JD? You have any mic to talk? 3, 4. This one is. Okay, put off the guitar in the 3, 4. Put off the guitar in the 3, 4. Keep playing guitar. Cut the guitar in 3, 4. Cut. Hello. He's got 4. Hey, check. 2. Hey, check. Hey, check. Keep it. Keep it. Where are the other body parts? Only 3 and 4. Arman का पार्टी का body part किधर है? नहीं रहता. इधर. What is the number? अरे hold on. Give it to me. Remove it. Give it to me. Hello. Check 1, 2. Check 1, 2. Hey, check. Hey, check. Hey, check. और ये बैकअप Hey, check. Hey, check. Check. Okay, cordless. Okay, hold on. Just 1 minute. ये देना बॉडी पैक के लिए तुम लोग इतना कर रहे हो। उन लोगों ने किधर रखा? रजीब पता नहीं रजीब मैं कहाँ बोलूँ अभी। पब्लिक आके बैठे हैं। अभी बोल रहा हूँ उनको 2 करके। हेलो जेडी लगा ना फोन जेडी यार बॉडी पैक हरवलंय तर 1 नंबर जो आहे 1 2 जो आहे 1 2 तो आरमानचा मिक्स असाइन करा त्याच्यानंतर 3 4 सेकंड नंबर इंडियर आहे त्याला बायपास करा हां आता जो 3 नंबर मी तो गिटार दिला तो त्याला मिक्स द्या त्याचा 5 6 नाही आला चला 2 नंबर आला ठीक आहे आला 2 नंबर आता 2 नंबर मी डेटा मिळाला तुम्ही काय असाइन केले बेल्टर आहे की गिटार 2 नंबर हां गिटार 5 6 कीबोर्ड दिस इज बैकअप ओके नाउ द और वो बैकअप माइक ये बैकअप Can you guys hear this mic? Check. Yes. Huh? My back volume will go down. I'm not putting it here when it's like loud. Drop it. If it is bothering you, drop it. Dan, you're okay? You're okay? Yeah? You can hear this mic? Okay, cool. JD, you're good. दूसरा mic check कर रहा है. JD acoustic guitar play volume हेलो हाँ
हेलो हेलो स्मोक मत दो हेलो स्मोक कौन दे रहा है स्मोक बंद करो म्यूजिक दो एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज म्यूजिक मत दीजिए म्यूजिक बंद I know we are recharged. We have a lot of energy now after a Sham Ki Chai. So please settle down. We'll be starting in just a few minutes. All right.
तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ मैं तुझे Who's doing Arman Malik? Who's doing Arman Malik? This one, Ashutosh. So you begin with this, and then I'll from being one से मैं ले लूँगा. I don't think my mic is working. Yeah, off किया इन्होंने. Okay, ladies and gentlemen, we are resuming NDTV Yuva. Give a huge round of applause before we begin our next session. तो आज हमारी स्टेज पे आने वाले नए हस्ती जो है या जो इस वक्त हस्ती आ रही हैं उनको कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए. वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो एक हाउस होल्ड नेम है. टेलीविजन की बहू से लेके पार्लियामेंट की शक्ति तक उन्होंने अपनी कहानी से पूरे देश को इंस्पायर किया है. Yes, from being one of India's most loved actors to becoming one of India's most influential leaders, Smriti Irani is the definition of resilience, reinvention and real impact. उनका सफ़र सिर्फ इस बात पे नहीं आके टिक जाता कि वो एक बहू हैं बल्कि शी इज़ ब्रेकिंग बैरियर्स, रीडिफाइनिंग रोल्स और ये दिखाना कि अगर इरादे मजबूत हों तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता है. तो अब मैं चाहूंगा कि आपकी जोरदार तालियों के बीच में वी वेलकम फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, लीडर, थिंकर एंड अ ट्रू यूथ आइकॉन स्मृति ईरानी. कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज, मैम? And to have a conversation with her, joining her is our colleague Padmaja. So give both of the ladies a huge round of applause. Over to you, Padmaja. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Smriti Irani with a huge round of applause. Please put your hands together. Thank you so much. To the crossover queen, can we call you that? I think I would rather be the comeback kid. Comeback kid. But you may call me whatever you deem fit. अभी NDTV युवा है तो फिर comeback kid is so much more contextual. So, congratulations first of all. मैं आज क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं तो हमारे लिए TRP बहुत important होती है. I was watching the ratings for क्योंकि सास भी कभी बहू थी. It's constantly climbing up. So many congratulations. Thank you. The comeback has been spectacular. I think that when we began 25 years ago, obviously there was no digital medium of communicating a creative thought which is under the guise of a Saas Bahu show. I was most intrigued as to how would it perform as a concept on an OTT. And the numbers, yes, I'm grateful for the compliments for the television performance. We have a monthly viewership of close to 5 crore viewers. We have a daily viewership about a 1.5 crore viewership and a weekly viewership which oscillates between 2 to 2.5 crore people. But more so on OTT as compared to other shows which are daily soaps which run on the platform. The time spent on other shows is around individually 20 to 28 minutes. On my show, I was flabbergasted. Close to 104 minutes are being spent individually by people. So the fact that a concept which is actually steeped in some old school drama has found resonance on a platform which is mostly associated with the youth, that for me has been extremely intriguing. और ये आपने इतनी जो आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस कॉन्वर्सेशन का, यही मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है. हम 2000 साल में आई रिमेंबर जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी शुरू हुआ था उस वक्त, तो आपकी एक चीज़ यूज टू शेप कॉन्वर्सेशंस इन ड्राइंग रूम्स. आपने क्या साड़ी पहनी है, आज आपका क्या जो रिलेशन है बा के साथ, आपकी मदर इन लॉ के साथ, जो 25 साल पहले हमारे मानस को, हमारे कॉन्वर्सेशंस को शेप करता था, वो 2025 में रेलेवेंट कैसे बनाया आप? आई थिंक द कॉन्सेप्ट जो मुख्यतः था वो ये था कि अगर आप एक परिवार को अलग अलग जनरेशन्स की दृष्टि से देखें
तो वो परिवार दिखेगा कैसे। और साथ ही हमारी ये कोशिश रहती थी कि आप इमोशंस और उस इमोशंस के संदर्भ में परफॉर्मेंस को इतना जितना संभव है रियल रखें, ताकि लोग जो उससे मुखातिब हों या उसको देखें उनको लगे कि ये कहीं ना कहीं इसका एक छंद या एक अंश मेरे साथ घटित हो चुका है। 2025 में हमने बहुत ही प्रोग्रेसिवली चैलेंजिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस ड्रामा में रखा। पहले तो एक लिमिटेड एडिशन का ये ड्रामा है, ऐसा नहीं कि सालों साल चलेगा, गॉड फॉरबिड। दूसरा कि कौन से वो कॉन्टेक्स्ट हैं, कौन सी वो बातें हैं जो आज चर्चा का विषय हैं, स्पेशली न्यूज़ में, जिनको हम लोग फिक्शनलाइज कर सकते हैं। एजिंग, बॉडी शेमिंग, आज इनफैक्ट अगले 2-3 दिन में मिसयूज़ ऑफ लॉ अगेंस्ट मेन, तो वो साधारण सीरियल्स में आप देख नहीं सकते हैं, तो उसको इस शो में असाधारण तरीके से प्रस्तुत किया गया है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक द फैक्ट दैट a show which 25 years ago had one set of actors, a producer and a platform, came back with the same subset of people on the same platform. The platform just grew larger. That's the only difference. So अगर हम उस दृष्टि से देखें तो आज ऐसा कौन सा शो है जो आज से 25 साल बाद आ सकता है? I don't think you will find a name that resonates across all age groups. स्मृति जी, जो आपने बॉडी शेमिंग की बात की, मैं वो आपके पहले आई थिंक पहले या दूसरे एपिसोड में ही वो थीम इंट्रोड्यूस हो गई थी, पर आप क्योंकि एक पब्लिक फिगर है, एक इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि ये इश्यूज़ हम पब्लिकली इसको एड्रेस करेंगे? जब ये पूरी बात की जा रही थी, हमारे अपने पर्सनल भी होता है कि भाई मेरा एक पब्लिक पर्सोना है, अब मैं चर्चित चेहरा हूँ, जाना माना, इतने इम्पॉर्टेंट इशू को इस तरीके से पब्लिक एड्रेस करना, कभी कभी पर्सनल इनसिक्योरिटी आती है? ये नहीं है, क्योंकि मैं अपने वज़न, अपनी रूपरेखा के लिए जानी नहीं जाती, अपने काम के लिए जानी जाती हूँ। और मैंने बार बार विशेष लड़कियों से ये कहा है, और जिन पुरुषों ने भी सुना है उनके लिए भी एक ही मेरा वक्तव्य रहता है, that if you keep seeking validation for who you are or what you're capable of doing from others, then you will never be either happy or you will never succeed. और ये ज़रूरी है कि हम इस बात को बार बार दोहराएं कि अगर मैं इस विषय को नहीं उठाऊंगी क्योंकि दूसरों में हिम्मत नहीं है, तो क्या मैं भी उसी टेम्पलेट का फिर रूढ़िवादी हिस्सा नहीं बन गई? So since I have never been associated with a look, a bindi, a kind of sari, or for that matter, a particular weight on a weigh scale, I have never felt uncomfortable about talking the most so-called different kinds of elements which need to be addressed in society. Even when I was trying to be an actor, when I was a newcomer, 27 years ago, one of the first advertisements that I did as a piece to camera was about a sanitary pad. Now, 27 years ago, when you're a Miss India finalist, though I don't look like it today, when you do an ad, the first attempt is to look as glamorous as possible. And here was this somebody who said, no, I want to talk about an issue like sanitary pad, menstruation, which was not the in thing. In fact, it was a career killer. So I never had that burden even when I was struggling to make a space for myself. क्या ये जो आपका है ना कि I don't care वाला जो attitude है about taboo topics, you know, it is not as if I don't care. That would look a bit too negatively nonchalant. I think the issue is I care enough to speak about things that other possibly care about but don't have the courage to take to the last mile. एक तरीके से ये जो करेज है आप में इसलिए भी आया है क्योंकि जब आप नेता थी तो जिस तरीके से आपको अटैक किया गया, नेता हैं मतलब जब आप थोड़ा सा कम हो गया, जैसे आपको ट्रोल कम किया जाता है आजकल। नहीं, मैं इस उसमें कह रही थी कि आपको थोड़ा कम टारगेट किया जाता है अभी। चेक चेक चेक।
देखिए, कांग्रेस के बारे में बोला, मेरा माइक बदल दिया गया है। और देखिए फिर भी हमें लोग कहेंगे गोदी मीडिया। वो मैं नहीं कहती, वो कहने वाले संभवतः सज्जन वहाँ बैठे हैं पहली पंक्ति में। तो स्मृति जी, आपने ओपनिंग दे ही दी है, तो फिर मैं अब पूछ ही लेती हूँ कि आप कभी कांग्रेस को मिस करती हैं? जब आप थोड़ा मैं कांग्रेस को मिस नहीं करती, लेकिन कांग्रेस जरूर मुझे मिस करती है। तो स्मृति स्टाइल में ट्रोलिंग का खाता खोला जाए। तो स्मृति ईरानी स्टाइल में याद दिला ही दीजिए व्हाट दे आर मिसिंग। एक सेकेंड, ये कुछ षड्यंत्र हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही कुछ कांग्रेस के ऊपर बोलने लगती हैं स्मृति जी, माइक ऑफ कर दिया जाता है। मेरी गलती नहीं है, वहाँ पे कोई पोडियम में आपका कोई एजेंट हो सकता है। मेरा एजेंट क्यों होगा? कांग्रेस को होगा। लेकिन चूंकि मेरा माइक बार बार आपके चैनल पे बंद हो रहा है, जब आप मुझसे कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करने को कह रही हैं, तो कम से कम इस वक्त आपको गोदी मीडिया का खिताब कोई नहीं देगा। So, but people will try. I don't think, Padmaja, it is essential to negate a particular issue just by masking it as a verbal attack on a political organization. People like me have come into politics because penultimately our desire is to build a better country. I was speaking to KTR, who's sitting in the audience today. We are from different political organizations, different ideologies. But if ultimately we are working for the larger purpose of making a more resilient, a stronger nation, then मर्यादा की एक परिधि में हम लोग शांति से अपनी बातें कर सकते हैं और सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मर्यादा बार बार भंग करोगे, अगर आप बार बार देश के प्रधानमंत्री का जानबूझकर तीखे शब्दों में नहीं बल्कि निम्न स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर सिर्फ कटाक्ष करने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ बोलोगे, तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता वर्ग है जो जवाब देगा। But should the issue get diluted? People like me in Parliament, outside Parliament, have always been very vocal on issues and have spoken substantially with evidence. और जब evidence का या substantial बोलने का किसी के पास सामने से जवाब नहीं था, तो उन्होंने ट्रोल किया, बद्दी बद्दी बातें कही। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूं, तो उससे जिस इशू पे, जिस मुद्दे पे मैं लड़ी हूँ, वो डाइल्यूट हो जाता है। पर जिस तरीके से आपको ट्रोल किया जाता था, आप पे कभी मेंटल इफेक्ट नहीं हुआ उसका? नहीं, उन पर मेंटल इफेक्ट हो रहा था, इसलिए वो ट्रोल कर रहे थे। मुझ पर कुछ नहीं हो रहा था। पर पर्सनल अटैक करना, फैमिली की बातें करना, पहले दिन से ही हो रहा था मेरे साथ। आंटी नंबर 1 एक हेडलाइन लिखी गई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली शंकर सन जिन्होंने वो हेडलाइन लिखी, हाल ही में उनका देहांत हो गया एज एन एडिटर। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द सो कॉल्ड मोस्ट सेलिब्रेटेड एडिटर्स इन द टेलीग्राफ। एंड ऐसे कई एडिटर्स और पत्रकार ऑफ कैमरा मिलते थे तो बड़ी तहजीब का वो कहीं ना कहीं परिचय देते थे, तमीज़ का परिचय देते थे। तो यू लिव, व्हेन यू लिव अ पॉलिटिकल लाइफ, यू लिव इन दैट डाइकोटमी। ये तीसरा माइक है, धन्यवाद भाई साहब। यू लिव इन दैट पॉलिटिकल डाइकोटमी where people, when they confront you when the cameras are on, will be extremely caustic, and the minute the cameras are off, the same journalist will be very, very polite. So I have seen that dichotomy, lived through it, and known that they are doing their job, and it's my responsibility to respond with clarity when a question is asked. अब जब आपने राजनीति में आप आई और अब आप राजनीति और एक्टिंग अपनी दोनों बैलेंस कर रही हैं। मैं पहले भी दोनों ही बैलेंस कर रही थी। नहीं, बट जब आप पहली बार, जब क्योंकि सास भी कभी बहू में थी जी, तब मैं यूएसए WHO की एम्बेसडर थी भारत में। तब भी मैं देश भर में, चूंकि उस वक्त मैं गुडविल एम्बेसडर थी, तो मेरा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में विधिवत होना
उस काम को कहीं ना कहीं धूमिल करता। इसीलिए जैसे ही मेरा वो गुडविल एम्बेसडरशिप का कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई विधिवत, और मेरा पहला असाइनमेंट था, मेरी पहली जिम्मेदारी थी महाराष्ट्र में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, और मेरे जो बैचमेट थे आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस। कुछ अब स्मृति जो एक्टर है उनमें कुछ चेंज देखती हैं आप? थोड़ा पेशेंस कम है, कुछ भी आप सेट्स पे कुछ अलग महसूस करती हैं, अपना कुछ पर्सनालिटी चेंज? मुझे लगता है कि जब महिला बड़ी क्लैरिटी से और शिद्दत से काम करती है, बोलती है, तो कई लोगों को ये खुशफहमी हो जाती है कि वो बड़ी इम्पेशेंट होगी। आई थिंक आवर सिस्टम इज सच दैट वाज बिल्ट विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, but it's only a little bit of impatience to wanting to do better for your country that will help you fix a particular system. So I think that when you tag me with the nomenclature, are you impatient as an actor or as a politician, it is more to do with my desire to continue to effect change. But as a creative personality, no, मेरी political परछाई मेरे creative काम पर कभी नहीं आती है। पर ये जो कई सारे लोग अभी ऑडियंस में हैं जो जेन जी जिनको हम बोलते हैं, जी, उन्होंने आपका पहली पारी अगर नहीं देखी है, उनके माँ बाप ने देखी है, हाँ, उनसे आप OTT पे कनेक्ट कर पा रही हैं? आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगी? क्योंकि अब उनके पास हज़ारों ऑप्शंस रहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप एक ऑप्शन बन के, जो मैंने टाइम स्पेंड की बात की कि नॉर्मल अगर ऑप्शंस पे वो लोग 28 मिनट स्पेंड कर रहे हैं और मेरे प्रोजेक्ट पे अगर 104 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, अब जेन जी जो हर सेकंड में स्क्रॉल कर रहा हो, हर 15 सेकंड में अपनी पूरी बात कह रहा हो, वो अगर 104 मिनट मुझे दे रहे हैं, आई थिंक देयर इज समथिंग इन देयर। And what do you think that you brought to the table which still managed to get people to connect with you? Younger, medium age, and your most loyal audience. I think ultimately we all have the same relationships, the same emotions. It is just that emotion को बयान करने का अंदाज बदल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें शायद कभी नहीं बदलती। अगर आप दृढ़ संकल्प रखते हैं जीवन में, प्रिंसिपल्ड हैं, और आपके प्रिंसिपल का टेस्ट आप ही के परिवार में हो रहा है, तो वो कई लोग इससे खुद गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं एज चाहे बदल जाए, रिश्तों के रूप बदल जाएं, जैसे सीरियल में कहा जाता है, पीढ़ी आ रही है जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ जो हैं वो आज भी सत्य हैं जो 25 साल पहले भी सत्य थी। दैट व्हेन दोज हु आर प्रिंसिपल्ड आर चैलेंज्ड either within a system or within a family unit, how do they respond or what challenges do they face themselves? That is the quintessential story of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and I think that's what I think helps connect with a lot of generations and geographies. Because एक अकेले हमारे देश में नहीं, इसको उतना ही लोगों ने अलग अलग देशों में, लगभग 50 देशों में देखा, और कई भाषाओं में इंटरनेशनली इसको डब भी किया गया। क्योंकि आपका जो टीवी का किरदार है वो हर जनरेशन में कनेक्ट कर पा रहा है, लेकिन जो इस वक्त की हमारी पॉलिटिक्स है उसमें एक नैरेटिव है कि अभी की आपकी पार्टी, आपकी सरकार, उसका टोटल डिस्कनेक्ट है, और जो युवा हमारे हैं देश के, अब वो डिससैटिस्फाइड हैं, वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। जो हमारे पूरे अभी नेबरहुड में देखा जा रहा है, भारत भी उसी कगार पर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की और भारत की संवैधानिक जो प्रणाली है उसकी बहुत बड़ी तौहीन है अगर किसी विपक्ष के नेता को ये लगता है, क्योंकि ये शब्द आपके नहीं, विपक्ष के एक नेता के हैं, विपक्ष को अगर ये लगता है कि भारत के लोकतांत्रिक पूरे एक प्रोसेस में देश के नौजवान को विश्वास नहीं है, तो वो शायद देश के नौजवान को समझा नहीं है। देश के नौजवान ने मात्र पॉलिटिक्स 5 साल में एक बार वोट देकर नहीं की। देश का नौजवान आपको आज कहीं बाढ़ आती है तो भी एक्टिव दिखता है, कहीं किसी बच्चे को आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल पहुंचाना है या एक्स्ट्रा क्लासेस में मदद करनी है, वो भी करता है। वो पॉलिटिकली सरचार्ज सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं है, चुनाव के इतर भी है।
और उसका पॉलिटिकली कनेक्टेड रहना ये बतलाता है आपको कि उसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास है। और जब मैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करती हूँ या संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जिनको मान्यता प्राप्त हो चुकी है उसकी बात करती हूँ, तो उससे मीडिया अछूता नहीं है। तो अगर आज NDTV एक युवा का मुंबई चैप्टर कर रहा, वो युवा वर्ग यहाँ बैठा है, दैट मीन्स faith in the system is alive and is thriving because media itself चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। पर उनका तो कहना है कि आप लोगों को भुलावे में रख रहे हैं, जो युवा है उनका हक ही छीना जा चुका है। युवा मुझे लगता है भुलावे में जा रहे हैं इलेक्शन। अब मुझे लगता है कि जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को और इंटरनेशनल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस के माध्यम से इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के एज में जी रहा हो, अगर हम ये कहते हैं कि आज से 50 साल पहले अखबार जो छप रहा है उसमें क्या छपेगा वो कंट्रोल्ड है, तो आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो सरकार अथवा सरकारी तंत्र के बारे में चर्चा कर रहा है वो एक लिमिटेड कंट्रोल का विषय है। या फिर हम कहते हैं कि सिर्फ दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है, तब आप कह सकते हैं कि एक कंट्रोल्ड रेज्यूम है। आज आप जैसा प्राइवेट सेक्टर का चैनल भी चल रहा है और बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स भी उपलब्ध हैं जिसमें जनता स्वयं और युवा स्वयं कंटेंट बना रहे हैं। ऐसे में कहना कि आवाज़ दब गई है, दबी होती तो कंटेंट कैसे बनता? अच्छा, कंटेंट की आपने बात की है, अब मेरे को आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल करने हैं। हम बम्बई हैं तो आपको करण जौहर की लत नहीं लगेगी तो कैसे होगा? नहीं बिल्कुल, अब देखिए बम्बई में थोड़ा सा तो फील्स हम ही ले सकते हैं ना। भले सिर्फ हैम्पर मिसिंग है भले से और राहुल कंवल जी सामने बैठे हैं तो मतलब हैम्पर की व्यवस्था बजट से हो ही जाएगी। You know, भले से we have nothing else in common with Karan Johar, but at least I have the rapid fire that I can copy. So, what is the one thing that you miss most about Delhi? I don't. I still live in Delhi. नहीं, but आप ट्रैवल करती रहती हैं. What do you miss most about Parliament? I don't. I'm still connected to Parliament. Okay. बट सबसे बड़ी खुशफहमी ये है कि आप पार्लियामेंट से तभी कनेक्टेड हैं जब आप वेल में जा रहे हैं अथवा वहाँ पर बोल रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम इतनी रोबस्ट है कि आप कमिटीज़ के पास जाकर, और मैं तो क्योंकि एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के एक ढांचे के साथ हूँ जो अपनी पार्टी का पक्ष, कार्यकर्ता का पक्ष, अपनी संसदीय जो हमारी टीम्स हैं उनके साथ, हमारे सांसदों के साथ हमारी बतौर बातचीत रहती है हर मुद्दे पर। तो कम से कम मेरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कार्यकर्ता अपने आप को पार्लियामेंट्री सिस्टम से डिस्कनेक्टेड नहीं समझता। जब आप संसद में डिबेट्स देखती हैं तो आपको लगता नहीं है, एक क्षण के लिए मन में नहीं होता कि मुझे भी नहीं, मुझे रिग्रेट करने की आदत नहीं है। I don't have FOMO. But as very recently Cillian Murphy has possibly said that Congress may have ROMO. Relief that I'm missing out, but I don't have FOMO. अगर कोई एक चीज़ होती, कई बार लोग अपना आत्ममंथन करते हैं, तो कभी आपने वापस सोचा है कि एक ये चीज़ मुझे अलग कर लेने का अगर मौका मिलता तो मैं ये बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है, और विशेषतः अगर आज युवा पीढ़ी सुन रही है तो ये कहना बहुत ज़रूरी है, आप जो भी निर्णय लेते हैं ज़िंदगी में, आपकी वर्तमान परिस्थिति के आधार में, आपकी वर्तमान कैपेसिटी के आधार पर और आपके पास आज जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर लेते हैं। आप वो निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको लगता है वही निर्णय सबसे श्रेष्ठ है। तो उस लम्हे में अगर आपको लगता है वो निर्णय श्रेष्ठ है और आपने मर्जी से वो निर्णय लिया है तो आप रिग्रेट कैसे कर सकते हैं? अगर किसी ने कभी आपको, फैमिली ने कहा कि ये डिफरेंटली कर सकते थे, कभी ऐसा एडवाइस आपको मिला है? नहीं, मेरी फैमिली मुझे पॉलिटिक्स पर एडवाइस नहीं करती। मैं उन महिला पॉलिटिशियंस में से नहीं हूँ जिसकी चाबी किसी और के हाथ में है। Thing that comes to your mind when we say the following words. मैं कुछ एक शब्द बोलूंगी, मुझे तो पता है एक नाम जो आने वाला है। कुछ शब्द बोलूंगी, पहला वर्ड अनफिल्टर्ड जो आपके दिमाग में आए। जेनजी। एम्बिशियस। आप देखिए, आपका चेहरा एम्बिशियस सुन के और उनकी तालियों में फ़र्क है। हमारी जनरेशन को कहा गया था, और अगर आप विशेषतः मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो एम्बिशन होना अच्छी बात नहीं होती थी,
You were shamed if you said, I am ambitious, more so if you're a female and you said that you're ambitious. But the fact that you were received with claps means that this generation is unabashedly chasing its ambitions and its dreams. एम्बिशन को कभी कभी एरोगेंस से कंफ्यूज कर दिया जाता है. वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी एक लक्ष्य रखा नहीं है जीवन में. जो जीवन में लक्ष्य रखता है और जिसकी मछली की आंख पर सिर्फ ध्यान रहता है, वो इसलिए भी शायद एरोगेंट कहलाया जाता है क्योंकि वो आसपास के अपने वातावरण को नहीं देख रहा होता व्यक्ति. तो इफ़ यू हैव आई ऑन अ पर्टिकुलर गोल, इफ़ यू आर एम्बिशियस एंड समबडी misconstrues you to be arrogant because you have no other time but for that ambition, then that is one of the happenstances that happens on the journey of fulfilling your ambition. अगला शब्द वोट चोरी. An insult to the Indian democracy, because it is an attack mounted by the opposition when it has definitely failed to receive the trust of the Indian voter. So just because the Indian voter doesn't trust you, so the opposition now has decided to spite the very election commission that ensures democracy in our country, that very media that reports if there are any mishaps or for that matter attacks on our democratic system. It also insults the judiciary that is watchful of all that transpires in our country, especially elections. Chunav Aayog. To be respected for ensuring that the oldest civilization in the world is a thriving democracy. Priyanka Gandhi. I will not say who. अब पता नहीं कितने बच्चों को याद होगा. आपने सोचा था कि एक नाम आएगा, ये नाम थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था. नहीं, ये भी आपने वो पॉलिटिशियन क्या पॉलिटिशियन जिसे आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी लगे. नरेंद्र मोदी. More than a legend. You see, we always celebrate his potential as Prime Minister and his contribution as a politician. Look at him from the prism of a human being. That 75 years ago, born in a very poor family in Gujarat, he left his family because he wanted to contribute, not because he had the ambition to be Prime Minister or Chief Minister. Imagine in those circumstances with no resources, to leave, to go to every corner of this nation, to understand every facet of our needs as people, and to then serve it incessantly and diligently. That's one hell of a person to look up to and learn from. Donald Trump. अभी उसका भी नहीं बोलूँगी. Who trade talks are on continuously. Some new headline comes. So I'll be a very, very diligent BJP worker and a very, very responsible citizen. And I believe, given how negotiations go every day, anything we say on a public platform such as this, and if it is used as an instrument against my country to hurt the trade potential of my country, then that would be a great, great disservice to my country. So I will reserve my comments on that particular name. स्मृति जी, आप लोगों से जाकर के अब जब इंटरैक्ट करती हैं, यू हैव मेनी प्लेटफॉर्म्स वेर यू इंटरैक्ट वन ऑन वन एंड यू कंटिन्यू टू डन इट व्हेन यू वर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आप अभी भी जाके महिलाओं से, यूथ से जब मुखातिब होती हैं, आपको आज के युवा में और 11 साल पहले के युवा में क्या फ़र्क दिखाई देता है हमारे देश में? देखिए, जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री की जर्नी पूरी कर रहे थे, we discovered this whole governance potential of digital India. Today, when I meet youngsters, I look at the aspect of digital maturity of a democracy. That they use instruments of communication to not only voice their personal opinion, but they also use it as an instrument of change. That when a certain challenge is identified, they respond to it not with a sense of rebellion, but with a sense of responsibility.
And I think that is what makes our youngsters extremely vibrant. आज आपको लगता है कि जब युवा आपसे मिलते हैं तो उनको एक उम्मीद है आने वाले सालों में? युवा होने का मतलब ही उम्मीद का होना है. ये तो उम्र का तकाजा है जब मोड़ पर एक उम्मीद छूट जाती है, टूट जाती है. युवा का मतलब आग, युवा का मतलब परछाई भी, युवा का मतलब उम्मीद भी, और युवा का मतलब उद्देश्य भी. वापस रैपिड फायर पे आती हूँ. विपक्ष इररिस्पॉन्सिबल. और तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल ही रहा है कि युवा विपक्ष के बारे में क्या सोचता है. कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जो आपको लगता है जिससे उम्मीद की जा सकती? नहीं. कोई भी नहीं. सर, वुड यू वांट टू से समथिंग हियर इन द फ्रंट? नहीं, वो हाथ जोड़ के बैठे हैं. पर ऐसा देखिए पद्मजा जी, बहुत कम होता है कि बीजेपी वाले मंच पर हों, सामने से मीडिया मौका दे रही हो और विपक्ष का नेता नमस्ते कर रहा हो. फिर मत बोलना कि बोलने का मौका नहीं दिया था. और अब राहुल कंवल जी कह रहे हैं कि जल्दी से माइक थमाओ. नहीं, देखिए हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है. विपक्ष का नेता वहाँ है, मध्य में एडिटर है और एडिटर के साथ सेफोलॉजिस्ट बैठा है. लेट इट बी नोन, हमने विपक्ष की आवाज बुलंद की है. Sir. Thank you, ma'am. Thank you, Smriti ji. But thank you, Padmaja, for putting me in a spot. I was merely here to listen in and understand how she's been. You've just fallen into the trap. It looks like, one thing I've realized is, never ever come in the between of a good banter that's going on between the two of you. And especially when two women are talking, yes. I didn't want to say that. Because I see a lineup of men hoping to delve into something between you, Rahul Kanwal and Pradeep ji. कोशिश कर रहे थे मैम, but I've been married for 20 years, so I've realized, I've learned. Ladies and gentlemen, especially young girls, you need to see it's 2 women against 3 men. Yes, go ahead. Padmaja, I'm right now tongue-tied, completely tongue-tied. I'm just going to listen in and thank you. Thank you for whatever she's saying. She's, of course, absolutely entitled to her opinion. I have a lot of differences with BJP and what Smriti ji says, but nevertheless, she is a brilliant speaker, so I'm here to listen in. Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. Cheers. और मैम ये बताइए कि कोई संवाद की अब जगह नहीं रह गई है. एक तरफ हम देखते हैं. नहीं, आपने अभी संवाद का एक यहाँ पर दर्पण देखा. हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है डिफरेंसेस का होना एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है. डेमोक्रेसी इज एसेंशियली नॉइजी, लेकिन डिफरेंसेस का होना और पॉलिटिकली एक दूसरे से डिफर करना और राष्ट्र को गाली देना उसकी वजह से, वो किसी भी हिंदुस्तानी को मंजूर नहीं होगा. So Prime Minister himself has maintained, you want to attack him, you want to attack the BJP, but when does that then ricochet and become an attack on everything India? That is where the challenge is for the opposition. It seems that when the tongue lets loose, it goes completely out of control. So KTR has been extremely, I think today, kind that yes, both our political organizations' ideologies are at loggerheads, but as human beings, can we talk on issues and bring both our points of view together so that people at large can respond to it? That is the sign of a very mature democracy. Next word, देश. सब कुछ एक शब्द में कैसे समाएगा? क्या है देश? न सिर्फ एक झंडा, न सिर्फ एक राष्ट्रगीत, न सिर्फ एक मिट्टी, न सिर्फ वो जवान जिसको हम लोग इंस्टाग्राम पर देखकर ट्रिब्यूट देते हैं, न सिर्फ 26 जनवरी, न सिर्फ 15 अगस्त. हर क्षण, हर पल जब हम सर उठाकर जीते हैं, उस देश की बदौलत ही तो जीते हैं. तो उस देश को एक शब्द में कैसे ढाल दो? वो एहसास है जिंदगी भर का. सिंदूर पराक्रम भारतीय सेना का. एक हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में
सिंदूर प्रतीक है बंधन का, एक महिला और उसके पति के बीच का, लेकिन अब सिंदूर एक बंधन का प्रतीक बन गया है एक देश का अपनी आर्म फोर्सेस से, और पराक्रम का एक बहुत बड़ा सबूत बन चुका है। उम्मीद। युवा। युवा। उम्मीद। अरे और भी तो कोई शब्द होगा जब आप मैंने देश इतने के युवा चार को अलग अलग पंक्तियों में युवा को अलंकृत करने की कोशिश की थी। मैंने कहा ना, इट्स नॉट दैट दे आर ड्रिवन बाय रिबेलियन, दे आर ड्रिवन बाय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ नॉट दैट दे ओनली रिसीव कंटेंट, दे रिस्पॉन्ड टू इट. It is not as though they use content only to strike at a particular discord. They also try and use content to deliver a positive message. It is always, I think, somewhere disadvantageous to call them leaders of tomorrow, because they are leading today, they are changing today, they are doing what needs to be done now. Social media? A tool, if utilized productively, can build society more empathetically. Or trolls? Part of the job. कुछ कहना चाहेंगी कुछ ट्रोल से जो आपको यहाँ है हाल क्या? फिलहाल में मिस कर रहे हो? नहीं, अभी हम ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं ना, तो कुछ अगर नहीं, आपको देख रहे हैं, आप miss कर रहे सोचिए हैं, ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में कितना फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, नाराज होगा, बॉस से परेशान होगा, बीवी से परेशान होगा, या हस्बैंड से परेशान होगा, और वो व्यक्ति कहीं और नहीं वेंट कर सकता, आप पे वेंट कर सकता है। तो जिसको इतना मेंटल का संघर्ष हो रहा है, उसके संघर्ष में मैं इजाफा क्यों करूं? वेंट कर ले भैया या बहन जी, जो भी है, नॉट अ प्रॉब्लम. यू सी, यू कैन नॉट से यू वांट टू बी अ पब्लिक पर्सन, यू कैन नॉट से यू वांट टू बी इन पॉलिटिक्स and then sit at a corner and say, this is what a troll did to me, especially if you're a female in politics. I believe that as women in politics, it is our responsibility, my responsibility, to keep focus of people on issues which mean something for my country, for my people, for my citizens, across generations. I cannot become the focus of the conversation. Hence, to keep the focus on the issue, it does not matter. And I know many a times I am attacked only because the issue and my response to it has no response from the opposition. And it has also become a ticket for promotion within a particular political organization. That how dirty can your attack get on Smriti Irani? That is how much you will rise on that political ladder. If I am helping people get a better position, well, good luck to them. But such people in the long run in politics do not survive. आपको लगता है ये कंपटीशन किया जाता है कि भाई स्मृति ईरानी को मुझे कौन लगता ज़्यादा नहीं, मैं बिना प्रमाण के बोलती नहीं हूँ. मैंने उसे होते देखा है, और ये एक टेम्पलेट बन गया था जो आज भी है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं जाने अनजाने में ऑपोजिशन में भी किसी के करियर को बनाने में अपना सहयोग दे रही हूँ तो ठीक. ग्रेट. आपने सबकी बहुत बहुत मदद की है, बहुत लोगों की मदद की है, कम से कम उनका करियर किक स्टार्ट या एडवांस करने में. हम कुछ लोगों ने तो मेरे बारे में गाने वाने गाए हैं. हाँ जी. कुछ लोगों ने गाने गाए, कुछ लोगों ने मीम बनाए. सो थैंक यू. हम 2 सवाल लेंगे ऑडियंस से. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर इन द ऑडियंस जो हमारे युवा है यहाँ पे, जो सवाल पूछना चाहते हैं स्मृति जी से. 2 सवाल. प्लीज अपना नाम बताइएगा, सिर्फ 5-6 शब्दों में अपना सवाल पूछिएगा. दैट गर्ल ओवर देयर, दैट लेडी इन ब्लैक, प्लीज इनको माइक दीजिए. अपना नाम और छोटा सा सवाल प्लीज. हाँ जी, आप येलो शर्ट. Good evening, ma'am. My name is Meghna Devkar from KC Law College. My question is, do you think leaders today risk becoming influencer in politics rather than political leaders in influence? I think that there's an oxymoron which is hidden in your question. What kind of a leader is one who cannot influence? And what kind of an influencer exists today at least, who does not have the potential to become a politician?
So if a youngster can see a story, a content piece in 15 to 30 seconds, then that youngster has a political future. Great. This gentleman here, please. Yes. नमस्ते मैम, माय नेम इज़ अर्जुन राय, आई एम फ्रॉम दी नवी मुंबई। मैम मेरा सवाल ये कि अभी परसों के दिन में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड ही टोल्ड कि जो वोट डिलीशन है वो ऑनलाइन होता है, बट ऑन अदर हैंड ECI हैज़ पब्लिश्ड 175 क्वेश्चनर एंड उनके आंसर्स के साथ कि कैसे वोट डिलीशन का प्रोसेस है एंड यू कैन डाउनलोड द फॉर्म फॉर द वोट डिलीशन। अगर वो इसको नहीं पढ़ रहे सो आप इसको कैसे एड्रेस करोगे? देखिए, आप ही ने एड्रेस कर दिया, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप जैसे यंगस्टर्स को भ्रमित करना चाह रहे थे। मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि जिस इलेक्टोरल प्रोसेस को लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने नहीं पढ़ा, उसे एक यंगस्टर ने मुंबई में पढ़ लिया है। आखिरी सवाल स्मृति जी आपसे, वन वर्ड जिसका आपका पहला रिएक्शन। तुलसी। पेचेक। ओके। और मैं ये जानबूझकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो यंग लड़कियाँ हमारे आज ऑडियंस में हैं वो इस बात को समझें। 25 years ago when I began my journey as a creative person, और हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्री के लेजेंड बैठे हैं इस वक्त यहाँ, तो मैंने उनका भी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका टैलेंट चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ही टैलेंटेड लोगों को जब वो शुरुआती के दिन होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि भाई इतनी तुम्हारी अभी औकात नहीं हुई है कि तुम्हारा अच्छा सा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या अच्छा सा पेचेक हो। तो अगर आप अपने टैलेंट के आधार पर इतनी औकात कहीं ना कहीं बना लेते हैं, नेगोशिएट योर कॉन्ट्रैक्ट वेल, गेट अ गुड पेचेक, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो इंसान अकेला उसी को झेलता है। सो दैट इज़ माई one word response, paycheck. And especially when I saw Javed Saab there and I thought of that, so I'm like, negotiate your paychecks well. Career advice from none less than Smriti Irani Hassan. तो उसको गार्ड बांध के रखिएगा। स्मृति जी, thank you as always for being frank and forthright. और अब एक धमाका जो पूरे दिन की एनर्जी को म्यूजिक में बदल देगा। फ्रॉम सोलफुल रोमांटिक ट्रैक्स टू पेपी चार्ट बस्टर्स, फ्रॉम बॉलीवुड हिट्स टू ग्लोबल कोलैब्स, Arman has redefined what it means to be India's youth music icon. He is not just a singer, he is a storyteller. एक ऐसी आवाज जो इमोशंस को मॉडिफाई करती नहीं है बल्कि मेलोडी में बदल देती है। दोस्तों, get ready to sing along, groove along and feel every beat, क्योंकि स्टेज पे आने वाले हैं the heart throb of millions, Arman Malik. Joining him, NDTV's very own musical sensation Ashutosh Chaturvedi. क्या बात है बेट्स। तो बहुत इंतजार कराया आप लोगों को, है ना? सबके अरमा आंसू में बिल्कुल नहीं बहेंगे। कुछ करें, पागलपंती, मौज मस्ती। बहुत देर से इंतजार कर रहे हो आप लोग। सुबह से जब से हमारे एंकर्स को होस्ट हमारे पूछ रहे थे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा अरमान मलिक, अरमान मलिक, अरमान मलिक। लेकिन पहले मैं बुलाऊं स्टेज पे, उसके पहले मुझे चाहिए बोस। क्या चाहिए और कैसे? बोलिए अरमान मलिक। कुछ तो कर लो, तालियां जोरदार अपने लिए और अरमान मलिक के लिए। स्टेज सेट तो करो दोस्तों, माहौल गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं। आई डोंट लाइक इट। तो जो सुरों के हैं बादशाह, म्यूजिक कंपोजिंग की दुनिया में सबके हैं मालिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अरमान मलिक। अभी बनाइए।
और मैं क्या करता हूँ हमेशा ना, स्क्रिप्ट फॉलो करता नहीं हूँ, पीछे से बोलते हैं मुझे क्यों नहीं फॉलो करते हो यार, मुझे लाइव जीना पसंद है। क्यों अरमान, सबके अरमान में। हेलो, ये चल रहा? हाँ, अमेजिंग। कैसे? अच्छा, ये लोग ऑडियो पे चेक करते हैं ना सिंगर्स, कैसे? प्लीज चेक करना पड़ता है, बट थैंक यू एवरीवन फॉर वेलकमिंग विद मी विद सो मच लव। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ विद सच अमेजिंग पीपल। जावेद साहब सलाम, इट्स सो गुड टू बी हियर एंड आई होप कि हम लोग एक माहौल बना पाए यहाँ पे कॉन्वर्जेशन का, म्यूज़िक का, और हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे गाने भी गाएंगे। यस, परफॉर्मेंस है ना, यस, थोड़ा और से लेडीज एंड वही हो जाता है ना, सिंगर के साथ उनको बातें नहीं सुननी, उनको सिर्फ गाने सुनने हैं। सुनने हैं कि नहीं सुनने? बट बातें भी करेंगे, थोड़ा बातें करेंगे। बातें जरूरी है, तेरा मिलना जरूरी, तू पहला पहला प्यार है मेरा। अच्छा, आप ही कॉन्सर्ट कर लो, मैं चले जाता हूँ। प्लीज। मूड सेट करना बहुत जरूरी होता है, स्टेज सेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे रिदम सेट करते हैं तो अपने साथ म्यूजिक, और अरमान मलिक हैं तो दिल के अरमा बिल्कुल निकलने चाहिए। फ्रॉम चाइल्ड आर्टिस्ट टू वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लव्ड कंटेम्प्रेरी वॉइसेस, अरमान मलिक। स्टेज पर सबसे पहला मैं पहले सवाल पूछ देता हूँ, स्टेज पर आती है तो क्या सोचते हैं? ये मेरा पहला सवाल। स्टेज पे जब मैं आता हूँ तो बस एक क्योंकि आप सोच रहे थे और पूछ भी रहे थे कि क्या कहना है, क्या करना है। एक ही ख्याल है मेरा, बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एक नेचुरल जो पर्सनालिटी है वो स्टेज पे रिफ्लेक्ट हो, लोगों का प्यार मिले, मेरे सुर सब अच्छे से लगे, ये सब चीज़ें चलती है मेरे दिमाग में। अच्छा, मेरा सवाल है कि संगीत म्यूजिक में आप खुद सिंगर भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी, डायरेक्टर हैं, तो कौन सा गाना खुद गाना है और कौन सा गाना दूसरों से गवाना है, ये कैसे तय करते हैं आप? जिस गाने का मुझे लिरिक्स नहीं याद है तो वो मैं बाकियों से गवा देता हूँ। सीधा माइक यहाँ पे करके। बहुत सारी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मैं 10 या 11 भाषाओं में गाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे सब लिरिक्स याद नहीं रहते। यूजुअली मेरे शोज़ पे एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, जो भी मैं कभी कभी तेलुगु में गाता हूँ या तमिल में गाता हूँ, कन्नड़ा में गाता हूँ, तो मुझे वो लिरिक्स बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन कभी कभी जब याद नहीं होता है तो मैं उस ऑडियंस की तरफ मैं माइक कर देता और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश समेत और भी कुछ भाषा में गाएं, भोजपुरी सिर्फ छूट रहा है। क्यों? भोजपुरी के भी बहुत दर्शक होंगे यहाँ पे, टीवी पे तो सुन ही रहे होंगे। भोजपुरी से अभी तक मुझे कोई मतलब ऐसा कुछ ऑफर नहीं आया है, बट पता नहीं, सोचना अगर पड़ेगा। आ गए तो सोच समझ के करना पड़ेगा, वो गाना करेंगे ना। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। अभी हमारे एनडीटीवी के व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, और यहाँ जो बैठे हैं सुबह से वेट कर रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं सभी, अरमान मलिक कब आएंगे, तो आपको अभी इस वक्त क्या, कौन सा गाना अभी सोच रहा है? वैसे तो मैंने तैयार किए हैं 4-5 बहुत प्यारे से गाने जो आप लोग सबको बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो आपने ऑलरेडी एक डेमो दे चुके हैं आप। नहीं, वो मैं कोशिश कर रहा था। वो तो मैं सब, मेरे म्यूजिशियंस भी हैं यहाँ पे, तो मैं उनके साथ प्रॉपर्ली परफॉर्म करूँगा। ठीक है। तो डेमो ही नहीं, पूरा ही वो आपको पूरा ही परफॉर्मेंस सुनने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के जो मूवी थी उसमें से जो गाने थे, जब तक, कौन तुझे, फिर कबीर सिंह मूवी से पहला प्यार जो आपने गाया, और उसके अलावा मैं सरप्राइजेस थोड़े से रखना चाहता हूँ परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं ज़्यादा 2 लाइन अगर हो जाए तो थोड़ी आपकी आवाज़ में अलग ही बात है। तू पहला पहला प्यार है मेरा, अभी बाद में मैं गाऊंगा। ये भी सुर में था। एड शीरन के साथ भी आपने 2 स्टेप किया जी, और मैं देख रहा था कि आप इंडिया में कहीं, महाराष्ट्र में, भारत के किसी भी राज्य में, भारत छोड़ दीजिए, अब तो लंदन में भी आपके कॉन्सर्ट हाउसफुल रह रहे हैं। एक्स फैक्टर क्या है, कैसे? मुझे नहीं था, आई थिंक एक जेंजी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे यूथ से बहुत प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, एंड यहाँ पे जो भी है ऑडियंस में, वो मेरे लिए इतना चीयर करे, इतना प्यार देते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस रहा है। बट मुझे एक और चीज़ मुझे लगती है, अगर आप पूछ रहे हो टेक्निकली कि क्या रीज़न हो सकता है, मैं बहुत सारे भाषाओं में गाता हूँ, तो जो भी स्टेट में जाता हूँ मैं उस भाषा में
मेरी जो सेट लिस्ट है वो बदलती रहती है। अगर मैं कर्नाटका जाता हूँ तो कन्नड़ा के जो गाने हैं मेरे वो मैं इंक्लूड करता हूँ, या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में मैं तेलुगु इंक्लूड करता हूँ सेट लिस्ट में। उस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ की ऑडियंस और मेरे बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बन पाता है, और वो बार बार हर साल मैं कॉन्सर्ट्स वहाँ पे करता हूँ, तो वो जो एक रिलेशनशिप है वो हर साल स्ट्रॉन्गर होते जाती है। आपका बैकग्राउंड चूंकि म्यूजिक फैमिली बैकग्राउंड रहा है, तो ये आपके लिए एक एड ऑन रहा है, ये यूएसपी रही है या फिर एक चैलेंज रहा है आज के दौर में? वैसे तो इनिशियली मुझे ये सरनेम बहुत खटकता था, क्योंकि इतनी बड़ी सरनेम है। मेरे दादा श्री सरदार मलिक साहब जो कंपोज़र रहे हैं 60s के मूवीज़ के, फिर उसके बाद मेरे अंकल अनु मलिक, मेरे डैड डबू मलिक, और मेरे भाई अमाल जो अगेन कंपोज़र हैं। तो पूरी फैमिली में कंपोज़र्स रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं अलग क्या कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार मैं सिंगर बन जाता हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के अलावा किसे सुनना पसंद करते हैं? कौन सा अभी मौजूदा सिंगर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मेरा मतलब बचपन से एक ही फेवरेट सिंगर रहा है, वो सोनू निगम सर। वाह, मैं उनको सुन के बड़ा हुआ हूँ, और मुझे यही लगता है जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी गाना हो, सोनू सर कैसे गाएंगे, हर नोट को, हर सुर को बांध के रखेंगे, वैसे ही मुझे भी गाना है। कुछ अभी ध्यान में आ रहा है सोनू जी का, अगर वो सुन भी रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बिल्कुल यहाँ पर भी हैं। मुझे सिर्फ ये बात का थोड़ा डर है कि कहीं वो गाने के राइट्स आप लोग के पास है या नहीं, बाद में कट ना जाए। देख लेगी हमारी टीम। ठीक है। कौन सा गाना आपका फेवरेट है उनका? मेरा पसंद है, एक लाइन गा दूं फिर आप? ओके, अभी मुझ में कहीं नहीं। ओह यस ऑफ कोर्स। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। कॉम्बो अच्छा है। वाह अरमान। अभी जब पुराने हम किसी भी सिंगर्स की बात करते हैं, बहुत लोग नाम लेने से कतराते हैं, मौजूदा में तो बिल्कुल नहीं लेते। आपने सोनू सर का लिया तो बहुत अच्छी बात है। पुराने सिंगर्स में कौन? मोहम्मद रफ़ी साहब। तो फिर अगर मैं सोनू सर का फ़ैन हूँ तो ये जाहिर सी बात है कि मैं मोहम्मद रफ़ी सर का फ़ैन रहूँगा, क्योंकि वो जो एक टोन है, वो जो एक टिम्बर है, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ हो जाए प्लीज़। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। क्या बात है, शानदार। एक और कोशिश करें, हिमाकत करें, आज्ञा लें। आप यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं और सामने जावेद साहब बैठे हैं, चल के गाएं और कुछ उनको स्टेज पर लाएं, आपको आशीर्वाद दिलाएं। मैं तो चाहूंगा डेफिनेटली, अगर जावेद प्लीज चलिए ना, लेकर आते हैं, खुद चलते हैं। तो। और लेजेंडरी जावेद अख्तर सर के लिए जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज सर। सर यो देखिए, ये ट्रेडिशन, ये आशीर्वाद कायम रहे, बनता रहे, ये परंपरा कायम रहे। अरमान मलिक को देखा आपने कैसे जावेद साहब का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। प्लीज अरमान, यू फर्स्ट, यू ओके। जोरदार तालियां, रुकनी नहीं चाहिए जावेद साहब के लिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये मोमेंट आप लोगों की लाइफ में बहुत कम आता होगा जब सामने साक्षात जावेद साहब खड़े हों। आपने बचपन से देखा, लिखा, पढ़ा, सुना, सब कुछ फिल्मों में इनको सुना, इनकी लेखनी सुनी। जावेद साहब, आप प्लीज, आप चाहे तो बैठ जाएं। आप बैठे ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि 2 चेयर हैं वहाँ और आदमी 3। नहीं, आप बैठेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम जेंजी हैं सर। माना के दिल्ली नहीं है। देखिए अभी सुनिए, माना के दिल्ली नहीं है, मगर फिर भी कुर्सी का तो झंझट थोड़ा हो जाता है। सर ऑल प्लीज आइए।
जावेद साहब फरमाइए। मोहम्मद रफ़ी साहब के पास ये ले गए और आपके दौर में उस वक्त ले गए और वहाँ से ये सफ़र। सबसे पहले एनडीटीवी के व्यूवर्स को, जो करोड़ों लोग सिर्फ भारत में नहीं हमें विदेशों में देखते हैं, एनडीटीवी इंडिया के माध्यम से, और यहाँ जो लोग मौजूद हैं सबको क्या आप संदेश देंगे अभी? और अरमान मलिक भी साथ बैठे हैं तो इनके माध्यम से। जब इतनी अच्छी आवाज़ के लोग बैठे हैं तो आप मेरी आवाज़ में क्यों संदेश लेना चाहते हैं? या आपको गा के संदेश देंगे? मैं तो बोल के दे पाऊँगा। एक माइक और दे दीजिए अरमान को भी प्लीज़। वेरी प्राउड ऑफ हिम। आपको मालूम नहीं इनकी रगों में म्यूज़िक है। ही इज़ द 3rd जनरेशन म्यूज़िक डायरेक्टर। तालियां। आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा एक गाना। पहले आजकल तो क्या होता है, गाना सुना नहीं जाता, देखा जाता है, इसलिए कि वो टीवी पे विजुअल के साथ आता है, लेकिन तब तो रेडियो पे बजता था। ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि स्क्रीन पे किसने गाया है और कौन किसके लिए गाया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं था, गाना इम्पोर्टेंट था। आप में से कितने लोगों ने, मुझे मालूम नहीं, सुना होगा कि नहीं, एक गाना है सारंगा तेरी याद में नैन मेरे बेचैन। ये इनके ग्रैंडफादर के गाना है। तो ये ख़ानदानी लोग हैं भाई। जोरदार तालियां। क्या सारंगा ध्यान पे आ रहा है क्या आपको? कुछ गुनगुना दें। मैं बचपन से वो गाना मतलब सुनते आ रहा हूँ, सीखते आ रहा हूँ। मेरे फैमिली का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट गाना है वो सारंगा तेरी याद में। मुकेश सर ने गाया था ये गाना और आई थिंक सर ने बात छेड़ दी है तो मैं थोड़े प्लीज गाई दूंगा। वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव। हो आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गम। हो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। इनसे मेरा कुछ और रिश्ते भी हैं जो कुछ तो ये जानते हैं, कुछ जानते भी नहीं होंगे। एक तो खैर ये है कि इनके जो चाचा हैं अन्नू मलिक साहब, उनके साथ तो मैंने बहुत फिल्में की हैं, लेकिन एक फिल्म थी ठोकर, उसमें शम्मी कपूर हीरो थे और उसमें म्यूज़िक सरदार मलिक साहब की थी। उसमें एक गाना था, ए गमे दिल क्या करूँ ए वहशते दिल क्या करूँ। जी। वो गाना मेरे मैटरनल अंकल का लिखा हुआ था। हालांकि वो कभी फिल्मों में नहीं आए, लेकिन ये पोएम किसी प्रोड्यूसर ने ख़रीद ली थी और उसे यूज़ किया था। मुझे तो याद है गाना। तो दोनों तरफ ही जनरेशन लगी हुई हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट है कि मैं जावेद साहब के साथ यहाँ पे स्टेज पे हूँ एनडीटीवी के माहौल में। मेरे दादा और दादी बहुत ही खुश होंगे ऊपर कि मैं इस माहौल में हूँ, इस स्टेज पे इतने बड़े हस्ती के साथ हूँ। और यही म्यूज़िक की बात है, लोगों जेनरेशन्स को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे इतने अमेजिंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को मिल रहा है और आपको आशीर्वाद ऊपर से मिल रहा होगा। और चूंकि हम जावेद साहब को लेकर आए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि बहुत सत्सम्मान हम लेकर जाएंगे। बट मगर जाने से पहले मैं राहुल साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। बुला ले राहुल साहब। नहीं वो वहाँ बैठे हैं, बादशाह को हर एक को थोड़ी बुला सकते हैं आप। आपने मेरा जैसा समझाया क्या कि बुला लिया? जावेद साहब बुला रहे हैं। ये जो अभी ऊपर का जिक्र हुआ था, कभी हमारी डिबेट करवाइए इसमें, ऊपर और नीचे के बारे में। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। राहुल सर, कुछ आपके मन में सवाल चल रहा है? I have a question for Javed Akhtar and for Arman Malik, and this is actually a very unique opportunity. Please come. To have two such fabulously talented artists here at the stage of NDTV Yuva. So thank you very much, Arman Malik, for joining us here.
and Javed Saab for agreeing to be on the stage with a young talent like Arman. Thank you. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen, for two very different generations, but the artistry and that talent speaks very loudly. I have a question first for Javed Akhtar and the same for Arman Malik. This, sir, is the age of artificial intelligence where machines do the thinking. And one of the things with ChatGPT, for example, is that a lot of content creation, music, lyrics are now being written by AI. If you were planning your career now, how would it be different from the way it was when you started many decades ago? And how do you think this impacts the creativity of someone like an Arman Malik, who's waiting for his best years to explode in front of him and now has to deal with the challenge of not just competing with people his age, but having to compete with machines that can create music? And Arman, to you, how do you think you will continue to be one step ahead of the machine? Because so much of the music now is either being written or improved through artificial intelligence. And I think this is just such a fabulous stage because we've got two very different perspectives, two supremely talented artists. And I'm very curious to know how you think artificial intelligence impacts creativity, music, and how are you trying to deal with this? We'll start with Javed Akhtar. Sir. At the very beginning, I must say that if there is a choice between artificial intelligence and human stupidity, natural stupidity, I prefer artificial intelligence. But having said this, artificial intelligence is still in its nascent stage. I mean, it is walking on its knees at the moment, all four. This is the beginning. It's a very humble beginning. One cannot imagine, perhaps you and me can't imagine what will happen after 10 years or maybe after 5 years. But at the moment, artificial intelligence is no threat to creative people. It is a good secretary. It can correct your letters. It can write letters for you to the municipal corporation if you are complaining about the lack of water and so on, so electricity, blah, 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 blah. Or you are writing any official letter. But as far as the creativity is concerned, I am not saying it will never happen, because never say never. It can happen, it will, I'm sure. But thankfully I have escaped from that. In creativity, they have yet to wait for at least decades to match human mind. Artificial intelligence, the problem is that it did not have a traumatic childhood. Artificial intelligence mother didn't die when he was very young. Artificial intelligence girlfriend did not drop him for some better boy. Artificial intelligence doesn't have a subconscious. Artificial intelligence is not deeply hurt and doesn't have some failed affairs. Artificial intelligence will have to wait to come somewhere near us. Thank you, Javed Saab. Thank you so much. Because they depend on data. Now, data is logical, but creativity is not totally logical. It happens somewhere between the mind and the subconscious and the conscious. Let me finish it off. Okay. Let me give you an example. If you are playing a Shakespearean character, and you are told by the director that you are the Prince of Denmark and you are very confused. The problem is that you can't take a decision. And you are saying to be or not to be, that is the question. And as you say that's the question, you have to read this chalk mark, take that light. So man stands here, and actor convinces himself that I am the Prince of Denmark and I just can't take decisions. But at the same time, he knows the chalk mark and he sees the light. Now, this needs complete awareness. If you believe that you are Prince of Denmark, how do you remember this chalk mark? And if you remember the chalk mark, how do you think that you are Prince of Denmark? This paradox creates art. Artificial intelligence has yet to reach this paradox. Please, round of applause for Javed sir.
Arman, now your turn. You think to there's answer. anything left for me to say after what he said? But your take. I think Javed sir has a very refreshing take on this because I also have some similar feelings about AI. I think it's a tool. It's something that will help us, as musicians over the years. पहले क्या होता था हम बहुत सारे live instruments use करते थे in our recording. Everyone used to play together in orchestra, a singer, all the musicians were in one room. Then it became music production started happening on the keyboard and the computer and the laptop. Now even that has gone to the next level where we have to just put in an input and say कि मुझे एक sad song चाहिए, and the AI will probably give you a beat which feels like a sad song or an energetic song. While that is still happening and it's still obviously in its nascent stage, बहुत सारे ऐसे developments होने बाकी हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ एक human song है या human music है. There's a certain soul, like he said, a certain emotion that only a human with human experiences can bring to the table. That AI is not possible at this point with AI. There's another thing that is problematic at this point. There's no legislation when it comes to the copyright of voices. Like, there are lots of different covers and songs that are there of whether it's Kishore Da or whether it's any contemporary singers, जिनकी आवाज़ के ऊपर जो उन्होंने गाना गाया नहीं है उस गाने को उनके आवाज़ में डाल के पॉपुलराइज करते रील्स पे, विच इज़ गुड बिकॉज आई लव टू सी दैट. आई लव टू सी कि मेरा फेवरेट आज का गाना किशोर दा की आवाज़ में कैसे सुनाई देता, लेकिन इट्स ऑल्सो एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ his vocal tone, his copyright, which I think that's a layer of legislation that needs to come into play, which will help musicians protect their identity, their voice. That is something that I pray for with regards to AI. जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए. जनरेशन देख रहे हैं, 2 जनरेशन. जावेद साहब के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, और अरमान मलिक के लिए भी जोरदार तालियां. लेकिन अरमान मलिक अभी पावर पैक परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी अभी बरकरार रहने वाली है. जावेद साहब प्लीज, आप क्यों रुके प्लीज. जावेद साहब, जावेद साहब यहां पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस मंच की गरिमा शोभा बढ़ाने के लिए. और अरमान मलिक, आपकी एनर्जी अभी बरकरार रहेगी क्योंकि आप देने जा रहे हैं पावर पैक परफॉर्मेंस. लेडीज एंड जेंटलमैन, जजेंसी, यूथ सिंगर, यूथ आइकन, कुछ आप लोग भी बोलो, थोड़ा ऐड ऑन करो. वॉइस ऑफ द जनरेशन अरमान मलिक. चलिए आप करिए जरा तालियां, देखें आपके तालियों में कितना है दम, फिर बंदे में कितना है दम, वो दिखाएगा अपने सुरों का दम. थैंक यू ऑल ऑफ यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द वे, बेस्ट विशेस.
Yeah, you can start. Make some noise, come on. आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ मेरी खामोशियाँ है सजा तू है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हद से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा 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 I want to see your hands up in the air, everybody. राहों में भी हर कदम मैं तेरे साथ चला हाथों में थे ये हाथ मगर फिर भी रहा फासला सीने में छुपे एहसास प्यार के दिन गए तो सुन ले जरा दिल है सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो सिंग विद मी कि मैं हूँ लाउडर कि मैं हूँ हीरो तेरा ओ How you guys feeling? ये जो अगला गाना है ये मेरे दिल के बहुत करीब है and I want you all to join in and clap with me on the beat. Will you do that? पक्का? Okay, let's hit it. Everyone, put your hands together and clap with me. हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना ही कि क्यों दुनिया में आया हूँ हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना ही कि क्यों दुनिया में आया हूँ ये जाले करके जा मेरी तुम्हें जीने में आया हूँ मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ
आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। जमीन से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। हमको पता है ये नादानियाँ आवारा दिल की है आवारियाँ, ये दिल पागल बना बैठा इसे अब तू ही समझा रे। लिखे तुझमें मेरी दुनिया तू बन जा रे। वो खुश किस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। You guys enjoying so far? Can you sing this song with me? जुदा हम हो गए माना, कभी मैं याद आऊं तो तुम्हें मैं भूल जाऊंगा। ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना। Love you guys so much. A huge round of applause for you guys. Such an amazing audience. ये जो अगला गाना है, it is one of my favorite songs. It's a duet with Shraddha Kapoor from the movie Baaki. If you know this song, sing with me. Sab Tera. ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल। तू मिला है तो है कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं तो तेरे ढंग में ढल चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा। I want to see your hands up in the air, baby, with me, everybody. Come on. How you feeling, NDTV Yuva? फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नायत जो हुई। ओ, फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नायत जो हुई। मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा सब तेरा सब तेरा सब तेरा ओ सब तेरा सब तेरा सब तेरा।
थैंक यू सो मच। बहुत रेयरली एक सिंगर, एक क्रिएटर के करियर में एक ऐसी प्रोजेक्ट आती है, एक ऐसी फिल्म आती है जहाँ पे उस फिल्म के सब गाने बहुत फेमस है, उनको बहुत प्यार मिलता है। एक ऐसी मूवी थी MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, जिसके गाने आप सब ने इतना प्यार दिया है इन गानों को। और ये जो अगला गाना है, ऐसा लगता है कि कौन मुझे यूं प्यार करेगा जैसे आप लोग करते हो। I also would like to dedicate this to our beautiful angel Sushant, who played the role of MS Dhoni, the untold story. Sushant, this one's for you. जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी निगाहें तेरी निगाहों तुझे खबर क्या बेखबर, मेरी निगाहें तेरी निगाहों तुझे खबर क्या जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। Thank you. ये अगला गाना was one of the first singles that I ever put out. It's composed by my brother Amal, written by Rashmi Virag, and it was on Imran Hashmi and Isha Gupta. Anyone know this song? मैं रहूं या ना रहूं. Yes. आप लोग गाओगे मेरे साथ? Okay.
बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। Can you get your phones out and put the flashlights on for me, everybody? Let's make it a concert here. किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। किसी रोज बारिश जो समझ लेना बूंदा मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहो या ना कहो, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना से कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। शुक्रिया। ये अगला गाना आप लोग को गाना पड़ेगा मेरे साथ। ये बेसिकली मैं सिर्फ पियानो है, मेरी आवाज़ है और आपकी आवाज़ है। आर यू गाइज रेडी? ओके। मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस मैं भूल न जाऊं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। Sing with me. वो Beautiful. बोल दो दिल में जो मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। हमारी कमी तुम
तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें। मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें। रूह से चाहने वाले आशिक बातें जिस्मों की करते नहीं। बोल दो दिल में जो मैं किसी से, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो दिल में जो मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। एक बात तो पक्की है कि इस रूम में सिर्फ मैं सुरीला नहीं हूँ, आप लोग बहुत सुरीले हो। Huge round of applause for everyone out in the audience. You all sing so well. Well, the song that you guys have been waiting for. Will you sing with me? यहाँ पे किसको पहला प्यार हुआ है? हुआ है? ये इसने हाथ ऊपर किया फिर नहीं मैं नहीं बोलूँगा। This one's for all the people who believe in love, romance and पहला प्यार. Let's go. Will you sing with me? Everyone, come on. बातें जरूरी है, तेरा मिलना भी जरूरी। मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी। झूठी है वो राहें सारी, इश्क जहाँ न चले। तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले। तू पहला पहला प्यार है मेरा।
Thank you so much, NDTV Yuva, for having me here. All you beautiful people, a huge round of applause for all of y'all. कितनी beautiful audience थी. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे इस स्टेज पे आया हूँ. मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग. Okay. Can you play the key? Okay, किससे रिक्वेस्ट आई है? Actually, my papa is right here, Dabu Malik. A proud papa, and he wants me to sing this song. एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर तेरे मेरे दरमियाँ है बातें अनकही तू वहाँ है मैं यहाँ क्यों साथ हम नहीं फैसले जो किए फासले ही मिले राहें जुदा क्यों हो गए ना तू गलत ना मैं सही ले जा मुझे साथ तेरे मुझको ना रहना साथ मेरे ले जा मुझे साथ तेरे मुझको ना रहना साथ मेरे ले जा मुझे ले जा मुझे घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में उसका घर हो पहली दफा मैंने जब उसको देखा तो सांसें गई ये ठहर रहती है दिल में मेरे कैसे बताऊं उसे मैं तो नहीं कह सका कोई बता दे उसे घर से निकलते कुछ दूर चलते रास्ते में उसका घर Thank you so much. Thanks a lot, Arman. Thank you very much. Guys, इससे थोड़ा ऊंचा. 3, 2, 1. A loud applause. Yes. Lovely. Arman, you really ruled the stage. और अगर आपको अरमान मलिक की जगह अरमान मालिक भी कहेंगे ना गलत नहीं होगा because that's how you own the stage and we loved the request that we got from your father. Can we also have sir or you on the stage for few minutes if we can join, we can have you join us on the stage. Zordar Thalia.
डब्बू मलिक जी के लिए आपने सर जो रिक्वेस्ट दे के हमारा दिन मनाया ना, बेहद कमाल। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद सब म्यूज़िक लवर्स हैं, तो रफ़ी साहब का एक गाना होना चाहिए, बिकॉज अरमान कभी कभी मेरे लिए घर पे गाता है ये गाने, तो ये पहली बार आप सब लोगों के लिए गाया। आई रियली लव व्हेन ही सिंग्स रफ़ी साहब सॉन्ग। थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू आर गिविंग हिम। आई एम सो एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाई। सर आप बताइए कि क्योंकि देखिए हर पिता की ज़िंदगी में एक मोमेंट ज़रूर आता है, जब आपके तो खैर ओवर अचीवर बच्चा है, बट फिर भी एक मोमेंट आता है व्हेन यू से कि ओके आई एम रियली प्राउड। व्हिच वाज दैट वन मोमेंट व्हेन यू फेल्ट रियली प्राउड ऑफ अरमान? This particular moment with NDTV Yuva, I'm really excited that this is happening and such a beautiful, amazing evening. Thank you, Lovely. NDTV Give it up for Yuva. NDTV Yuva. Thank you. And Arman, if you can share your most cherished memory with your father. Okay. I think when I was on the show called The Voice, and my papa actually surprised me on the set, and we sang his very famous song "Thoda Sa Pyar Hua Hai, Thoda Hai Baki" together on stage. I think that was a very emotional moment for me. I think we should recreate that. We need to hear that firsthand on NDTV Yuva. So sir, why can't we have you also show your magic? We have the stellar band right here. A huge round of applause for the musicians here as well. Woo-hoo! It's become a musical evening suddenly. I think it... थोड़ा ऊपर दो नोट ऊपर ले। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। Lovely, give it up for the Maliks. Wow, sir. Talent really runs in your family and in the genes. So एक बार जोरदार तालियां Senior Malik साहब के लिए. Thank you. Thank you, sir. Before we let you go, you know, you're doing a lot of international presences. Thank you so much. We recently saw you with Tim. Can we increase the audio for his mic, please? You know, your selfie with Tim Cook is also going viral, and you do a lot of international collabs. So tell us first about that moment when you clicked that picture with Tim Cook, and of course it went, all viral. Honestly, it was a very special feeling. There were very few people invited to Apple Park for the launch and unveiling of the new Apple products and the new iPhone. And उनके साथ एक conversation हुआ about music and where Indian music is going and how Apple Music is also helping the whole ecosystem and the environment. Yeah. बहुत ही एक special moment था उनके साथ, and वो picture जो capture हुआ है, to me honestly, I didn't expect him to spend that much time with me. But it was Come on, you're a massive star, Arman. No, but it was a very special feeling for sure, and thank you, Tim, for being so generous and gracious. And one last question, you do a lot of international collabs with artists as well. Yes. Ed Sheeran was one of them. Yep. I interviewed Shilpa, and she was saying when she met him, all they spoke about was food. Yeah. What was your conversation with Ed? Honestly, he's obsessed with chicken tikka masala. Is it? So yeah, because वहाँ पे UK का national dish
is chicken tikka masala. I don't know if you're aware of this. I wasn't till now. Yeah, it is. Okay. Just by the way. So we were sharing, our thoughts and experiences about food, and uska sabse favorite khana is Indian khana. So we went out for an Indian meal together as well. Yeah. Okay. But thank you very much, Arman. Thanks a lot for your time. And firstly, thank you to NDTV Yuva for inviting me here, and all you beautiful people for spending time with me and listening to my songs. And hope this evening was good for you guys. And I hope that you carry this memory with you all. Thank you so much. Thank you very much, Arman. Thanks for giving us such a lovely time. And with that, of course, we are wrapping NDTV Yuva Mumbai edition 2025, a day full of power, passion, and performance. Was it? Thank you. check, hey, check, hey, check, one, check. Hey, hey, check, one. Check, one, check, hey. Hey, check, one. Hey, check, check, one. Check, hey, hey. Check, one. Check. Hey, check, 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 hey, check, one, check.
Hey, hey, check, hey. Check, check, hey.